पोर्शन नितिन सर कवर करते हैं. उन्होंने आपके पॉलिटी का काफ़ी सारा स्टैटिक पोर्शन आपके साथ कवर किया है. बट होता ऐसा है ना कि यूपीएससी जब क्वेश्चंस पूछता है, कुछ तो करंट में इवेंट हुआ होता है जिसकी वजह से क्वेश्चन के लिए इंस्पिरेशन आता है, जो कि वो बैक टू स्टैटिक जाके पूछता है. ये होता है. मेंस में कोई स्टेटमेंट आ जाती है, डायरेक्टली अब नहीं पूछते पावर ऑफ गवर्नर, नहीं पूछते ना. मेंस में कोई स्टेटमेंट आता है, उसके रिलेटेड कोई कॉन्टेक्स्ट दिया होता है, जो भी टेल एंडर के साथ वो फॉलो होता है, उसी के अकॉर्डिंग प्रेजेंट करते हुए हमें पता है कि हमें बैक टू स्टैटिक ही जाना होता है ना, बस करंट कॉन्टेक्स्ट को एक्सप्लेन करके. ऐसा होता है, राइट? ओके, तो एक एक करके हम अब फेडरलिज्म मैंने पहला अपना लिया है सब टॉपिक आपके चैप्टर या फिर टॉपिक ऑफ सिलेबस में से पॉलिटिक. ठीक है, यहाँ पे जो फेडरलिज्म से रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं पिछले एक साल में, ठीक है, उन सबको कवर करेंगे. क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ उनके आंसर्स करेंगे साथ के साथ. ठीक है, क्वेश्चंस जो होंगे यहाँ पे बहुत बेसिक फॉर्म में दिखेंगे. ठीक है, फिर इसके बाद यही बेसिक फॉर्म, इन्हीं कंटेंट में से कुछ भी वर्ड प्ले करके आपको एक मेंस का क्वेश्चन प्रेजेंट किया जाता है, या तो आपको एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन प्रेजेंट किया जाता है. तो जब हम एक करंट अफेयर देखते हैं, हमें उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स फिगर आउट करने होते हैं. ये हमारा करंट स्टेटमेंट है जो न्यूज़ में हुआ, जिसकी वजह से हम ये टॉपिक पढ़े, बिकॉज ऑफ विच वी आर गोइंग टू गो थ्रू दिस टॉपिक. Then we should make sure that we know certain things with respect to our syllabus which are connected to this topic. This is how we are going to go about each of the topic. Multi-state cooperative societies, the questions we need to answer with regards to that. Something happened, but we need to connect it with our own syllabus. So we'll go in this format so we know what we got from this particular lecture. Right? Clear enough? Okay, great. ठीक है, स्टार्ट कर दे. कोई और ओरिएंट, किसी को कुछ भी क्वेश्चन नहीं? ओके, वी कैन बिगिन. नितान भैया, ठीक है. There has been some sustained attack on federalism in past few years. This government has been criticized for doing so. This government, by this government I mean the government in the center, the Modi government, the BJP led government, right? It has been criticized times. What's happening with the mic? It has been criticized a lot of times for sustaining some attacks on federalism, as in undermining the center-state relations in some or other manner, which means centralizing things. What is the characteristic of federal? There is power division constitutionally between center and state. How? There is list, center list, right? Union list, state list, concurrent list. It is so, right? But what happens when farm laws come up and the states that we were never consulted? A lot of economical aspect we have studied about farm laws, right? But what is the underlying implications with regards to center-state relations? All the state governments, were they taken into confidence? If they would have been taken into confidence, such, turmoil would not be there. Because state governments were not taken into confidence, and the union government did go a bit over the top, arbitrary, which is why such agitation was witnessed, right? So this was one example, but the attacks have been sustained. Remember during the compensation, right? They were asked to take debt to compensate themselves. And then there are sources of revenue which the center
is shifting towards cess and surcharge. Why? Because devolution is not considered from there. Right now, more than 20, while there was just a bit more than 12% cess and surcharge, the contribution of cess and surcharge in the whole collection by the center, now it is more than 23%. Within last 2 years, it has increased so much. This is all, these are all examples of some sustained attacks on federalism, and we are going to discuss some more, right? So the news was that amid pandemic, so pandemic has happened now for us, right? There, for the people who are concerned with political science for that matter, or even for GS, there is a pre-pandemic world, there is a pandemic era, and now we are in post-pandemic era. That's what we are going through. So it is post-pandemic. Now we can look back while we are going through something. We can't really analyze it as much. We are still in the process. Current affair is not discussed for UPSC people like it is discussed on the commercial news channels while it is happening. We let it pass and then we absorb it and make it resonate with our syllabus and we cover it. This is how it happens, right? So now pandemic has passed. Now we are to analyze what happened with the federal structure of our country during pandemic. So amid pandemic, some statements by the states did come and they resonated strongly with the raising complaints about union government anti-federal moves, right? So we are going to, I gave you some examples just to connect you with the actual whole of the topic. Otherwise, each of this GST not getting compensated. It was a current affair in your earlier, monthly magazines or whatever you studied. But here in federalism, we are going to combine them all, right? So this was just an example for us now because we are past it. So there is a current affair and there is a contemporary affair. When you are able to club certain current affairs into one ambit, it becomes your contemporary affair, right? Now all of these are relevant to federalism. They are going to be contemporary. In the long term, you can quote them in your answers. They have relevance for the longer run. And current affairs, they may pop up and may not be so important that even UPSC, by the end of the 1 year cycle, gets inspired to ask from it, right? हमेशा हर करंट अफेयर उस कैलिबर का, उस ग्रेविटी का नहीं होता. हम सब पढ़ते हैं, लेकिन हम ये सोचते हैं पढ़ते वक्त कि इससे क्वेश्चन आएगा. ठीक है, क्वेश्चंस आते हैं जो करंट अफेयर्स लॉन्ग टर्म में रेलिवेंट होते हैं. यूपीएससी डिड नॉट आस्क अबाउट कोविड एट ऑल एंड पीपल आर वंडरिंग व्हाई इट इज नॉट आस्किंग in the prelims, right? Why it is not asking? Because we were still going through it. What if कुछ कल को चेंज हो जाए और यूपीएससी के आंसर की डिफॉल्टेड हो जाए, राइट? इट कैन नॉट रिस्क इटसेल्फ, है ना? तो यहाँ पे हम फेडरलिज्म के साथ किस किस चीज़ में डील करने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू नो अबाउट व्हाट इज फेडरलिज्म. आई नो यू गाइज नो इट. आई नो यू हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक इन योर क्लास. This portion of static has been done with you. Just take it as a revision. I know all of you people are super intelligent, but we are going to still revise, right? Okay. Now, what steps by the union government actually undermined the principles of federalism? Some examples we saw, but why state or all the states or majority of the states are saying so? Why? We'll look into everything that union government did before pandemic and how pandemic actually aggravated this, right? It was not so कि pandemic से पहले union government and state government were all hunky dory, नहीं हो रहा था, है ना? But pandemic में we figured out there is some aggravation, बहुत ज़्यादा हो गया, right? It could not be contained. Then what are the solutions for the same? Because as civil service aspirants, as a very very potential, very very talented candidate, है ना,
aspirant, क्या होता है कि you can't really tell the government these are all problems. The government will say, are you here to criticize me? Tell me the solution. You are going to be part of my machinery. Come up with the solutions. Don't just keep listing the negative aspect. So with each and every problem, make it a thumb rule. Whenever you are talking or thinking about a problem in any part of your syllabus, you have to, along with it, come up with the solutions. ठीक है? Only then it is a wholesome coverage of the topic. Then if we are discussing a problem, we will have to come up with the solutions. There is a problem, right? There is problem in federalism. So we have to talk about what are the solutions to overcome those problems. So this is how we are going to go through this topic. 3 questions to be answered, right? What I'm going to do is, right now, we are going to write along with an explanation to everything. Fine, we'll be taking notes, right? And I'll be alongside telling you the stories behind and underneath, right? Fine. So first question we'll tackle, you can just put a heading, the sustained attack on federalism, right? Or if you want to shorten it further, federalism undermined. This is it. This can be your heading. है ना? चलो. And this is your news statement, because this could also be a statement in the mains as it is, and you can be asked to comment. ये statement as it is आ सकता है, right? And बस आगे tailender लगाना है, comment, analyze, elaborate, कुछ भी, है ना? We have to put the same content, just presentation has to be changed according to the tailender. Yeah, okay. Chalo. So what is federalism? Federalism basically is the division of power between government at the center and at the state, right? And how do we see this division of power in India? Powers are divided in Constitution of India. Powers are divided in Constitution of India as union list, state list. Which schedule am I talking about? Right? So you will write towards the end of this statement, bracket mein, schedule 7. And concurrent list, schedule 7. You have to put a hyphen and tell yourself in your notes, but power struggle still happens. It has been divided in the constitution, but we are still facing the problem. We are discussing the problem here that's happening. But still power struggle does happen. Fine. Now, there is this person. Do you know him? There has to be H has been misplaced. No. लक्ष्मीकांत में आता है इनका मेंशन, और मुझे पता है आप सबने उसको बहुत ज़्यादा पढ़ा है, ठीक है, एक ग्रंथ है ना, तो शायद थोड़ा मिस हो गया होगा. He is the person who commented, and after analyzing India's federalism, that it is a quasi-federalism, or this Indian state is a quasi-federal state, which means centralized state with some federal features. What else you keep calling it? Unitary tilt, right? Now, this could be a great introduction, right? Just go ahead with your own words definition and tell that what K.C. Vere thought about it, right? So arrange the content accordingly. Everything you write, you should be able to think about it, how you going to use it thereafter, how it is going to be of importance to you, right? That's how you filter content when you are making your own notes, when you are doing self-study,
right? Just think about what is the usage, where you are going to use it, why you want to revise it again and again, and that's why you're putting it in your notes, right? Okay. Now, what steps by the union government? I hope everyone is clear with this particular answer, questions answer, right? So I'm going to mark it as done. Fine. Next is, what steps by the union government actually undermine the principles of federalism? There are two categories we are going to divide this answer into. First of all, there is fiscal federalism, which was undermined. And then there was weakening of states' autonomy. विजिबल है भाई? ठीक. सो सबसे पहले हम देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी लुक एट फिस्कल फेडरलिज्म. या हाउ इट वाज अंडरमाइंड. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स आर देयर? हाँ, सेंटर सेंटर. So there are two types, right? There are central sector schemes and then there are centrally sponsored schemes, right? In the central sector schemes, okay, next question is, how are central sector schemes different from centrally sponsored schemes? No. Correct. Yeah. So what would be your guess? Which one of them is 100% centrally funded? Correct. So central sector schemes are 100% funded by the center, right? However, the implementation machinery can still be used from the states, right? While, so it is basically all depending on where the money is coming from, right? While in centrally sponsored scheme, there is devolution, right? There is division of contribution that is going to come. So for most of the schemes, it could be 50-50, 60-40 and 90-10. 90-10 is for hilly areas, right? And 100% funding is also there for UTs, right? Centrally administered territories are going to be 100% funded even in centrally sponsored schemes. Sometimes UTs with a legislature can be having some devolution. It is very, very exceptional. This is the broad categorization. This is how you'll go through schemes when you have to read about them. Fine. Won't pay very much of attention to any of the exceptions because what are the chances, right? Okay. Now, since you know what the schemes are, centrally sponsored schemes are something in which it has been continuously noticed that share of states is being increased, right? So there has been an increase in monetary share. You are going to write. This is your first point under fiscal federalism. And we are discussing why it's been undermined, right? So increase in monetary share of states in centrally sponsored schemes. Remember 15th Finance Commission gave out that 41% of share is to be given to states, right? Every financial year, right? What is happening is even CAG is coming up with reports like more than 47,000 crore was wrongly kept in consolidated fund of India, which was supposed to be going to states under the devolution as per the 15th Finance Commission. In fact, somehow the center is coming up with tricks like it is not going to give certain funds unless
something the state is going to implement. So for the devolution of fund, there is conditionality which has been introduced, like implementation of one nation one ration card, like implementation of smart cities project. All of these things are there, because of which they have cut it down. They have cut down the 41% to 30% only. So for real, only 30% is being devoluted from the, and why is it just one reason? No, from the whole fund. Also the increase in cess and surcharge. So from the entire consolidated fund of India, only 30% portion is going to states, right? This is the tricks that the central government come up with, right, to prevent the devolution of money towards the state. This is undermining the fiscal federalism. So your next point is the term of reference of 15th Finance Commission. Term of reference, why? Because it was in the Finance Commission's terms itself, and they were designed in such a manner that performance based devolutions were introduced, right? For example, if states were going, so states are reluctant. Now you will feel very envious towards central government while we will be doing this particular topic. You will be feeling very envious. This is how your emotions work. More the information goes, whichever direction your information is flowing, your emotions will flow, right? But do you realize that even state governments are reluctant in devoluting funds to local governments, right? So even so, money everybody wants, nobody wants to give away, right? So this is a problem. So in Finance Commission itself, it was introduced that if funds are being devoluted to the local governments properly, you are going to get more share, right? So many conditionalities were introduced. Now these conditionalities, the rationale behind them goes by positive push, right? You incentivize positive behavior. You incentivize, this is psychological. You incentivize the behavior you want to promote, right? So they are just trying to make things get implemented well in time across the nation, and which is why there are conditionalities. But we can use the same piece of information to go both ways. Do you realize? Right? You just have to put across an interpretation when a question comes up in such a manner. Same piece of information, that conditions of 15th Finance Commission has been such, right? It has been designed in such a way. If you want to appreciate it, if question is in that tone, you appreciate it, go with that flow, right? Because right now we are talking about undermining federalism. That's why I'm putting it across in the fiscal federalism, how it has been harmed, right? Okay. Now third point is imposition of demonetization without adequate consultation with states. Very few people were taken into consideration. Very few stakeholders were at all consulted, because demonetization was supposed to be a surgical strike, right? But did it not impact the whole machinery of a country as a whole, right? Then coming up with the concept of GS2 itself, states were very reluctant. Why? Because the taxes they were supposed to implement, the taxes they were supposed to collect, right, that was being taken away from them, which is why this whole concept of compensation was come up with. Yeah. Now institutionalization of GST was also a blow to fiscal federalism, because it cuts down on finances of the state. If you are asking the state to stop levying the taxes it was holding upon for finances earlier, and you introduce GST, states are reluctant. Why? Because direct source of funds is undermined, right? Now again it is dependent on the union government, right? Okay. Then next is outsourcing of statutory functions under smart cities mission. What happens? What do you think is PPP? Public private partnership.
happening under smart cities. There are certain functions of developmental aspects that the state was doing in the cities earlier. Construction of roads, highways, bridges, है ना, flyovers, yeah. So now the contracts, smart city by the way is a directly administered project from the center itself, right? अगर आप लोग ने रियलाइज नहीं किया हो तो जब स्टेट में इलेक्शंस होते हैं ना, जब वो स्मार्ट सिटीज को प्रोपोगेट करना चाहते हैं तो सब लोग बोलते हैं ये सेंटर का प्रोजेक्ट है, ये लोग ऐसे क्यों क्लेम कर रहे हैं, है ना? हमारे स्टेट में पर हुआ तो सेंटर की वजह से. दिस इज अ फैक्ट अबाउट स्मार्ट सिटीज एंड स्पेशली इट कम्स अप, यू विल हियर इट अराउंड यू व्हेन इलेक्शंस आर कमिंग अप, राइट? So public private partnership में they have introduced smart cities. What happens is a lot of things which the state was doing earlier, now it has those services are being outsourced from a private sector entity. Again, some autonomy, some resource pool that could have come up to states. अगर state implement करी होती तो center fund दे रहा होता state को. This would have been the case, right? So state would have decided. Again, some fiscal autonomy of the state is being snatched away, right? And also the fact that it is not the state which is determining which private sector entity is going to perform the function, right? Again, regional autonomy is something very sensitive. Every state is going to be about, right? Okay, next. There has been visible delay in transfer of GST compensations and it did aggravate during pandemic. So delay in transfer of GST compensation. Then there has been enlarging, I've already discussed this point, we are just simply going to write it, right? Enlarging the non-divisible pool of taxes. Enlarging, the non-enlarging is ENLARGING, enlarging the non-divisible, divisible is DIVISIBLE, divisible, non-divisible pool of taxes in the form of cess, in petrol tax and other surcharges. Cess is CESS. Next is instituting agriculture infrastructure and development tax. Why? Because states are very sensitive about agriculture as a subject for them, right? And you are putting tax. Then if you are putting this tax of instituting infrastructure and development for agriculture, you are going to claim that you did development. It's a broad level politics which comes up into the limelight, right? Okay. Then of course the one nation one ration, because again ration was something in which state held a lot of autonomy, right? Although the money was coming from center, although the allocations were happening from the center, but distribution was responsibility of state. Now that it is one nation one ration card, right, states are not responsible much, and this one nation one ration card scheme which is being propagated using certain personalities pictures on it, right, it is a clear politicization. Everybody who's going to get benefited is going to psychologically get linking it up, right? So states do feel uncomfortable with such centralizing of schemes, right? Earlier it was different. Now we are saying one nation one ration card, which means it has become centralized, right? Okay, so these were about fiscal federalism, where all there were some finances which were linked but were undermined by the center's act towards the state, right? So when we are talking about federalism and its undermining, please realize there are always
who's going to be at the victim's end always? States are never going to be able to undermine center, right? So it's states, right? Okay. Then weakening of states' autonomy. How did that happen? Remember the farm laws. That's our first point, the farm laws. So what I'm going to do is, because it's a contemporary affair and it has passed, I'm going to treat it like that. We are not going to go into the details and politics of the same. I know you all are well versed by it, but just know that the major thing that impacted federalism was the lack of consultation that happened. States were not taken into confidence before rolling out these laws, right? And that too in the form of ordinance, right? First of all, they were rolled out in the form of ordinance. Yeah. Now, do you know there was some autonomy with the states when it came to banking, right? Especially with respect to the cooperative banks, right? However, there came Banking Regulation Amendment Act of 2020, and the power to actually govern these banks were shifted a lot more towards RBI, which is a central institution for that matter. Then next one is very specific. If I'm being very quick, you can just ask me to slow down. Yeah, okay, fine. These are just pointers I want you to write. I don't want you to go into the details even while writing, fine, because the broader aspect we are covering is federalism, and these are just our examples, right? We are going to treat them as examples. Of course, they were individual current affairs when they happened, while they were happening. Right now we are clubbing them into one contemporary affair, so these are our examples only, right? So which either one of them comes up under federalism, you are going to tell the UPSC that, see, I know more of them. The state is just not the center is just not stopping anywhere at one place only, it's doing much more, right? Tell UPSC, ऐसा शिकायत लगा देने का एकदम, ठीक है? अच्छा, okay. So the government's national capital, remember there was a lot of tussle between governor and CM of Delhi, too much. Then the center want to come up with a solution, right? Because Raja Raja Chola, every solution only we have, right? So they were like, okay, fine, we will figure out, we also live in Delhi only, right? So they were like, we are going to come up with Government National Capital Territory Amendment Act 2021, and we are going to tilt bit powers more towards governor, because we are looking at the judiciary, and the judiciary is not really getting in our favor. Remember, the cases were going towards Supreme Court and High Court, and they were continuously instructing that please work in coherence, please coordinate, right? But the center was like, okay, this is some sort of attack on us by the CM continuously. So they tried to resolve this issue, which was definitely coming up again and again. Now again, do not get emotional about it, right? Let's look at the pious intentions of center, right? They were only trying to help, right? Then, but some autonomy of the CM was taken away, of the government of NCT was taken away. So again, it is weakening of states' autonomy. It is from one state, but a great example for us to treat, right? Okay, yes. Yeah, it is a UT with a legislature, right? And it is not just a UT, it is just beyond a UT. It is national capital territory. And when it comes to federalism, remember, governor is part of this structure. While I'm looking at federalism today,
under federalism itself, I'm going to take up governor itself. There are so many news regarding the governor itself under the topic of federalism, and governor is the, you know, that key which joins all the spokes, right? So here, because there is a governor present, unlike an administrator or lieutenant governor in other UTs, there certainly is a link of federalism that we have to look at, right? Okay. Then National Education Policy of 2020, remember, it did not actually just come up with National Education Policy. Long time back, there were state board books that were used in the SSBs, State School Board, right? However, these books were replaced by NCERTs for uniformity in the quality of education, right? Even in state board schools now, it is the NCERT which is used. It began there, right? However, National Education Policy of 2020 further undermined the autonomy that state at all enjoyed, right? Even in the recruitment of the staff, teachers, there are proper training and syllabus, and teachers training is included in the National Education Policy 2020. So some weakening of states' autonomy did happen. Now cooperatives are a subject in which list? या कौन सी लिस्ट में आते हैं? Cooperatives, cooperative societies, state list, right? However, there's an exception of multi-state cooperatives. I'm going to take up this topic real soon, today itself, right? So multi-state cooperatives में क्या होता है कि वो cooperatives multiple states में होते हैं. That's why they are just governed differently by Multi-State Cooperative Society Act under the central government. Fine. This is the only exception. But cooperatives otherwise come under the state list. However, there has been a creation of Ministry of Cooperatives. Who is holding this portfolio? Yes, right. So Guruji Amit Shah, right? Okay, Amit Shah, only Amit Shah Ji is holding Ministry of Cooperation, and there has also been, remember I already mentioned this point, there has been Reserve Bank of India directives on coop banks, which were earlier under the governing powers of the state, right? You don't want to write? Okay. We also realized pandemic somehow aggravated the issues, right? So there was certainly more curtailing of powers of the state. There was a national lockdown which was introduced by the center, right? Again, of course it was an emergency and a health emergency, and trust me, when I'm going to teach you in favor of it, I'm going to use it, and then you'll be blown off emotionally that मैम ने तो ये कहा था, मैम अपनी बात को contradict क्यों कर रही हैं, है ना? It's the interpretation that we have to put with the information. So right now, because we are doing undermining of federalism, ठीक है, we are going to say that these steps, arbitrary steps, these steps where state was not even intimidated, not even informed. After all, the implementation has to happen somehow. If the machinery is not well trained for taking up something, it could lead into a disaster. ये तो हमारे states हैं जो हमारे देश की शोभा रखते हैं, जिन्होंने कुछ disaster prevent कर लिए, है ना? वरना center तो पूरा तैयार थी, right? We are just putting it across in that way because undermining federalism, right? So curtailing the powers state, then cess and surcharge, then GS2 compensation also came up during pandemic. It got so much aggravated during pandemic that the center absolutely denied the compensation and asked the states to please go ahead and borrow.
विच मीन्स एक तो वो कॉम्पनसेशन नहीं मिलने वाला था, दूसरा स्टेट्स डेट में भी आने वाले थे. Fine, you're not compensating them and you are introducing them to debt. Fine. Now I know well learned people, there is more to it, but I'm just putting across information, interpreting it for my certain topic. I'm going to remind you this again and again because I know your mind is going to come up with influx of information you know already about the same, and then you will feel conflicted, right? Then of states share of union tax. It further happened. अच्छा हुआ ये भी कि एमपी लैड स्कीम सस्पेंड कर दी, right? And whole fund was transferred into consolidated fund of India, which also means that non-tax avenues जो थे स्टेट्स के पास वो सस्पेंड हो गए. एंड एक पीएम केयर्स फंड है और पीएम रिलीफ फंड है, उसको द सेंट्रल गवर्नमेंट डज काउंट इन, इट डज व्हेन यू वांट टू फाइल योर आईटीआर, राइट, or when you want to do CSR activities. So contribution towards these two funds are considered under CSR activities. However, at the same time, there is also a CM's relief fund. CM's relief fund is not exempted for taxes and does not count under CSR activities. So non-tax revenue or non-tax avenues of having revenue were curtailed by the center for the state. There was a request from all the states or many states during the pandemic that please increase our FRBM responsibility, FRBM limit to 5%. It was earlier 3%, right? So FRBM limit, they actually wanted to borrow, and FRBM Act restricts them from borrowing over the top, right? This is what it is supposed to do. So they wanted that our limit should be widened to 5%. 2% increase they were seeking during the pandemic. Why would any government want to borrow more? What will it do? Welfare, or it will just pump in the money into the economy to get it started. Stimulation happens, right? Basic economy, money flows, demand gets generated, people have more money in hand because demand is, so there was a twin deficit, supply side and demand side happening. So somewhere they have to stimulate at least one side so that other side also gets started. So money, government is always having public expenditure to stimulate the economy further, right? Any government. Now the states are asking for money. The government said that wait, patience. Please apply. Please implement properly one nation, one ration card, right? Then you need to ensure that there is proper implementation of smart cities project, then so on, so many conditions it introduced. And those who will successfully do this thing, only then we will allow that particular state to borrow till 5%. This is what happened. So autonomy was again undermined, fine. And this happened during, which is why we are saying how pandemic aggravated it, right? You look confused. Yeah. No? Okay, great. Now what are the solutions? Any suggestions from your end? What our dear central government should be doing to correct itself? Okay. सो जब स्टेट ने ये बोल दिया, सॉरी सेंटर ने ये बोल दिया था एफआरबीएम के टाइम पे कि इम्प्लीमेंट करो वन नेशन वन राशन कार्ड, अपने एज ऑफ डूइंग बिजनेस इम्प्रूव करो, है ना, अपनी अर्बन लोकल बॉडीज को फंड्स दो, उनकी यूटिलिटी इंक्रीज करो, है ना. अदरवाइज इफ फंड्स आर नॉट देयर, यूटिलिटी इज लेस, नो.
How much of the functions they can perform without funds. So utility use of that body being there gets increased when you have more money in hand. So utility increase करो. Power sector बहुत ज़्यादा you know बहुत ज़्यादा debt में था. It was sinking during pandemic. Surprisingly, this also got aggravated during pandemic itself कि जो highest burden था power sector का, it was witnessed during pandemic itself, right? Because क्या होता है कि घरों से जितना वो charge करते हैं, it is subsidized. Domestic consumption is subsidized, but they charge a lot on to the industries. Commercial usage they charge, which was stalled. People were at home, right? This is a very basic idea why it aggravated during pandemic. Otherwise it was, we know that discoms were already under distress, right? So this government wanted that power sector reforms should be taken, right? Only then we will give you increase in FRBM. Now so many reforms and all they are introducing, this makes it conditional for the state to have resources for itself. And when you are not allowing us more money, but you are asking us to implement more things, is that even practically possible? You are restricting funds. We are asking for funds. You are saying पहले ये implement करके दो. अरे पैसा नहीं है भाई, right? Yeah. Okay. अब solutions. What are the solutions? So साक्षी ने कहा है कि फाइनेंस कमीशन में स्टेट्स को भी रिप्रेजेंटेशन दे दो, एक नीति आयोग फाइनेंस कमीशन को भी बना दो, राइट? नीति आयोग फाइनेंस कमीशन को, this is, I'm just trying to stop you from putting it across in your answer also. However, it is a good input, but that's just repetition of efforts, right? Okay, there is a proper commission called as National Commission to review the working of Constitution. You have already heard about it. What happens is it analyzes after years after year, decade after decade, that how working, is there any reform which is required, right? Because Constitution was made way back. So to make sure that the Constitution remains a living organism, living growing organism, right? Living growing Constitution, right? To make sure, how do these netas come to know that इस चीज में reform चाहिए? How do these politicians come to know? Either somebody is definitely helping them with it, right? That okay, this has become outdated and a lot of problems are coming. Do they really pay heed to your problems? Maybe they do. So pious souls, right? Great, okay, great leaders we have. So this is why they are paying attention. Otherwise, we have a commission also, National Commission to review the working of Constitution. So this commission recommended a formal institution framework which was supposed to be created to facilitate proper consultations. Niti Aayog is not formal, okay? Niti Aayog is not formal. It's an extra constitutional body. Now extra constitutional does not mean illegal, right? So a formal institutional framework has to be created to facilitate consultations between union and states in the areas specific to legislations under concurrent list. If both of them are supposed to legislate on concurrent list, and this is a given fact that when center is going to come up with the legislation, it is going to prevail over even if something was already there by the state. But that is sheer wastage of time, resource, money. Better consult and implement, right? Okay. So this is a great suggestion, and federalism will not be undermined. In fact, more simulation will come and it will grow. Fine. Then instead of reaching out each other only during crisis situation, like I'm going to have that topic also somehow, not somehow, it's well planned.
but I'll still say somehow the topics do get interconnect. Why? This is why I'm putting them under federalism. They are connected to federalism, right? So each and every topic is example of other one for me. So there is this news that West Bengal CM and Tamil Nadu CM called for an CM convention of non-BJP led states, right? CM मिलेंगे नॉन बीजेपी लेड स्टेट्स के. एक नेसेंट सा आइडिया है कि हम एक कन्वेंशन करेंगे. क्यों करेंगे नहीं पता. पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स थोड़े ज्यादा दिखते हैं, ठीक है, बट ये बात सोचनी चाहिए कि when you are trying, so there is certainly some crisis that you are facing from the center which is ruled by BJP, which is why you are trying to convene a convention of non-BJP ruled states, CMs, leaders. Some crisis you are facing. So why you are coming up with solution when a crisis is there? And what will happen to you? You'll fight amongst each other when the crisis is over for you, right? So this is politicization. This should not happen. So instead of reaching out each other only during crisis situation, chief ministers should try to create a forum. See, lobbying is a real thing in America, a visible thing in America, but lobbying does exist in every political scenario, right? So just go ahead, create a forum for regular engagement on any issues. CMs we are talking about. Fine. This is a suggestion from us. Now some of you will become bureaucrats, some of you will become politicians, right? So when you become CM, please remember that on 21st of November, you knew that it's not the crisis you want to wait for. Fine. 21st of November 2022, whenever you are becoming a CM, right? Okay. Now, since the federal flexibility is a crucial factor in shaping the future of our democracy. हमें तो चाहिए ना federalism. If we are voting once, that's democracy. If we are voting twice, this is democracy plus, right? If we are voting thrice, then it is what? Democracy pro max. No, right? Okay. But it is important for democracy. Our say, the more we get to, put across our point of view, our expression. Voting is also part of expression, you realize, right? So more freedom of expression, better the democracy. So federal flexibility is important. It's necessary for our democracy, right? The union government needs to invest resources towards effective concern with the states as part of lawmaking. This is only a repetition of the point already noted in the first place, but that was a suggestion from commission, proper committee, right? This is a more philosophical way of presenting the same. Fine. I am telling you that legislation and law making process is one and the same thing. If I wanted to skip it, I would have skipped it. Point was to tell you how presentations could be switched over, right? Okay. Next point is, this was the only point. This point has been covered already in the first place. I just missed out. I just chose not to say it then, but I was just feeling if I've written it, I want you to write it also. So I was like, okay, fine, let me dictate this one also. Now, what is you're writing? You've written everything. How do you write looking at each other's face and not your notebooks? Which is the next superhero coming up in Bollywood? Huh? This is not the superpower I can resonate with Krish or somebody. There's somebody new coming up, definitely. Okay, fine. Even Shaktiman couldn't write looking at somebody else's face, Definitely somebody new is popping up soon. Okay. The union needs to establish a system where citizens and states are treated as partners
in governance and not as subjects. ठीक है, हम democracy हैं. It's not central government is a ruler and we are to be ruled. We are supposed to be governed and in a democratic format. So please give us space for the same. Treat us as your partners in the development and not as your subjects. Fine, we are citizens, not subjects. There's a difference between citizen and subject. Citizens do have rights. Do subjects have rights? No. Subject is at the mercy of the ruler. Right? Okay. So these were your solutions and this was your topic of federalism that I wanted to take up. I hope everyone is well versed with it right now. You have a lot of examples. Yes. Statement repeat karu. The union needs to establish a system where citizens and states are treated as partners and not subjects. You can put it into your own words. बात समझ में आनी चाहिए, अपने words में लिखोगे और अच्छी revision होगी next time. ठीक है? Okay. Multi-state cooperative societies, I mentioned about them. ठीक है, अभी just पिछले टॉपिक में जब मैं कॉपरेटिव्स मेंशन करी थी, हर एक टॉपिक में कुछ ना कुछ नेक्स्ट ऐसा आएगा जो हम ऑलरेडी लिंक कर चुके हैं, बिकॉज हमारा एम्बिट एक सेट है फेडरलिज्म का. तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज में होता क्या है कि दे आर नॉट बिलोंगिंग टू वन स्टेट, दिस इज व्हाई मल्टी स्टेट है ना. इनका काफी है, वहां पे शुगर मिल्स भी है, कुछ शुगर महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर से लेती हैं. अब वो कोऑपरेटिव्स जो शुगर मिल्स के फॉर्म में चल रही हैं ना, वो महाराष्ट्र को बिलोंग करती हैं, नॉट कर्नाटका. सो can Maharashtra government say no, I am going to govern it? Karnataka will go crazy about it, right? They will not like it. If Karnataka government will say, listen, I am going to govern this cooperative, Maharashtra government is going to get offended, right? While everybody is ready to take offense at any time, there's a lot more context, by the way, to this statement, right? Okay, so while everybody is just ready to take offense, these governments, right, how do we come up with a solution to govern these multi-state cooperatives? So we do have an act, and the news is not that we are going to come up with the act. The news is that the center has decided to amend the act, and which is why this act is in news, but it has not been much in news, and that's what makes it important for us, that ये भी एक act है जो आपने पहले नहीं पढ़ा है. So Multi-State Cooperative Societies Act 2002 is going to be amended to plug in some loopholes of the act. Of course, we are going to discuss what the loopholes are, so you know why the amendment is required, but let's look at what all questions we are covering one after other. So first of all, the thing we have to know is what are multi-state cooperatives. Although now you are able to relate, we are just going to put into words on your notebook, right? Real soon. Next, we are going to follow up with what is this act, current act, not the amended one, because it's not been amended yet. It is supposed to be amended. So what is the current act all about? Only when you know कि चीज क्या है, फिर आप उसमें कमियां निकालोगे. So you'll figure out what the loopholes are, which is why we need to follow it up with what is the act first, right? Then why does the government plan to amend the act? ठीक है? What are the obstacles and issues with the act? Then what needs to be done? Problems discuss कर रहे हैं ना, problems discuss कर रहे हैं तो solution बताना पड़ेगा. So this is essential part. यहाँ पे conclude करेंगे. ठीक है, एक एक करके start करते हैं. ये question statement हो सकता है किसी और तरीके से, तो ये new statement जरूर लिख लिया करो ताकि आप relate कर पाओ immediately. इसको किसी जगह पे example की तरह भी देना हो तो ये new statement आपके काम आएगा as it is. ठीक है, okay. चलो, first question, what are the multi-state cooperative societies? It's
factual, it's going to be a definition, so we are going to write it word by word. Cooperatives, first of all I'm mentioning the subject. Cooperatives are state subject, right? But many societies have their members and areas of operation spread across more than one state. This is the definition. Cooperatives, however, are a state subject, but many societies have their members and areas of operation spread across more than one state. For example, I've already given you this example. We are going to go with the same one. Sugar mills along the districts of Karnataka-Maharashtra border. Sugar mills along the districts of Karnataka-Maharashtra border. Too fast? Should I repeat the whole thing? Yeah. Cooperatives are a state subject, but many societies have their members and areas of operation spread across more than one state. For example, sugar mills along the districts on the Karnataka Maharashtra border. Karnataka की spelling है KARNATAKA, कर्नाटका, एक हाइपन लगाओगे, महाराष्ट्र MAHARASHTRA, महाराष्ट्र border, BORDER, full stop. They are thus registered registered spelling लिखेंगे REGISTERED, registered under the MSCS Act. तो डिफरेंट क्या होता है इसमें रजिस्टर होने से ऑन द ग्राउंड? डिफरेंट ये होता है कि एक तो अब आप स्टेट गवर्नमेंट से गवर्न नहीं हो रहे हो, आप सेंट्रल गवर्नमेंट से गवर्न हो रहे हो, ठीक है? जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कंडीशनैलिटी होती है, हर कोऑपरेटिव में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, ठीक है? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंडीशनैलिटी ये है कि दोनों स्टेट्स से या फिर जितने भी स्टेट्स से आपके एरिया ऑफ ऑपरेशन की वजह से या मेंबरशिप की वजह से आपका स्टेक होल्डिंग है, जितने भी स्टेट्स में, वहाँ सब स्टेट्स में से रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए इन योर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. रिप्रेजेंटेशन इज एसेंशियल इन योर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ दोज स्टेट्स. सो बोर्ड हैज रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ऑल states they operate in, from all the states they operate in. Is it clear? There is also this fact that they are not governed by state cooperatives commissioner. It is the central cooperatives commissioner. Who is central cooperative commissioner? It's the central registrar only de facto, right? Central registrar. What is MSCS Act? Whenever you are ready. What is MSCS Act? Oh, very good. The whole class knew it, but they just chose not to speak. But okay. Realized. Okay, fine. It is MSCS Act. It is Multi-State Cooperative Societies Act. It's okay. Take your time. We are with you. It's fine. We are welcoming happy people around. You want water? Yeah, please. Oh, don't drink while laughing. You might choke yourself. Just, yeah, calm down.
Okay. Chalo, get up and come there. Yeah, you. दिव्यांश, एक चेयर पीछे और हो जाओ, पीछे वाली लाइन में. नहीं, yeah, this one, please, because I have many more topics to cover, right? And it was a good healthy break हो गया अभी. ठीक है, चलो. ठीक है. What is MSCS Act? We are going to write. Hmm? All the facts are there. There's no concept as such, right? So first point is the act was passed to govern multi-state cooperative societies. Yeah, I think, yeah. Just come back when you're okay. Okay, yeah. Everybody else is good, right? In control? Yeah, we'll maintain it. Fine. So what is MS? It is very, new piece of information for you that it is an act to govern multi-state cooperative societies. Then the administrative and financial control. Here is where we get specific, right? From second point onwards, you need to go through it as if you're trying to remember it right now, right here, right? So administrative and financial control of these societies is with central registrar, who, if in place of central registrar UPSC chooses to write central cooperatives commissioner, please guys do remember that you knew it was the same thing. Central registrar and central cooperatives commissioner, it's the same person. Fine. So no state government, yes, administrative and financial, administrative and financial control of these societies, of these societies is with the central registrar, is with registrar. No state government official, no state government official can wield any control on them. No, yes, wield, wield, can wield. You can just replace it simply with have, and it will be easier for you. Can have any control on them. Yeah? On them as in on whom? Central registrar के ऊपर, मल्टी स्टेट कॉपरेटिव्स के ऊपर किसी भी सेंट्रल से स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल का किसी भी तरीके का कोई रेगुलेशन नहीं होता. फाइन. हाँ जी. सेंट्रल कॉपरेटिव्स कमिश्नर, it's the same person. Registrar and central cooperatives commissioner, like your vice president is also performing as your chairman of Rajya Sabha. Okay. Bad with names. Oh. So कुछ डेटा है, सिंपल डेटा. कितनी सोसाइटीज हैं ऐसी जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, एंड देयर आर 1479. 1479. इट्स वेरी बेसिक डेटा ओनली, डेटा फैक्ट्स एंड फिगर्स, जिसमें कि महाराष्ट्र में 567 है. देन यूपी में देयर आर 142. देन न्यू दिल्ली में, let me check if it's 142 only. No, it's 147. 147. And न्यू दिल्ली में 133. ठीक है. Then
these cooperative societies can be majorly divided into two categories, or the major stake is from two categories, rest of them come under others category, like कोई भी random है ना. तो मेजर जो कैटेगरी है वो है क्रेडिट सोसाइटीज की, यानी कि आपकी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स. ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक्स स्टेट में भी हो सकते हैं, मल्टी स्टेट भी हो सकते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स. तो ये क्रेडिट सोसाइटीज हो गई. There are 66 multi-state cooperative banks and 96 multi-state cooperative dairies. Cooperatives. When you think about cooperatives, what comes to your mind? Amul, right? Amul, Gujarat's developmental model, right? So it was all dependent on cooperatives, and now the cooperatives are being promoted further. While I was quoting it undermining, and in the context of undermining federalism, do realize the importance of cooperatives in our country when the government goes on to make a ministry for cooperatives and gives the portfolio to a very important minister, right? There's a lot of focus in simulating the cooperative economy of the country, right? Okay. Now, cooperative societies can be agro based or credit based and so on. Yes. Okay. So what I'm going to do for you is I'm going to revise the MSCS Act so that you can take up from where you must have missed, fine, and everybody else can match up. The act was passed to govern multi-state cooperative societies. The act was passed to govern multi-state cooperative societies. Administrative and financial control of these societies is with central registrar. Administrative, 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 and financial, FINANCIAL, financial control of these societies, SOCIES, is with central registrar, REGISTRAR, registrar. No state government official can wield any control on them as in cooperative societies, multi-state cooperative societies. Fine. Next were the data points only. Then, why does the government want to amend this particular act? What happened? What went wrong? So, what went wrong is that societies, I'm going to it first. Let's discuss it like this. Okay, maybe this can be entertained later, but I'm going to go specific. There is certain reason, right? So, like Jagdish said, there is an NPA reason for real. What these societies do is they declare themselves sick, while they may not really be, and then they get auctioned, and then they are brought by private sector players. You see, first, now this could be a well planned strategy to first establish it in the cooperative form, receive aids from the government, and when it has reached a certain point, maybe show some defaults in the balance sheets. Just get a loan, don't pay it, become an NPA for a bank, and you can declare yourself ineligible to pay it back. That is, you can declare yourself sick, and now you can be auctioned for the bank to reclaim the money, right? And then you become a private company. And when the auction is happening, it is certain that bank is definitely going to collect less than what the loan was. ठीक है, जब ऑक्शन होती है ना, तो इसीलिए नहीं होती है कि बैंक को जो पैसा उसने दिया था उससे ज्यादा पैसे में हम बैंक से खरीदेंगे, नहीं, ऐसा कोई नहीं करता. ठीक है, जितने जो प्रिंसिपल अमाउंट पे बैंक ने लोन दिया था उससे भी कम रिकवरी होती है. दिस इज अ केस. बस ऑक्शन इसलिए होता है कि कुछ रिकवरी हो जाए.
ऐसा नहीं होता कि बैंक को ऑक्शंस में प्रॉफिट्स हो रहे हैं, दिस इज नॉट द केस, ठीक है। तो यानी कि दिस person who must have actually constructed, orchestrated this show is now getting a principal amount, using it for the cooperative society, and forget about paying the interest on the loan, not even paying the principal amount properly and getting it back, if that is orchestrated, because this happens with multi-state cooperative societies. Reason being the lack of control. The lack of control. Anybody who's having a problem has to come to New Delhi for resolutions. They are governed by central registrar. There is inspections in multi-state cooperative societies can only happen when at least 1/3 of the board members have an issue, right? Or at least 1/5 of the total members of the cooperative society have an issue. Otherwise, inspections are not happening. Whilst the same is not the case with state level cooperative societies, there is proper state level inspection that goes on. So inspection has to be strengthened. While more autonomy was available, while strictness was less, अब जब क्लास में कम स्ट्रिक्टनेस होती है तो शरारती तत्व उसका फ़ायदा उठाते हैं, है ना। तो अभी वहाँ पे जो आपकी स्ट्रिक्टनेस कम है तो आएंगे आपके स्पोक्स पर्सन पार्टी के, वो बताएंगे कि यहाँ पे शरारती तत्व फ़ायदा उठा रहे हैं, जिस वजह से हमारी पार्टी को ये एक्ट अमेंड करना पड़ रहा है। तो आप यही बताएंगे फॉर स्टेट रजिस्टर्ड सोसाइटी। फर्स्ट पॉइंट, फॉर स्टेट रजिस्टर्ड सोसाइटीज, how you will write state registered, you will write state hyphen, this is how, right? State registered societies, comma, financial and administrative, financial and administrative control rests with, control rests, RESTS, control rests, present continuous, right? Control rests with state registrars, who exercise, EXERCISE, exercise it through district and tehsil level officers. Imagine, there is so many levels of governance happening over the state cooperative societies. तहसील लेवल पे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी एक ऑफिसर है, फिर स्टेट लेवल पे भी एक ऑफिसर है जो गवर्न कर रहा है। बट अगर मल्टी स्टेट है तो डायरेक्टली सेंटर। सो मेनी लेवल्स ऑफ गवर्नेंस, रेगुलेशन इज मिसिंग, so some notorious elements were bound to come up, right? So purchasing new machinery, in fact, if a cooperative society is supposed to, state cooperative society is going to buy a new machinery, what happens is, first of all, the board is going to present a proposal and the permission is required from, let's say if it is for sugar mills, if the machinery is for sugar mills, the permission will be required from sugar commissioner. Then the sugar commissioner, if the approval is there, if he is fine with the proposal, if he thinks yes there is requirement, right, then it will be passed, go on to the state level committee. State level committee will then present or then release tenders, they'll invite quotations. टेंडर रिलीज करके क्या होता है, कोटेशन इनवाइट होती हैं कि एक सर्टेन कंपनी हमें कितने अमाउंट में, कितनी कैलिबर की, कितनी एफिशिएंसी की, किस स्पेसिफिकेशन की मशीनरी प्रोवाइड कर सकती है, एंड अकॉर्डिंगली प्रोक्योरमेंट्स कंडक्ट की जाती हैं. While same is not the case with multi-state cooperative societies. They, especially when it comes to finances, exclusive control is with the central registrar, right? So such checks and balances and the layers do not exist for multi-state cooperative societies. And when it comes to this decision of how they are going to go ahead with buying machinery, the board decides by itself. So there is
no real check and balance which is visible. And while the lack of checks and balance was supposed to smoothen the functioning, to smoothen the path, it has created obstacles. It has created obstacles. This was an analysis, this was not a factual point, right? Okay. I can't really say about it anything. I'm not aware of what context should I put to your words. I've not, you know, got this information through. Sorry. Okay, great. Yes. There are no checks, as in once the central registrar, okay, what happens is state cooperative societies में quarter on quarter they have to give a report कि पिछले quarter में क्या किया था. This is a rule for state cooperative societies. However, there is no such check. When the central registrar wants, it can check your balance sheets, but it's absolutely on discretion. Also, if somebody wants to get itself checked, you need a issue to be raised by certain number of members, that it was done to give multi-state cooperative societies more autonomy, but turns out it is backfiring. Fine. Okay. So instead of including checks and balances as at multiple layers, the board of directors has control of all the finances and administration, so they are deciding for themselves, right? So only for expenditure above a certain level, only for expenditure above a certain level, the annual journal body meeting of the society has to be called. The annual journal meeting of the society has to be called. And rest of them, now what are these matters? No specifications are there. It can vary from society to society, and everything is being orchestrated by the board of directors, which can again be orchestrated by a private entity. There are enough loopholes for this to happen. And the real businessmen, you know how they do it, they are aware of all the government schemes. Okay, they are aware of all the government schemes and they do it according to the government policies. For example, Adani, right, he took a note of all the government policies and went according to them and earned, his fortune. So government policies are essential for even business people, and this policy seems like a business opportunity in itself, right? It's almost like giving way to, when it comes to politicization, when the issue gets raised up, it's, you know the central government is targeted as if they were just showing a way for certain money to go through, right? Okay, Jagdish know the specifications, please know the whole story from him, right? Okay. Now what are the obstacles and issues with the, so many experts have noted there is apparent lack of day-to-day government control on such societies, right? What are the problems? First of all, the location of official. It is only in New Delhi, wherever your society is located, right? No offices at state level for central registrar. Then of multi-state societies can seek justice only in Delhi. In this case, fine. So the state authorities can only forward their complaints to central registrar if at all they want to.
operating within that state. मान लो कि स्टेट का कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट फिर भी चाहती है कि भाई किसी को तो बताया जाए कि यहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही कर सकती है कि सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास एक कंप्लेन एप्लीकेशन वो सबमिट करवा दें। ठीक है, इसके बाद जो रिपोर्टिंग है, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर, इस क्वार्टर में लास्ट क्वार्टर का जो परफॉर्मेंस आपका हुआ है वो स्टेट के जो अथॉरिटीज हैं उनके पास सबमिट होते हैं, इफ इट इज अ स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। हाउएवर, multiple reports that the state cooperative has to submit, same is not the case with multi-state cooperative society. Also expansion का clause I told, inspection का clause I told you कि inspection में 1/3 members of the board of directors either are going to raise a issue to the central registrar, then an inspection authority will come and inspect your organization, or 1/5 of your membership has to go ahead with an issue and then inspection will happen, otherwise no inspection is happening, right? So only under special condition the inspection is happening. What Jagdish was mentioning was about Ponzi schemes. Ponzi schemes is what multi-state cooperative societies come up with. These are because we are not going to put any negative connotations to something, right? So there have been instances all across the countries, like credit societies, and as in multi-state cooperative banks. Okay, they have launched certain schemes and then they take advantage of the loopholes of running a scheme by their own self, no governance whatsoever. Then they fly by night. They just roll up, they just declare themselves sick. And अगर एक अच्छा येस बैंक के साथ क्या हुआ था, the account holders, they were not allowed to withdraw their own cash. So one scheme was run by this cooperative bank. People actually invested money in this particular scheme, and now the bank has declared itself sick. What can the RBI do? Are the people going to get their money back? So some good money, not black money, some good money got parked and it is now lost by the people. This is Ponzi scheme, right? The state commissioner in even could not take any action because this is multi-state cooperative society, right? And in fact, the ground staff is absolutely lacking for multi-state cooperative society. Who is the ground staff who you will contact immediately in such case? You only have to go to central registrar, right? Then the central registrar is going to activate some state level connections and then they are going to come to your society and do some inspection, but that's going to take a lot of time. So you have an easy passage to go through, right? Again, declaring itself sick, sugar mill in Sangli was a major case. It took a lot of money and then it became NPA, and then हाथ खड़े कर दिए कि हम पैसा नहीं दे सकते, we are declaring ourselves as sick, हम बीमार हैं, हमारी हेल्प कर दो, government is going to bail them out, right? And this can keep on happening. And it was one of the 68 sugar mills. There was a case, there was a news headline, it was a commercial news headline, you don't have to do anything with how many got sold. However, Sangli sugar mill was one of those who declared themselves sick for any XYZ reason, and this was such a loophole that 68 sugar mills in a go were sold in Maharashtra. So this was a great loophole that they started declaring themselves sick. हम बीमार हैं, ठीक है, सिक लीव चाहिए, चलो। अब बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स एंड इश्यूज हमें रियलाइज हो गए, करना क्या चाहिए अब इस केस में? All these questions have been answered. ये जो मैंने करना क्या चाहिए बोला था ना, ये मैं क्लास को एड्रेस कर रही थी। ये जो कोई नहीं है ना, ये मैं बोलूँगी, ठीक है?
अब दोबारा मत बोलना, बिल्कुल भी नहीं। एंड ट्राई की अभी थोड़ी देर, ठीक है। चलो, कंसल्टेशंस with experts from various fields is supposed to happen because stakeholders को accountability maintain करवानी है, fine। like अगर बैंकिंग की कोऑपरेटिव सोसाइटी या क्रेडिट से रिलेटेड है तो बैंकर्स जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे कंसल्ट करो। अगर है दो एक्सपर्ट्स, अगर और किसी तरीके का कोऑपरेटिव है जिसके लिए आपके पास कोई स्पेसिफिक पर्सन नहीं है टू गो टू, जस्ट गो टू द कोऑपरेटिव कमिश्नर्स of the states, just involve them. Even if it's multi state, it could be like a committee of 3 people. Even if it's the at the level of 3 states, just involve the state machinery, that is the point, and that to the expert ones. Then housing society federations hoti hain if it's a housing corporation, if it's a housing cooperative, right? Then अब हमें हमें ये पता है कि देयर इज अ सर्टेन चेन विच इज बीइंग फॉलोड एट द स्टेट लेवल व्हेन दे हैव टू गवर्न दिस सोसाइटी. So at the same time, should we not increase manpower? First of all, in Delhi itself, what about just one person holding some power for multiple societies? In fact, 1479 multi-state societies and one person to govern them. ना इंसाफी है, एक ही आदमी है ना? तो चलो, यहाँ पे मैन पावर दिल्ली में ही फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्रीज करना है. सो इंक्रीज इन मैन पावर फर्स्ट इन दिल्ली एंड देन इन द स्टेट्स to ensure better governance of these societies. Increase manpower first in Delhi. Yes, technology can be used to increase transparency. This is a point. Increase in manpower first in Delhi and then in the states to ensure better governance of the societies. Then use of technology to bring in transparency. Use of technology to bring in transparency. Okay. So this was your topic of multi-state cooperative society. Hope everyone is finally through with it. Yeah? Okay. So you do remember this one. हरियाणा's प्राइवेट जॉब रिजर्वेशन लॉ. देखो, दो डेवलपमेंट हुई थी. ये बिल आया था, नवंबर 2020 में पास हुआ था, जनवरी 15 2021 से इम्प्लीमेंट इट वाज सपोज टू गेट. ऐसा हुआ था. इज इट? फिर क्या हुआ कि बहुत सारा रिटेलिएशन देखने को मिला. सो जो बिल था, जो एक्ट था, एक्चुअली पास हो गया था वो नवंबर 2020 में एंड 15 जनवरी 2021 से इम्प्लीमेंट होने वाला था. बहुत सारे रिटेलिएशन के चलते उस एक्ट में अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस की गई. सो देयर वर 2 डेवलपमेंट्स simultaneously that have happened now, so we have to cover both of them. Fine. So this is your news statement. The Haryana government has made some amendments to the Haryana State Employment of Local Candidates Act 2020. What all we are going to cover? First of all, if there are amendments, we need to know what was the original act, right? What amendments are made? जो amendments है वो क्या हुई हैं? Then what is Haryana government's rationale behind it? करना क्या चाहते हैं? क्यों कर रहे हैं? Why they are doing this? What is the rationale? Fine. Then what are the directions given to employers in this case? Then what are the concerns of the employers or otherwise? Then what will be the implications if this goes on? However, now after amendment, a sunset clause has been added that is of 10 years. So this is going to be implemented only for next 10 years, and after that this scheme won't be valid, or this act won't be valid. Fine. But what will be the implications along with the that happened? Fine. So this is all that we are going to discover in this discussion of
the topic. So first of all, we'll look at the very first question. What was the original act all about? It got passed in November 2020. I have already told you. The act came into effect on January 15, 2021. And the original act goes like this, that all employers must mandatorily employ 75%, not 100%, but 75% of local candidates, which means people who are domiciled in Haryana. As in not maybe not born in Haryana, but if you are living in Haryana, fine. For the posts where gross monthly salary is not more than 50,000. If I may, what I'm going to do is I'm going to tell you alongside which clause got amended. So this clause did get amended, and the limit was reduced, the salary limit was reduced to 30,000. Fine. Then employers, in this case, we say all employers. Employers, who are the employers in this case? Does it include the state government also? No, it is for private sector. It is for private sector. Fine. So employers include all companies, nurship firms, societies, trusts, limited liability partnerships. All good? हाँ, ठीक है. Limited liability partnership firms and any employer who employs 10 or more employees. I'm going to repeat it. You can write it. Employers includes all companies, comma, partnership firms, comma, societies, comma, trusts, 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 comma, limited liability partnership firms, and any employer who employs 10 or more people. Exemption क्या है कि अच्छा obviously right, exemptions हैं organization owned by central or state government, because this was a reservation in private sector. इस तरीके से तो न्यूज हेडलाइंस में आता था ना, reservation in private sector, otherwise reservations are in government sector, right? Government employments. Now the employer otherwise can also claim an exemption, and he can just file a application with the government officers, and if the government officers believe that the request seeking an exemption holds a merit, there is a lot of ambiguity in the exemption which can be availed. Fine. However, if the violation is there, the employer can be fined with a minimum of rupees 10,000, to a maximum of rupees 2 lakh, and it was not a retrospective one. It was not going to come in implementation retrospectively, as in पहले जो हो चुका है वो हो चुका है. It is going to look at the future. So जो new recruitments होंगी, that is where it was concerned with, only to the new recruitments. It's not like you are already having a certain number of employees with you and now you have to lay off them, because you have to look at the 75% of employees from the local domicile population. There was not requirement of any such thing. You were only going to follow this up for new recruitments. Fine. Then amendment was that, first of all, the domicile condition was relaxed. That somebody, let's say the domicile condition is somebody living from 15 years is going to get the domicile certificate. Basically it was reduced to 5 years, right? Okay. Then the threshold of income also, or salary, was also reduced from 50,000 gross monthly salary to 30,000 gross monthly salary for employers. Then there was also a sunset clause which was introduced, that is of 10 years. This was the amendment.
यानी कि तो डोमिसाइल की कंडीशन फिक्स कर दिए, दूसरा सैलरी का अमाउंट कम कर दिया कि ठीक है 50,000 तक के मत करो, 30,000 या उससे कम के जितनी भी सैलरी के एम्प्लॉयज हैं 75% एम्प्लॉयमेंट लोकली डोमिसाइल लोगों को वहां से दो, प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज, एंड 10 साल तक ये चीज करके हमें दो। यहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई इस ज्यादातर स्किलिंग किस तरीके की इंडस्ट्रीज की होती है, हॉस्पिटैलिटी, medical, engineering, major skills people have. What about traders? You can't really find them locally as much in Haryana. Or there are certain skills which are just not there maybe in the local population enough. And the state government started asking these companies to train the local people and get them employed over there. Right? So this there are certain. So however, let's look at the rationale behind it, what the government wanted to do. So first rationale was there was a lot of urbanization. There was a lot of urbanization, 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 and industrialization, industrialization, industrialization has led to substantial land acquisition in the state. कि भाई अर्बनाइजेशन हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, स्टेट जो कि पहले से हमारा छोटा सा है, और क्योंकि वो एनसीआर रीजन का भी पार्ट वहाँ पे काफ़ी कवर होता है, तो बहुत सारा लैंड एक्विजिशन हो गया हमारे स्टेट में, विच हैज़ हिस्टोरिकली बीन एन एग्रीरियन सोसाइटी हरियाणा. फाइन. कॉज historically an agrarian society, more people were actually employed in the agrarian sector. However, now you are getting people to employ from somewhere else, and our land holdings are reducing because of your industrialization and urbanization. Where will our local youth go for employment? Now our agriculture sector can no more employ, can no more absorb the unemployed. Fine. Which has led, so this happened, so it has led to reduction in employment opportunities in agriculture sector for local youth. This has led to reduction in employment opportunities, reduction in employment opportunities in agriculture sector, in sector for local youth, for local youth. What has? The urbanization and industrialization, which led to lack of land holdings with the people, and hence agriculture sector or agrarian sector could no more accommodate your youth. This happened, right? Okay, fine. Now the law, or this law, the act, it is a act, it's a law once it's been passed into implementation. So the law will help create new job opportunities. The law will help create new job opportunities for them. For whom? The local youth. For them, and also encourage skill development amongst them, because now they would know there is certainty of employment and they would be interested in having a skill so that they can be employed in a certain field. This will reduce dependency. This will reduce dependency of employers within Haryana on migrant workers. This will reduce dependency of employers in Haryana on migrant workers and improve their efficiencies, and improve their efficiencies. अब यहाँ पे employers को on the ground क्या क्या follow up करना था because of this law
करना है because of this law. So all employers are directed, your first point is, all employers are directed to to register their eligible employees. तो मतलब स्टेट कैसे इंश्योर करेगी कि जो भी न्यू रिक्रूटमेंट्स है वो 75% इस एम्बिट से हों कि जो ऑलरेडी 30,000 से कम लोग कमा रहे हैं आपकी कंपनी से उनको रजिस्टर कर दो, ठीक है. उसके अलावा अगर कोई भी रिक्रूटमेंट होती है तो वो इन रेगुलेशंस के अंडर होगी अब, ठीक है. तो सबसे पहले एक डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा ऑलरेडी प्रेजेंट पीपल हु आर हैविंग मंथली पे लेस देन 30,000. So all the employers are directed to register their eligible employees monthly pay less than 30,000. This is what you can write in your brackets on the designated portal, on the designated portal, on the designated portal within 3 months, within 3 months. And any next point, any recruitment any recruitment in this pay bracket can be initiated, in this pay bracket, bracket bracket, can be initiated only after completing this process. So अगले 3 महीने के अंदर अगर आपने ये वाला प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया है तो आप अंडर 30,000 के पे ब्रैकेट में कोई भी नई रिक्रूटमेंट नहीं कर सकते. इट कैन ओनली बी डन वंस यू हैव कंप्लीटेड दिस प्रोसेस. फाइन. And then you have to file a quarterly report regarding the local candidates employed and appointed. File a quarterly report regarding the local candidates employed and appointed in this pay bracket, in the previous quarter in the designated portal, in the previous quarter in the designated portal. यानी कि अप्रैल मई जून में जो भी रिक्रूटमेंट हुई है उन्हें जुलाई अगस्त सितंबर के क्वार्टर में एंटर करते ही आपको प्रीवियस क्वार्टर का रिपोर्ट जो है अपडेट करना है पोर्टल पे, ठीक है. नाउ कंसर्न्स क्या है इंडस्ट्रीज के? दैट इट इज डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ वन नेशन, है ना. ये डिस्क्रिमिनेशन के अंडर बहुत सारा यहाँ पे ह्यू एंड क्राई देखने को मिला था ना मीडिया में भी, दैट यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ, और देयर इज नो, actually there is no concept of domicile in India. States are giving it, but it's not constitutional, or it's not constitutional activity. It is not mandated by the constitution to give domicile certificates, right? Domiciles for real as a citizen mean nothing to you. Fine. It is not the proof of even your residence. It will increase the compliance burden, however, on MSMEs. See, government tries to give a boost to MSMEs, make it easy for them to comply with the rules. More the rules, harder it is for them to bloom. So this will increase compliance burden on MSMEs. Compliance burden on MSMEs. Then there is a provision, although for exemption, there is a provision for an exemption if an adequate number of local candidates, if an adequate number of local candidates
adequate number of local candidates of desired skill or proficiency of desired skill or proficiency proficiency are not available are not available for a particular category of jobs for a particular category of jobs but continuation में है but the government can accept or reject the claim but the government can accept or reject the claim or direct the company to train local candidates in the desired skill or direct the company to train local candidates in the desired skill, which means again a lot of burden being shifted to private sector and they don't really take it happily, the burden transfer, right? Okay, now what will be the implications? First of all, the ease of doing business is impacted. बिजनेस फ्रेंडली इमेज है ना हरियाणा के स्टेट की एक एनसीआर रीजन में स्पेसिफिकली गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, यहाँ तक कुरुक्षेत्र, बिजनेस फ्रेंडली इमेज, राइट? करनाल, पानीपत, सोनीपत, very business friendly area, NCR, right? However, the business friendly image is definitely going to be tarnished. So how we will write it in technical terms? Your ease of doing business ranking is going to be impacted. Ease of doing business rankings can be impacted. Then if ease of doing business ranking is impacted, it gets lowered down. What is going to happen as a result? It will discourage fresh investments by industries in Haryana. Discourage fresh investments by industries in Haryana. The rule controlling internal functioning, next point is the rule controlling internal functioning of a private enterprise Z भी लिख सकते हैं इसकी जगह, will affect AFFECT will affect its competitiveness. प्राइवेट सेक्टर किस बात के लिए जाना चाहता है? will affect competitiveness and hurt their productivity PRODUCT productivity. Then several industry bodies have challenged this law. This is also an implication that it being challenged in the Punjab and Haryana High Court. So this is another implication. Should we do one more topic? No? Tired? Lot of information for today. Everyone looks tired. Nobody is looking willing at all. Great. Okay, fine. These private sector entities, for example, so this is actually to support the people who were losing their employment from agriculture sector. That was the rationale. So it is for industries,
right? Okay. But they won't do it's also political, dear Sakshi, that they won't do anything against those farmers. Like, it is not going to be farmer specific, it's political. It's about all the companies, any partnership firm. For example, at the same time, if there is a food processing unit, this is it, that is going to be under the ambit. But just the person who's growing a crop on the field, that is not. Yeah, right. Partnership firm. Now if there is societies trust, plantation is there. If yeah, that is, but I'm telling you, if in case aloo, lays people want this aloo from you, then that becomes a, commercial activity. Now a tender will be there, some private entity will be involved in that case, it's not absolutely agrarian. Then they can go ahead and ask them, why are you employing employees from migrant worker category? 75% you need to have from local domicile people. But there is also this fact that it is a political thing, that explicitly agrarian sector has not been included. Rather, it is a well conveyed intention of the government of Haryana, that it is actually to absorb the youth which has lost its employment because of the land holdings being getting more and more towards the industrialization and urbanization. Okay, anybody else? Okay, great. It was nice meeting you all, some of you for the first time, right? I shall see you again tomorrow with the continuation. We have so much to do under federalism itself. Okay. This particular current affair is a story, and how we are going to go about it is, first we are going to cover the whole story in one go, right? And then we'll filter out whatever we want to write, because wherever the story breaks, it becomes less interesting, right? It's so interesting for you guys because it's a lot of politics involved, right? It's very much of a favorite, news to be run in commercial media. But we have to filter out what about UPSC from here, right? So let's see the news statement. The Supreme Court, this is the latest development news statement, the substantial one, which is coming from court directly, not what was happening amongst the MPs, right? This is a news statement for us, right? We will go with this news statement, and then we'll of course look at the whole story involving the politics also. When we are studying in class, we can know the whole background, but what we will write is only what is relevant to our syllabus, right? So the Supreme Court has set aside 1 year suspension of 12 BJP MLAs. Why I have underlined 1 year suspension over here? There's a Q in that. So 1 year suspension does not happen, right? It was arbitrary, whole 1 year suspension. But we know suspension does happen. So how much of the time an MP can be suspended for, right? So 12 BJP MLAs were suspended from the Maharashtra Legislative Assembly. Observing the decision to suspend them was unconstitutional, substantively illegal and irrational. Who's saying this? The Supreme Court is saying, right? So why is this suspension illegal? First of all, what led them to their suspension? So a lot of story goes behind that, and full-fledged case लड़ा गया. सबका stand हम देखेंगे कि क्या MPs बोल रहे थे, क्या State Legislative Assembly बोल रही थी जब वो केस चल रहा था, ठीक है? तो यहाँ पे हम फिगर आउट करेंगे व्हाट वाज द प्ली बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, कि जब सुप्रीम कोर्ट के पास केस गया तो केस क्या था, ठीक है? व्हाट हैड both sides argued, side stands
of both the ends. जब भी कोई केस एक कोर्ट में जाता है तो दो साइड्स होती हैं, ठीक है. What did the court say ultimately? फाइनल वर्डिक्ट तो आप लोग को दिख रहा है, बट देयर इज लॉट मोर ऑब्जर्वेशन. जब भी कोर्ट देता है तो एक डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन देता है, तो लॉट मोर टू इट, राइट. देन कैन मेंबर्स बी सस्पेंडेड बियॉन्ड द रिमाइंडर ऑफ द सेशन? दिस गिव्स अस अ हिंट दैट एक सेशन, मॉनसून सेशन फॉर दैट मैटर, चल रहा है, ठीक है. मॉनसून सेशन इज गोइंग ऑन. उस सेशन के दौरान अगर कुछ भी मिसबिहेवियर, मिसकंडक्ट किया जाता है which is grossly abusive towards the rules of the house, तो a member, an MLA can be suspended. But there is this rule 53 is there for Maharashtra specifically. Otherwise also there are rules. We are going to mention each one of them when we will be writing it down, right? That the suspension can only happen for the remaining time of the session. For example, if the fifth sitting of monsoon session was going on and something bad behavior is showcased by an MLA and he or she needs to be suspended, he cannot be suspended more than the remaining time of the session. As in, you cannot say you are suspended for 1 year. In 1 year there are 3 sessions, right? So are there any similar rules for parliament? Because we are talking about state legislative assembly and the rules mostly get inspired from the rules that are already working in the parliament. So we'll also cover it wholesomely for the parliament also. Nothing has happened in parliament, it has happened in Maharashtra. Fine. Now let's fill in the details in these questions. You are not writing right now, just keep listening to me as I'm reading out from my notes. So very specific details I'm speaking. A lot of these details you are not going to write. So on 5th of July 2021, this incident started. The leader of opposition, Devendra Fadnavis, right, BJP, who was ruling Shiv Sena, ruling party Shiv Sena, thin majority but ruling party, right. Then opposition leader Devendra Fadnavis from BJP objected. Actually, what was being demanded was that OBC's list should be released by the center to us so that we can give reservation at the state level, right. However, Devendra Fadnavis objected to the tabling of this resolution demanding the center to release the list. Fine. Demanding the center to release data on OBCs so that the seats could be reserved for them in the local bodies in Maharashtra. So local level reservation they wanted to give to OBCs. They wanted the data from the center government. They did not have any channel for that. The assemblies can pass various resolutions demanding certain things from center. So a resolution was being tabled. It was not legislation which was happening. कोई law pass नहीं हो रहा था, कोई bill pass नहीं हो रहा था, एक resolution pass हो रहा था center से demand करने के लिए कि भाई हमें data दे दो OBC category के लोगों का हमारे यहाँ के, क्योंकि हमें local bodies में उन्हें reservation देना है. देवेंद्र फडणवीस ने oppose किया, ठीक है. अब there was an upheaval in the house उस opposition के चलते, जिसमें कि उस टाइम पे जो चेयर पे थे he was भास्कर जाधव, an MLA, right, who was in the chair. He adjourned the house for 10 minutes and he went to his office. 12 MLAs, BJP MLAs followed him in his office and they threatened, abused and misbehaved with him, right. Then there was Maharashtra Parliamentary Affairs Minister Anil Parab, right. He subsequently moved a resolution after the house resumed its session that 12 BJP MLAs are to be suspended for a year. So resolution आना किसका था? ओबीसी के डेटा का. आया किसका कि इन लोग को सस्पेंड करो, इन लोगों ने मिसबिहेव किया है, किसी के ऑफिस में जाके जो चेयर पे बैठे थे उस टाइम पे एज अ चेयर परफॉर्म करे थे अपनी ड्यूटीज, राइट. सो ही आस्क्ड फॉर suspension and the resolution got passed, right. Thereafter the MLAs those who got suspended, they had few questions in mind. How did you identify that we were the 12 people, right? If you have identified it from some video footage that we have misbehaved or we went to the office, please provide us the video footage, right.
the state assembly did not, right? So the MLAs filed a writ petition in the Supreme Court last year. This is from last year, right? 5th of July 2021. So now it has been concluded, right? We सारा प्रोसेस हो चुका है, कोर्ट का डिसीजन आ चुका है, हम उसके बाद डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे रिट पिटीशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट में एंड के मेंबर्स ने, ठीक है, जो सस्पेंड कर दिए गए थे फॉर 1 ईयर बाय रेजोल्यूशन, ठीक है? तो यहाँ पे जो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र है उनसे पूछा गया कि सस्पेंशन को क्वॉश, उनको बोला गया कि सस्पेंशन को क्वॉश कर दिया जाए। मतलब एक होता है कि हम न्याय में क्या चाहते हैं, ठीक है? तो वो जो उन्होंने अपील की ना, उन्होंने अपील की कोर्ट में कि वी वांट द सस्पेंशन टू बी क्वॉश्ड, एज एन इट शुड नॉट कैरी फॉरवर्ड, वी शुड बी रीस्टोर्ड इन आवर पोजीशंस, राइट? वी शुड बी अलाउड टू अटेंड द हाउस प्रोसीडिंग्स, राइट? अब कोर्ट में जो स्टैंड्स थे वो क्या थे? एमएलएस ने बोला कि सस्पेंशन इस ग्राउंड पे हम चैलेंज कर रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस यहाँ पे डिनाई हुआ है, वी डोंट नो हाउ वी वर आइडेंटिफाइड। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस seeks that the other party should be able to have its say, right? And there was nothing that was asked from, or they were not allowed to express themselves in the house while the resolution was being passed for their suspension. So principle of natural justice was violated, right? And there is also a procedure which has been laid down for the suspension, which was violated again. They were saying that it is the speaker who has the power to suspend the MLAs and nobody else. While it was, so Bhaskar Jadhav was not the speaker, he was just performing the duty of the speaker in the absenteeism of the chair speaker otherwise. Fine. So they said that they were not given an opportunity to present their case, they were not given expression freedom, violating their fundamental right. And again, another fundamental right was violated, that is right to equality before law under Article 14 of the Constitution. Because there was no equality, they were not given a chance to have their side heard. So someone else's side was heard but theirs was not heard. So unequal behavior is being done with them. So right to equality भी उन्होंने बोला भाई हमारा तो ये भी violate हो रहा है, तो that's why they are able to move directly to Supreme Court for a lot of reasons right now, right? And they also said that they were not given access to the video proceedings of the House, and it was not clear how they have been identified for the misconduct, right? The MLAs have contended that Rule 53, remember Rule 53 belongs to Maharashtra's State Legislative Assembly proceedings, right? Rule 53 is not for the whole country, Rule 53 is not for any other state for that matter. Any resemblance with Rule 53 of Maharashtra and Rule 53 of, let's say, Jharkhand, Chhattisgarh or any other state is sheer coincident. Right now I'm quoting Rule 53 of Maharashtra. Fine. Rule 53 of Maharashtra Legislative Assembly said that the power to suspend can only be exercised by speaker, right? And it cannot be put to vote in a resolution. You can't suspend some MP by a MLA by a resolution. Speaker can suspend, he has the authority, but resolution pass करके हर चीज कैसे कर सकते हैं? There is no way a resolution can be passed to suspend a particular MLA for any given period of time, right? So there is a lot of loophole that you can find out in that. Some unfair proceeding did happen that day in the House, probably in the retaliation of violative acts done by these MPs at first, right? Okay. Now, who is the other party here? Other party here is the Assembly and the state itself, right? So the Assembly and the state had submitted that the action was taken due to undisciplined and unbecoming behavior MLAs. Means they were not behaving like an MLA should behave. वो अपनी पद की शोभा को नहीं ध्यान में रखते हुए काम कर रहे थे, हरकत कर रहे थे, ठीक है? It was argued that the House acted within its legislative competence, ठीक है, कि हमारे पास ये legislative competence है और हम उसी according work कर रहे हैं, and that under Article 212 courts do not have jurisdiction to inquire into the proceedings of legislature. तो 212 उन्होंने कोर्ट करते कहा कि आप कर ही नहीं सकते हमारे साथ इंटरफेयर, हमने जो कर दिया क्योंकि कोर्ट्स आर नॉट अलाउड, कोर्ट्स कैन नॉट
under Article 212. Now, the state also said that a seat does not attend the house if a seat does not an MLA. That is what we are denoting by a seat. If a seat does not attend the house for 60 days, it becomes vacant. But it becomes vacant only if the vacancy is declared by the house. And if the vacancy, so what happens if the seat is being declared vacant? By election happens, right? But since there is they are saying that it becomes vacant only when the house will declare it is vacant. If the house has not declared it vacant, then it is not vacant. So by elections we need not to conduct, right? It was submitted that the house is not obligated to declare any such seat vacant. तो वो चाहे तो कभी तक भी उस सीट को ना डिक्लेयर करे और एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी, नाउ थिंक अबाउट इट लाइक दिस, ओके, एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी जो बहुत टाइम तक ना उसका एमएलए वहां आ रहा है और ना वहां पे बाई इलेक्शंस हो रहे हैं, दैट पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी is being unrepresented for a very long time in the legislative assembly, right? Who is an MLA? Representative of the people in the state legislative assembly. If the MLA is not attending, right, you have suspended him, you are not declaring the seat vacant, so no elections are being conducted, and the seat is vacant, empty, right, not being attended by anyone, which means the people of that constituency are not being represented for a long time in the state legislative assembly, right? Now दोनों तरफ का बात हमको समझ आ गया, ठीक है? कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया? कोर्ट agreed with the MLA's, right, contention and said that the suspension of a member must be preferred as a short term or temporary one disciplinary measure for restoring order in assembly, right? It's only supposed to, ये बदला लेने की भावना से नहीं होना चाहिए, बस डिसिप्लिन रिस्टोर करने के लिए होना चाहिए सस्पेंशन. बेसिकली इट्स जस्ट मॉन्यूमेंटल, एक मैसेज चला जाए, ना कि आप बस चाहते हैं कि किसी को दूर रखा जाए फॉर एक्स नंबर ऑफ डेज. Message can be given only by one day also, fine. A message is enough. A suspension of an MLA and the news that this MLA was suspended gives enough message to the MLA. There's a deterrence involved because his misbehavior is going into the public, his voters, whom they are accountable to, right? So it is not as if they are going to have a punishment. This is restoring the disciplinary order of the house. This measure is supposed to be taken like that, and that's why for a short term, because after all, if an MLA is being suspended, it's the people and their representation who is actually suffering and not just the MLA, right? It said that the Rule 53 only provides for withdrawal of a member for remainder of the day. Maharashtra Assembly had Rule 53, right? But Rule 53 is only allowing you for the remainder of the day, or in case of repeat misconduct, if the misconduct is repeated by the same person in the same session, for a remainder of the session, and that's all. So first you were supposed to go with day and then for session, but you violated your own rule of procedure and you went directly for a year, right? This is the observation of court, statement by statement. The court said that as per this rule, withdrawal of a member can only be done in case of members' conduct being grossly disorderly. The year-long suspension will mean that constituency remains unrepresented, while there would be no vacancy also to be filled by by-election, through a by-election. Fine. It was noted by the court that a thin majority coalition government, which Shiv Sena was enjoying at that time, could use such suspensions to manipulate the opposition party members, because if you have thin majority and there is a good number of opposition also, and you are making sure they are suspended, right, you are actually manipulating the voice of opposition over there, because they are in good number and you are enjoying a thin majority, so you may feel intimidated in the house, right? So that's why it was just to keep the
opposition party at a bay, right? Members affecting their effective participation in discussions and debates. It also ruled that legislative procedures are open to judicial review. Remember, state was arguing 212 article, but court is saying, listen to me, everything is open to judicial review. Fine. And review on the touchstone of being unconstitutional. If you have done anything unconstitutional, grossly illegal, irrational or arbitrary, then I am going to interfere. Court is saying, fine. The ruling is another reminder to the legislative bodies that their functioning is subject to constitutional parameters. Fine. So this was the case. And the answer, can the members be suspended beyond remainder of the session? The answer, again, court is saying, the bench is saying, court's bench is saying that, referring to Article 190 Clause 4, the Constitution says, if an MLA of a state is absent for a period of 60 days without permitted by the House and absent from all meetings thereof, the House may declare its seat vacant. Article 190, Constitution is telling you, you need to declare it vacant. How can you say it's on the discretion of our House that whether we declare it vacant or not? That was what court, State Assembly was saying in the court, right? That if we do not declare it vacant, we need not have by-elections. But court is saying, and quoting article word by word, right? Article 190 Clause 4, that listen, beyond 60 days, it's not your discretion, please declare it vacant. It's by Constitution, right? Under Section 151A of the Representation of People Act 1951, a by-election for filling any vacancy shall be held within period of 6 months from the date of occurrence of that vacancy. So right after the 60 days are completed, the State Legislative Assembly is supposed to declare it vacant, and right from the date it is declared vacant, within a period of 6 months, you have to conduct a by-election. We all knew this rule, but Maharashtrian Assembly did not, right? Okay. The court said that anything in excess to that, excess to this, that okay, a seat is getting vacant if voluntarily, if you are not declaring it, anything in excess to what I just quoted, anything in excess to that would be irrational. Suspension entailing deprivation of constituency from being represented in the House if conduct of a member is gross, warranting his removal from the Assembly for a longer period, the House can invoke its inherent power of expulsion. कि expel ही कर दो अगर बहुत ज़्यादा problem है तो, but expulsion also, you know, means that the seat is vacant. So new member will come, but let the constituency be represented. There is this person who's not behaving well. Let him be expelled, but the constituency must get represented. Right? You cannot, there is a difference between, अच्छा स्कूल से कोई सस्पेंड हुआ है और स्कूल से कोई एक्सपेल हो गया है, में डिफरेंस है ना. सस्पेंड हो गया है वापस आएगा, एक्सपेल हो गया है वापस नहीं आएगा, उसकी सीट किसी और को दी जा सकती है, उस बच्चे की जगह किसी और को, एक डिजर्विंग कैंडिडेट को एडमिशन मिल सकता है. So exercise your expulsion and not this kind of arbitrary suspension is what court is saying, right? Now parliamentary, this was the case. Parliamentary rules we will write. It's not part of the story, so I'll dictate them thereafter. Right now what I'm going to do is I'm going to cover these 4 questions first, right? So we'll see, this we have already understood, plea before the Supreme Court. This is not part of our writing. Only the court's verdict and the facts related to it are part of our writing. Both sides argument we have done. We are not writing this, right? Because they were arguing in some manner which was wrong. First of all, state was arguing in wrong manner. Rule 53 we have understood, it belongs to Maharashtra. What did the court say is what we are going to write, because that's the facts we need to remember. Constitutional it is. Fine. Then, can members be suspended beyond remainder of the session? Your answer is no, right? Just expel them if you want to. But this 1 year suspension was arbitrary. Fine. Chalo. So rule 53, जो facts हैं सिर्फ वो लिखेंगे हम. Rule 53 ब्रैकेट में लिख देना, महाराष्ट्र
Legislative Assembly Rules. Maharashtra Legislative Assembly Rules. स्टोरी समझ में आई है ना? ठीक है. Rule 53, what does it say? Provides for withdrawal of withdrawal of a member for the remainder of the day, or in case of repeat misconduct in the same session for the remainder of the session. Next, Article 190, Clause 4. इस तरीके से लिखेंगे. Of the Constitution says, if an MLA, comma inverted comma लिख सकते हो, if an MLA of a state is absent for a period of 60 days without permitted by the House and absent from all meetings thereof, THERE wala thereof, the House may declare his seat vacant. The House may declare his seat vacant. Fine. So what happens if a person is really sick? Illness is there. His seat will be declared vacant for if he is absent for 60 days continuously in the session or is not attending any of the House meetings. What happens in case of illness? Right. So permission, वहाँ पे clause है ना, permitted by the House. So application वो information देगा उनको, speaker को, and that he'll inform the House that I am ill. And the House, if permitted by the House, if he or she is permitted by the House, he or she can remain absent for more than 60 days and the seat cannot be declared vacant because permission लेके absent हुए हैं, right? Okay. Then under section 151 of
रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, ये आप आरपीए लिख सकते हो, 1951, सेक्शन 151A, comma, inverted commas, a by-election, a by-election for filling any vacancy, for filling any vacancy shall be held within a period of 6 months from the date of the occurrence of the vacancy, the occurrence of the vacancy. Now we will write rules of parliament. You can give a subheading parliamentary rules in this case. इसमें कुछ समझाने का नहीं है, ठीक है, हम डायरेक्ट डिक्टेशन पे जाएंगे. अगर फिर भी कोई डाउट हो जस्ट आस्क. फर्स्ट वन, your first point, there are 3 points in total. Rules 373, 374 and 374A of the rules of procedure and conduct of business in Lok Sabha, in LS लिख सकते हैं, लोक सभा, अगर कंफ्यूजिंग ना हो, अगर लेजिस्लेटिव असेंबली पढ़ोगे तो लोक सभा लिखना, ठीक है. लोक सभा प्रोवाइड फॉर withdrawal of a member whose conduct is grossly disorderly, मतलब अगर कोई मिसबिहेव करता है तो देयर आर रूल्स. रूल नंबर 373, 374, 374A of the rules of procedure and conduct of business of Lok Sabha, under which the member can be withdrawn from the house. It provides for suspension. We are continuing the same point. I'll tell you when the next point is there, right? It provides for suspension of one who abuses the rules of the house, or willfully obstructs its business. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, the maximum suspension as per these rules, these क्यों, क्योंकि 3 कोट किए ना हमने. These rules is 5 consecutive sittings,
5 consecutive sittings or remainder of the session or remainder of the session, whichever is, guess, whichever is less or more. ज़्यादा टाइम के लिए करेंगे या कम टाइम के लिए करेंगे? Think of the philosophy behind the rule which we were discussing. Less, right? Whichever is less. Why? Because it's about representation of people who that particular member is representing, right? And we just have to give him a message for deterrence, right? Okay. Now, next point, the maximum suspension. Only Lok Sabha is part of parliament? No, there are more. Oh, Rajya Sabha also. Okay, then right. The maximum suspension for Rajya Sabha rules, under the rules 255 and 256 also does not exceed exceed the remainder of the session, remainder of the session. ठीक है? Any doubts in this particular topic? It's been covered. I'm erasing the ink so that you can look at the questions once again. Yeah? Okay. A convention of CMs. Remember, I was quoting about this yesterday. Who are the people playing the major role? It's the CMs of West Bengal and Tamil Nadu. दुश्मन का दुश्मन दोस्त, ये पॉलिसी है ना? ओके, ठीक है. चलो, let's look at the question statement. Oh, sorry, current affairs statement, news statement. The chief ministers of West Bengal and Tamil Nadu have jointly proposed a convention of non-BJP chief ministers, right? दिस इज अच्छा. अब इसके आगे अब मैं ये न्यूज स्टेटमेंट ये सोच के फिल्टर करती हूँ कि वो लिखवाऊंगी जो यूपीएससी में एज इट इज क्वेश्चन बन के आ सके, है ना? अब आप सोचो कि ये कैसे क्वेश्चन बन के आएगा. इसके आगे कोई तो वो एक्स्ट्रा वर्ड्स यूज करेंगे ना, दैट हाउ दीज डेवलपमेंट्स और हाउ सच इनिशिएटिव्स इम्पैक्ट द फेडरल कैरेक्टर ऑफ इंडियन स्टेट, राइट, और इंडियन पॉलिटी, राइट? Or how such initiatives, if UPSC wants to give a tilt to the question, if it wants it to incline in certain way, how these initiatives can harm or undermine the federal structure of Indian polity, right? So this news statement is just an inspiration for UPSC to ask a question to you, right? So let's see what all content we have to gather to be able to answer if such question comes, right? So in this news we are going to discuss what is the backdrop of proposing such convention, because when a news statement comes in, you need to tell the examiner that I know about this news. How will you tell? You'll add a little bit of more detail, more than which is given, right? You will add a little bit of more detail and you will convey. You will not say, the examiner, I know that this happened. No. You just have to convey very smartly that yes, this happened and it was because of this, right? So it is conveyed that this person who's writing this answer is aware. If you move directly to the static portion, right, what happens is the examiner may just realize that this person is answering according to the later statement, which is the federal character of Indian polity, right?
And as soon as you make him recognize that you are knowing the context why he is asking the question, he is just more interested into reading yours answer, because statics portion is written same everywhere and he knows it also for himself. Like I say that I know you all know it, but we are just revising. He is revising I don't know how many times for checking your notebooks, right? So just to create a glue factor, we'll do this, right? We will know the backdrop, and also for the fact that you will be interested right now to know the backdrop, right? Then what is the convention about? What this convention is going to be all about? Trust me, there is no agenda, right? This is the truth, and this is what you will be writing. This is why we will be missing writing this point. Not every question we are writing, right? We are just covering it in this format, and by the end of the completion of this topic, you must make sure that you know all these answers of the given questions. So we are not going to write about this answer of the second question and neither the first one. We don't have to do anything with politics. The backdrop is all political, right? And the convention, what is it about? It's all political, right? There is no particular agenda whatsoever, but we will talk about it just to talk, not write. What are the implications of such initiatives? This is what we will write, right? What are the implications on what? Federal structure. We are covering this under the ambit of federalism, right? That is the larger topic I have picked. And what about the autonomy of the states in relation with the center? Something is being harmed. Which is the backdrop? Details will fill in, right? But if it is being harmed, what it is? It's a federal structure, and who is at the receiving end of the harm? The states, right? Which is why they feel the need of doing something like that. So these two questions we are going to write about. And now let's begin with the story first. So वेस्ट बंगाल की स्टोरी पहले लेंगे, फिर तमिलनाडु की सुनते हैं. तो गवर्नर वेस्ट बंगाल के कौन थे कुछ टाइम पहले तक? हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं आज के टाइम पे, मिस्टर जगदीप धनकर, राइट? ही वाज द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल, रिमेंबर? नो? Yes, okay. So he was accused of summoning the chief secretary and DGP regular basis पे. He used to call them to meet him, the chief secretary and the DGP. And if they do not turn up, if they don't show up to meet, he will take up to Twitter and tag the CM that I have, summoned them, they are not coming. Maybe this person is stopping them or asking the CM to send them immediately or so on. Fine. Plus, he also withheld his assent to the Havra Municipal Corporation Amendment Act, which was also delaying the elections in the civic body. So two things he was not doing well with. Of course, there is another story to this. On the flip side also, we'll come to it in this particular session in today's class itself, that how West Bengal CM was retaliating or something was stimulating action from other side. एक्शन टू रिएक्शन हो रहा था, खूब पॉलिटिक्स हो रही थी वेस्ट बंगाल में, ठीक है? तो तमिलनाडु में क्या हुआ? तमिलनाडु में गवर्नर हैं सबसे पहले RN रवि. उन्होंने तमिलनाडु की जो, रिमेंबर देयर इज अ रिजर्वेशन तमिलनाडु में इंट्रोड्यूस होना था जो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल था अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में मेडिकल के. सो डिग्री कोर्सेज में details not required, but the reason is required. तो undergraduate medical degree courses जो bill था वो अभी तक bill ही है. It's not yet act. Why? The governor has not given his assent. He has not acted upon it whatsoever. Fine. And it was passed by the assembly in September 2021. Right? Since September 2021, for more than a year now, governor is keeping it with himself. He is neither sending him for the president's approval nor giving his assent, and not even giving it back to the assembly for reconsideration. Nothing he is doing about it, right? So the governor was either required to send it to the president for approval or return it for reconsideration to the assembly, but he is indefinitely delaying and
taking no decision, which is undermining the legislation itself, the power to legislate itself of the legislative assembly, right? That if governors will keep doing this, what is the point of legislating anything then, right? Okay, now this was the whole thing which happened. Now what is the convention about? The convention, first of all, it's a nascent initiative, it's never been done, it's a very baby, राइट कि पहली बार ऐसा हुआ है कि सब चीफ मिनिस्टर्स जो हैं नॉन बीजेपी स्टेट के उनकी कन्वेंशन को इनवाइट किया गया है. देयर इज नो क्लियर एजेंडा बट पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट इज एब्सोल्युटली क्लियर, राइट? एंड हियर the catch is that the relation between union and states, especially states ruled by the opposition parties, are strained due to various factors. Factors we discussed yesterday, I mentioned a lot of them, like GS2, right? There is a stepmotherly behavior, partisan behavior with the states which are not ruled by the BJP-led government, which is there in center. So if the same party is ruling a particular state, the behavior is different. But when the same party is not ruling, some other party is ruling, this behavior is absolutely stepmotherly. There is partisanship, right? And center move to give itself the absolute power. This is what we can write also, that center has actually given itself an absolute power with respect to the transfer of IAS, IPS, IFS, right? These transfers were done by the state government. Otherwise, whichever cadre the IAS, IPS was going to, the state government had the power to transfer them within the state at least, right? But now these transfer powers have been taken up by the center absolutely, right? Which is undermining again the presence of some center ka bheja hua person who is not deterred by anybody in the state, because nobody has any control over this person's position, right? This is also undermining, harming or threatening the regimes in the state, right? Now, what are the implications? I'll tell you 2 points and you know the whole context of it, right? There will be increasing regionalism. Reason being that the central government currently, which is there, like the BJP led government, they gather most of their support from northern and western regions of the country. Gujarat, West, Maharashtra, they are in opposition but having good MPs over there. West, then northern belt, Uttar Pradesh, right? And Madhya Pradesh, right? Northern belt and western belt, mostly these areas are BJP led. On the other hand, northeastern, okay, some northeastern states also, but what about the southern and eastern states, right? So some regionalism, regional division can be seen, right? West Bengal in east, Tamil Nadu, Kerala, all of these in west, oh sorry, south, right? Okay, so regionalism, and then definitely there will come in communal angle, right? So two things are the implications of such initiatives: communalism and regionalism. This you can directly write. These are the 2 points under the implications, right? So far you were not supposed to write anything, but this you can write. Two points only: regionalism and communalism are implications. This is enough. You can, it is GS, you don't have to go through a lot of description unless your topic is itself regionalism and communalism for the question, right? So this much will be enough, and if you can just elaborate it in 1 or 2 lines, that would be more than enough, right? If required, yes. Because you see what so there is this is a political context, right? How it turns into communalism is because of politics. And Yogi Adityanath's very infamous statement was there, that there is some, you know, upheaval in the states like Kashmir, West Bengal and Kerala because they have a lot of Muslim political participation. This was a statement by a chief minister of a state, Mr. Yogi Adityanath. He did say this, right, on record.
So things like these statements, political statements, bring up communalism, right? So how they will do, they will take care of it. These are politicians, right? Okay. Then see, they are very, you know, very much ready to do it. दीदी विल से बंगालीज के साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो जैसे ही आपने बंगालीज यूज करना शुरू किया, इट बिकम्स कम्युनल, राइट? ओके, नाउ what about the autonomy of centers of state relations with regards to the center in this case, right? How center is harming. So it's a story, fine, understand it like this. There was an era of coalition government before 2014. It went on for 25 years, right? And at that time, the government in center was dependent on regional parties for enjoying its power in the center. So it took good care of the interests of all of them, and somehow balancing act was done, right? At least it was able to perform as a neutral arbitrator, which the current government, seems like definitely it is not the neutral arbitrator whatsoever, right? So it was in after the 2014 victory of the current BJP led government, and then again the victory in 2019, which has shaken the relations between center and state a lot, right? And this was the autonomy of state in this manner. The autonomy of state in the center is harmed. For example, the autonomy in the state, एक स्टेट गवर्नमेंट की स्टेट में ही ऑटोनॉमी हार्म हो रही है, वो भी समझ में आ गया था हमें, हमने पहले डिस्कस किया था. अब यहाँ पे विद द सेंटर कैसे हार्म हो रही है. पहले उनका से ज्यादा था जब कोलिशन गवर्नमेंट थी, अब उनके पास कोई से ही नहीं है, क्योंकि किसी को उनकी पड़ी नहीं है, क्योंकि जरूरत नहीं है किसी लेजिस्लेशन को पास करने के लिए या कोई भी एक्शन लेने के लिए उनकी, जिसकी वजह से फार्म लॉस पास हो जाते हैं पर उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता. ठीक है, क्यों? क्योंकि जरूरत नहीं फील करते, राइट? वहीं पे अगर दे वुड हैव बीन इन अ बेटर पोजीशन इफ द गवर्नमेंट वाज लेट्स से कोलिशन, कभी भी ये एक्ट करने की हिम्मत नहीं होने वाली थी किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की, राइट? सो दिस इज हाउ द ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट्स इन द सेंटर, the power they enjoyed being a state government, the power they would have enjoyed with respect to the decisions being taken in the center, that is not there. Fine. And we can conclude by saying that such conventions of CM, I'm giving you a conclusion for the answer if this comes up ever, this question, right? So convention of CMs, we have to, balance it out, right? Can articulate the concerns of states, I'm going to repeat it, let me just speak. But it should guard against turning into an occasion of electoral calculations. So हालांकि ये हम अप्रिशिएट करें कि इस तरह की कन्वेंशन हुई है, और हमने पिछले करंट अफेयर में बोला था कि क्राइसिस के टाइम पे क्यों करते हो, राइट? करो इस चीज को, बट ये जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की वजह से करते हो, उसमें अपने आप को बेनिफिट करने के लिए करते हो, इसके अगेंस्ट इन कन्वेंशंस को एक गार्ड मिलना चाहिए. उनसे बचे रहकर अगर ऐसी कन्वेंशंस होती है, देन इट्स गुड फॉर आवर कंट्रीज फेडरल स्ट्रक्चर, दैट स्टेट्स आर कोऑर्डिनेटिंग विद ईच अदर, राइट? Okay, now we will write a convention of CMs or chief ministers can articulate the concerns of states, but it should guard itself against turning into an occasion for electoral calculations. कि वहां पे भी भाई यही डिस्कस हो रहा है कि
कितने तुम्हारे वोट है, कितने हमारे वोट है इलेक्शंस में, है ना। ऐसी कन्वेंशन में भी ये डिस्कस हो रहा है, फिर तो कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस क्लियर। मूव करें, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ वाइस चांसलर्स। वाइस चांसलर्स कहाँ की पोजीशन है भाई? यूनिवर्सिटी की। यूनिवर्सिटीज के होते हैं ना वाइस चांसलर्स। चांसलर कौन होता है? वाइस लगा है तो कोई उसके ऊपर भी होगा ना, तो चांसलर कौन होता है? गवर्नर होता है ना। ठीक है। सी आई वॉज टेलिंग यू, यू गाइज आर सुपर इंटेलिजेंट, मानते ही नहीं हो। चलो ठीक है। So this is your news statement. The Tamil Nadu Assembly passed 2 bills that seek to transfer the governor's power in appointing vice chancellors of 13 states universities to state government. तो ये जो पार है कि वाइस चांसलर कैसे अपॉइंट होगा, ये गवर्नर के पास होती है। कैसे होती है कि एक सर्च कम सिलेक्ट कमेटी होती है, वो 3 लोगों के नाम सजेस्ट करती है। दिस इज अ स्टैंडर्ड प्रोसीजर, यूजीसी के अकॉर्डिंग ये प्रोसीजर चलता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के अंदर। ठीक है, उन्होंने ये सजेस्ट किया है, दे आर सपोज टू मेक श्योर द स्टैंडर्ड्स ऑफ अपॉइंटमेंट एंड एवरी सॉर्ट ऑफ एजुकेशन इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, राइट, यूजीसी. So UGC has given this rule that there will be a select cum search committee, 3 members name will be suggested, a 3-member panel name will be suggested, and anyone, the chancellor, the superior authority, can appoint his deputy, that is vice chancellor, right? But state government is passing a bill that no, governor will not appoint vice chancellor, we will appoint vice chancellor. So this is the news point for us. So what we have to discover in this news is what are the highlights of these 2 bills. बोलते क्या ये 2 bills, करना क्या चाहती है ये गवर्नमेंट, फाइन. And then what is the need of passing such a bill, क्यों पास कर रहे हैं. Then what is the role of UGC in this? I have already told you, but I am going to make you write. This one we are going to definitely write. However, these 2 are not as important to write. These are just backdrops. यूपीएससी स्टेट असेंबली के पर्टिकुलर बिल के फीचर्स पूछेगा, इसका थोड़ा सा मतलब प्रोबेबिलिटी जो है वो कम है, बिकॉज पूरे साल में उनके पास इनफ करंट अफेयर्स होंगे इम्पैक्टफुल. ठीक है, बट हम फिर भी क्लास में जान लेंगे ताकि देयर इज, इवन इफ देयर इज अ माइनर चांस, यू स्टिल नो, राइट. ओके, व्हाट आर द की ऑब्जर्वेशंस मेड बाय सुप्रीम कोर्ट इन दिस रिगार्ड. तो कोर्ट्स क्या कहते हैं इस रिगार्ड में कि क्या इससे पहले भी कोई ऐसी चीज़ें हुई हैं, किसी और स्टेट ने भी ऐसा किया है, और अगर किया है तो क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं. डेफिनेटली कोई ना कोई कोर्ट के पास चला गया होगा, तो कोर्ट्स ने क्या ऑब्जर्व किया. ठीक है, फाइन, अलाउ मी अ मिनट. सो हम एक नोट बना के ये लिख लेंगे कि सबसे पहले चांसलर होता है हमारा गवर्नर, है ना. और करंटली जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं वाइस चेयरमैन की, वो कैसे होती हैं. हमारा गवर्नर जो है, ही मेक्स द अपॉइंटमेंट्स फ्रॉम अ पैनल ऑफ 3 names recommended by a selection committee. This happens even in Tamil Nadu before the passage of this bill. Even today, it's still a bill, not an act, right? 3 members में से चॉइस दी जाती है और गवर्नर उसमें से सिलेक्ट कर लेता है. हाँ, वो पैनल रिकमेंड करता है. स्टेट गवर्नमेंट constitutes the search cum select committee. ठीक है, okay. So there is no specificity in who is going to be the member. It's the discretion of COM. ठीक है, in the state. अब इस बिल के फीचर्स बस ये थे कि हम, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, राइट, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, राइट. तो इस बिल के फीचर्स बस ये थे कि ये जो अबव मेंशन पार है, यानी कि जो गवर्नर की पार है, वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दी जाए. किस चीज़ की? वाइस चांसलर को अपॉइंट करने की. ठीक है, तो जो फाइनल वर्ड्स होंगे ऑन द रिमूवल ऑल्सो, दे विल ऑल्सो रेस्ट विद द
स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा, रिमूवल अदरवाइज होता कैसे है कि कोई भी एक अगर कुछ रिमूवल करना होता है तो इंक्वायरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होती है जिसमें कि एक हाई कोर्ट जज, दिस आई विल मेक यू राइट, जस्ट कीप लिसनिंग टू मी राइट नाउ। एक हाई कोर्ट जज होता है एंड देन एक ब्यूरोक्रेट होता है जो कुछ टाइम तक सर्व किया हो एटलीस्ट एट द पोजिशन ऑफ चीफ सेक्रेटरी, ठीक है। इनके अंडर एक इंक्वायरी पैनल होता है जो वाइस चांसलर को अगर रिमूव करना है तो उसके अगेंस्ट इंक्वायरी देगा, फिर रिपोर्ट करेगा, जो रिपोर्ट सबमिट होगी उसके बेसिस पे रिमूवल किया जाता है, ठीक है, बाय द चांसलर। बट रिमूवल का भी से इनके पास आ जाएगा, दिस इज व्हाट द बिल वांटेड टू चेंज, फाइन। सो अपॉइंटमेंट एज वेल एज रिमूवल, द बिल वांटेड टू शिफ्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, राइट। दिस इज व्हाट, तो चांसलर हमारा एक्स ऑफिशियो क्यों है? एक्स ऑफिशियो है ना, गवर्नर जस्ट बिकॉज ही इज गवर्नर ही इमीडिएटली अज्यूम्स द ऑफिस ऑफ चांसलर ऑल्सो टू कर्ब द पॉलिटिसाइजेशन। And why the governor is appointing the vice chancellor? Again, to curb the politicization. And this is not from today. This Woods dispatch याद है किसी को? क्या था Woods dispatch? हाँ, क्या था? एजुकेशन से रिलेटेड था इंडिया में, है ना, 1854 की बात है, ठीक है। उस टाइम से इट इज ऑल्सो नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। तो जब पहली बार ये डिसाइड हो रहा था कि इंडिया में हम हायर एजुकेशन या एजुकेशन इन जनरल कैसे देने वाले हैं इंडियंस को, तो उस टाइम पे ये डिसाइड हुआ था कि यूनिवर्सिटी के जो चांसलर की पोजीशन है वो गवर्नर्स की होगी। रीजन क्या था, इंटेंशन क्या थी? टू सेव इट फ्रॉम पॉलिटिसाइजेशन, पॉलिटिक्स प्ले वहां पे ना हो इसीलिए, ठीक है, एजुकेशन को पॉलिटिक्स से बचाने के लिए। तो ये जो बैकड्रॉप में चीजें चल रही होती है जो जगदीश ने अभी रेस की, ये सब बैकड्रॉप की चीजें होती है, ये हमें भी नहीं लिखनी है अपने आंसर में कि अरे कोई सिंडिकेट चल रहा है यूनिवर्सिटीज में जिसके बेसिस पे डिसाइड हो रहा है। हाँ, लेकिन ऐसा हो सकता है क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी के हैंड्स में आप पूरी पावर दे रहे हो, अब गवर्नर की पोजीशन ही आप छीन ले रहे हो। लेट्स से सिलेक्ट, अब हम कहेंगे कि सिलेक्ट एंड सर्च सिलेक्ट कम सर्च कमेटी में या सर्च कम सिलेक्ट कमेटी में डेफिनेटली वहां पे भी वो जो COM का से है वो जा ही रहा होगा। यू कैन नॉट डिनाई, यू कैन नॉट रूल आउट, बट कैन यू राइट ओवर हियर? नो, यू कैन नॉट, ठीक है। तो पॉलिटिक्स है, वी नो, बट क्या ये विजिबली हम कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या किसी स्टैट्यूट के अकॉर्डिंग है? नहीं है। तो हमारे लिए हम उसे नेग्लिजिबल मानेंगे, अभी के लिए हम उसे रूल आउट कर देते हैं अपने व्यू पॉइंट से, ठीक है। हम सिर्फ इस तरीके से चलेंगे कि क्या एक्चुअल में हो रहा है, ठीक है। अगर ये किसी एक पर्टिकुलर वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड न्यूज़ होती और उसके पीछे कुछ पॉलिटिक्स चल रहा था तो शायद मुझे बैकड्रॉप में डिस्कस करना पड़ता कि उस वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट में क्या हुआ, बट ये एक बिल है जिसमें स्टेट को पावर ट्रांसफर कर रहे हैं, तो हम उसी कॉन्टेक्स्ट में इस चीज़ को देखेंगे, ठीक है। अब नीड क्या है फॉर पासिंग सच अ बिल? नीड ये है कि स्टेट्स को लगता है कि हमसे तो कोई कंसल्टेशन ही नहीं होती, गवर्नर्स को सारी डिस्क्रिप्शन दे देते हैं और गवर्नर सुनते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, सो देयर इज अ लैक ऑफ कंसल्टेशन, ठीक है। स्टेट्स को ऐसा लगता है। एंड देन एडमिनिस्ट्रेटिव इरेगुलरिटीज उनको फील होती हैं अगर उनकी पसंद का पर्सन ना हो, या अगर गवर्नर कुछ टाइम ले ले अपना डिसीजन देने में, जो कि गवर्नर आजकल करते हुए दिखाई देते हैं कि बहुत टाइम तक डिसीजन नहीं दे रहे हैं, बहुत टाइम तक कोई वाइस चांसलर अपॉइंट अगर नहीं होता है, सो देयर इज एडमिनिस्ट्रेटिव इरेगुलरिटी दैट हैपन्स विद इन द यूनिवर्सिटी, राइट, एंड द कनेक्शन बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनिवर्सिटी, how that is going to happen, it is hampered administratively, right? Then there is obviously a power clash over here between the center and the state, because governor is somehow, this is how always states are looking at governor as a representative of center and not as a link between central government and state government, right? So there is a power clash, right? So पुंछी कमीशन ने एक बार रिकमेंड भी किया था कि जो गवर्नर्स हैं उनको ये नहीं होना चाहिए राइट, कि उनको कॉन्स्टिट्यूशन ने ये राइट नहीं दिया है, ठीक है, ना तो उनको एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बनाने का, ना ही उनको अपॉइंट करने देने का वाइस चांसलर्स। उनकी जो पोजीशन है वो एक गवर्नर की, कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोजीशन है ना वो गवर्नर है। जो यूनिवर्सिटीज क्रिएट होती हैं स्टेट में, वो स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट्स आते हैं, हर एक यूनिवर्सिटी के लिए एक एक्ट आता है, तब वो यूनिवर्सिटी क्रिएट होती है, ठीक है। तो पुंछी कमीशन कह रही थी कि गवर्नर को एक्स ऑफिशियो मत बनाओ, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे एक पावर क्लैश
के टाइम पे चलते स्टेट गवर्नमेंट्स उसको अपने लिए आर्ग्यूमेंट की तरह यूज करती हैं रिकमेंडेशन को मुंशी कमीशन की, ठीक है। एंड उसके बाद ऑफ कोर्स बिहेस्ट ऑफ सेंटर की सुनते हुए गवर्नर अकॉर्डिंगली अपॉइंट करते हैं, विच इज़ अ वेरी मच ऑफ अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, कि कहीं भी अगर सेंटर बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश करता है तो एक रिटेलिएशन स्टेट्स भी प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, विच इज़ गुड फॉर डेमोक्रेसी इफ़ यू लुक एट इट लाइक दैट, है ना। चलो, तो अदर स्टेट्स में भी कुछ चीज़ें हुई हैं, उसकी भी स्टोरी सुन लो, फिर लिखेंगे, आराम से लिखेंगे, पहले स्टोरी, है ना, ठीक है। महाराष्ट्र असेंबली ने एक बिल पास किया था अमेंड करते हुए कि महाराष्ट्र की जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका 2016 का एक्ट है, महाराष्ट्र पब्लिक यूनिवर्सिटीज एक्ट 2016। तो उन्होंने एक अमेंडमेंट पास की जहां पे उन्होंने बोला कि गवर्नर विल बी गिवन 2 नेम्स टू चूज, नॉट 3 नेम्स टू चूज, 2 नेम्स टू चूज। एंड किससे कौन देगा? सिलेक्ट कम सर्च कमेटी नहीं देगी, स्टेट गवर्नमेंट देगी, यानी कि कौन देगा? सीएम। द गवर्नर इज ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ सीओएम हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर, सीएम, राइट। सो स्टेट गवर्नमेंट आपको 2 नेम्स देगी, आप उसमें से चूज करो और पैनल का सजेशन जो है वो स्टेट के पास आएगा, ठीक है। 2019 में वेस्ट बंगाल ने भी ये जो पोजीशन है गवर्नर की, अथॉरिटी जो है वाइस चांसलर्स को अपॉइंट करने की, दे टुक इट अवे फ्रॉम द स्टेट यूनिवर्सिटीज। उन्होंने बोला कि हम नहीं गवर्नर को अपॉइंट करने देंगे वाइस चांसलर्स। देन ओडिशा गवर्नमेंट ने भी क्या किया, नॉट जस्ट वाइस चांसलर्स बट यूनिवर्सिटी में जितनी भी कई तरीके की अपॉइंटमेंट्स होती हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, उनका कंट्रोल अपने पास शिफ्ट करने की कोशिश की, जिसको यूजीसी ने चैलेंज किया कोर्ट में, ठीक है। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि यूजीसी के रूल्स के अंडर है ये कि चांसलर अपॉइंट करेगा, और चांसलर कौन होता है? आपका गवर्नर हु इज द चांसलर, ठीक है। सो यूजीसी के रूल्स यहाँ पे अंडरमाइन हो रहे थे, इसलिए उन्होंने चैलेंज कर दिया। हालांकि गुजरात, ठीक है, अभी तक आपको ऐसे मैं स्टेट्स कोट करी थी जो ऑपोजिशन पार्टी रूल है ना। गुजरात में ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है वाइस चांसलर को बेस्ड ऑन द नेम्स रिकमेंडेड बाय द सिलेक्ट कम सर्च कमेटी, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, इन सब जगहों पे भी जो वाइस चांसलर्स की अपॉइंटमेंट है वो 3 नेम्स में से होती है जिसे सर्च कमेटी देती है, पर जो अप्रूवल होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है। तो स्टेट गवर्नमेंट से होते हुए गवर्नर के पास जाता है, जब तक स्टेट गवर्नमेंट उसे अप्रूव नहीं करती 3 नेम्स को, वो गवर्नर के पास नहीं जाता। पर आइडियली होता क्या है, डायरेक्टली सर्च कम सिलेक्ट कमेटी का जो नेम का पैनल है, 3 नेम्स का पैनल, वो चांसलर के पास जाता है और चांसलर सिलेक्ट कर लेता है, यानी कि गवर्नर सिलेक्ट कर लेता है। हालांकि जो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू होके जा रहा है, ये स्टेट गवर्नमेंट का खुद का इंटरवेंशन है अपने पास कंट्रोल थोड़ा शिफ्ट करने के लिए, ठीक है। तो मैंने क्या क्या कोट किया? महाराष्ट्र से कोट किया मैंने, ठीक है। मैंने आपको कोट किया वेस्ट बंगाल से, ठीक है। फिर हमने कोट किया गुजरात से, एंड देन आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, ठीक है। सब क्या करने की कोशिश करें, ओडिशा से भी कोट किया था। ओडिशा में यूजीसी का के साथ उनका क्लैश भी हो चुका है, तो देयर आर सम ऑब्जर्वेशंस बाय द कोर्ट व्हिच आर देयर प्रेजेंट फॉर अस टू गाइड अस इन दिस केस कि अभी क्या करना है आगे, ठीक है। चलो, नहीं पेन मैं पूरा कर लूंगी, फिर हम फिल्टर आउट करके बहुत कम लिखेंगे, ठीक है, जितना जरूरी है, ठीक है। रोल ऑफ यूजीसी, I say चलो whenever I'm shifting to another question, so don't mind me, I'll start saying another question. जैसे मैं चलो बोलती, it also does not mean pick up your pen, but somehow you guys just pick up your pen. Okay. So education comes UGC के रोल के अकॉर्डिंग, क्यों, क्या रोल है? सबसे पहले अच्छा यहाँ पे आप लोग स्टार्ट कर सकते हो कि यूजीसी कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ, इसके कौन से एक्ट के अंदर, क्योंकि एक स्टैट्यूटरी बॉडी, यूजीसी इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल, इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी, सो कौन से एक्ट के अंदर हुआ वगैरह वगैरह, आई एम नॉट गोइंग टू गो देयर, आई एम गोइंग टू स्टिक टू व्हाट इज रेलेवेंट विद माय करंट अफेयर राइट नाउ, ठीक है। सो एजुकेशन जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है, ठीक है, बट जो कोऑर्डिनेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स होता है इन द इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन, यानी कि कोऑर्डिनेट करना और ये डिटरमाइन करना कि किस तरीके के स्टैंडर्ड्स रहेंगे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, यानी कि कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ में, यही होते हैं ना हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। तो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में किस तरीके के स्टैंडर्ड्स रहेंगे ये डिटरमाइन करना, और सारा कोऑर्डिनेशन का काम देखना, ये सब हायर एजुकेशन और रिसर्च
के जो इंस्टीट्यूट्स हैं या फिर साइंटिफिक और टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं, ये सब एंट्री नंबर 66 ऑफ यूनियन लिस्ट में आते हैं। एंट्री नंबर 66 ऑफ यूनियन लिस्ट में आते हैं, ये हम लिखेंगे, ठीक है। अब इसके लिए यूनियन गवर्नमेंट ने बनाई यूजीसी, और यूजीसी ने प्ले करना स्टार्ट किया स्टैंडर्ड सेटिंग का रोल, ठीक है। इवन इन द अपॉइंटमेंट्स ऑफ यूनिवर्सिटी स्टाफ एंड कॉलेजेस, द मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, जो आपके टीचर्स होते हैं ना, वो कॉलेज अपॉइंट कर रहा होता है, प्रिंसिपल्स अपॉइंट कर रहे होते हैं, लेकिन जो आपका क्लैरिकल स्टाफ होता है ना, एडमिन स्टाफ, वो यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड होता है। पता है ना सब कॉलेजेस में, आप किसी भी एक पर्टिकुलर कॉलेज में हो, आपका कॉलेज एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होगा। जो क्लैरिकल एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है वो यूनिवर्सिटी के थ्रू आता है, वहाँ से उनका अपॉइंटमेंट लेटर होता है। जबकि आपके जो टीचर्स हैं, जो टीचर्स जब तक जब वो यूनिवर्सिटी लेवल पे अप्रूव हो गए, परमानेंट जिसे बोलते हैं ना, आपकी कैजुअल कॉलेजेस में हम बोलते हैं कि ये टीचर परमानेंट है ना, तो जब वो परमानेंट हो जाते हैं तो वो यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड है, उनका सैलरी सब यूनिवर्सिटी से आ रहा है। बट जब वो टीचर्स असिस्टेंस कर रहे हैं, ठीक है, तब वो सिर्फ जब वो एडहॉक टीचर्स हैं, ठीक है, तो वो कॉलेज से लिंक्ड है, सिर्फ आपका अपॉइंटमेंट कॉलेज कर रहा है, ठीक है। तो देयर इज एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो सीधा यूनिवर्सिटी से आता है, और ये सब यूनिवर्सिटी को किसने बताया कि कैसे अपॉइंटमेंट करनी है, क्या स्टैंडर्ड सेट करने हैं। नींद आ रही है, स्लीपी, वाटर, कीप सिपिंग वाटर, ठीक है। स्लीप, हाउ विल यू स्टडी, स्लीप एट नाइट, do not wake up at night. You need to ensure that you have at least 7 to 8 hours of good sleep for the mind to work properly, right? Otherwise what is the point, है ना। मतलब अगर सिलेक्ट हो भी गए तो अच्छा आईएएस कैसे बनोगे, है ना। चलो ठीक। सो यूजीसी सारा स्टैंडर्ड सेटिंग का रोल प्ले करता है अपॉइंटमेंट्स ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस में, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू यूजीसीज रेगुलेशन 2018 की, जो चांसलर है, जो कि यानी कि मोस्टली स्टेट गवर्नमेंट में कहाँ पे होता है, गवर्नर की पोजीशन पे, वो ही अपॉइंट करेगा वाइस चांसलर। चांसलर इज गोइंग टू अपॉइंट वाइस चांसलर, राइट, एंड दिस इज यूजीसी सेइंग। मैंने बोला था ना यूजीसी के रूल्स में है। सो according to the UGC regulations of 2018, the chancellor, who mostly is the governor itself in the states, shall appoint the vice chancellor out of the panel of names recommended by search cum select committee, right? Then higher educational institutions में particularly वो जो UGC से फंडिंग आती है जिनकी, बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर्स भी उनके जो फाउंडर्स होते हैं ना, वही होते हैं। उनकी फंडिंग नहीं आ रही होती यूजीसी से, तो उन पे ना बाइंडिंग नहीं होती यूजीसी की रेगुलेशंस को फॉलो करना। बट जिनकी फंडिंग आ रही है ना यूजीसी से, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट दे फॉलो द मैंडेट ऑफ यूजीसी, राइट, फॉलो द मैंडेट ऑफ द यूजीसी रेगुलेशंस, फाइन। तो यहाँ पे जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो यूजीसी से कनेक्टेड है, कोऑर्डिनेट वो करती है, जिसकी वजह से आप यूजीसी के रेगुलेशंस वायलेट नहीं कर सकते, ठीक है। एंड जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा, उसने ये बोला था, आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन राइट नाउ, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट जहाँ तक कंसर्न है, इट इज़ कॉन्ट्रेरी टू द प्रोविजंस। अगर आप किसी और को शिफ्ट करते हो किसी भी तरीके से, अगर आपके वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट यूजीसी के रेगुलेशन से कॉन्ट्रेरी तरीके से हो रहा है, देन इट इज़ इन वायलेशन ऑफ द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस warranting the UGC's right to legislate. And if you are you are not having the statutory provisions, UGC is having it, backing of a law, statutory provision backing of a law, right? UGC is having backing of a law, and you are hampering not only its work, but you are also trying to do it by yourself. What authority do you have? So which writ it is? It invites, such action invites a writ of quo warranto. By what authority? You do not have the authority to perform such a function. You are doing it illegally, right? So court will issue a writ of
Q warranto. Fine. So this was the observation of Supreme Court, and Supreme Court also said that the rules which UGC has made in 2018, UGC regulations 2018, basically UGC keeps on updating its regulations, which is why the current one are UGC regulations 2018, right? Just let me know, you guys look really tired. Am I too quick? No, just the day is passing by and now the tiresome has started to hit, right? Okay, ठीक है. सो इट इज पार्ट ऑफ यूजीसी. कोई भी स्टैट्यूटरी बैकिंग क्या है? एक लॉ जो पार्लियामेंट ने पास किया, विच इज यूजीसी एक्ट 1956, विच इज वी आर राइटिंग इट. होल्ड ऑन. जब भी कुछ फैक्ट आता है ना, पेन उठ जाता है कि अरे पहले लिख लूँ. नहीं, सुन लो. तो यूजीसी एक्ट 1956 जो था, पार्लियामेंट ने पास किया. अगर यूजीसी अब कोई रेगुलेशंस देता है, चाहे आपके फ्रेश रेगुलेशंस हो 2018 वाले, वो सब पार्ट हो गए उस एक्ट का. दिस इज व्हाट सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग, that this authority was given this power, and to enjoy its power or to perform its function properly, it has to pass some regulations. If you will keep the regulations apart from the act itself, this is not fair. The just way is that whatever this authority is having rules and regulations to perform its functions, which it has to perform because it is binding by the law on it, the functions, the rules which it is making to perform such functions are also part of the law itself. So UGC Act 1956 का ही पार्ट है. जो भी UGC रेगुलेशन देता है वो सब, यानी कि आप एक लॉ वायलेट कर रहे हो. सुप्रीम कोर्ट ये बताने की कोशिश कर रहा है. इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, अगर कुछ किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट आता है, हमें पता है स्टेट और सेंटर के बीच में, तो किसका लेजिस्लेशन प्रिवेल करता है? तो अगर स्टेट लेजिस्लेचर से स्टेट यूनिवर्सिटीज क्रिएट हो रही हैं, स्टेट एक एक्ट पास करता है स्टेट यूनिवर्सिटीज क्रिएट करने के लिए. रिमेंबर मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जिसकी वजह से स्टेट्स ये पावर अपने पास लेना चाहते हैं कि अरे यूनिवर्सिटी हमने बनाई, चांसलर तुम अपॉइंट कर रहे हो, वाइस चांसलर तुम अपॉइंट कर रहे हो. लेकिन सेंटर का भी तो एक लॉ है जो यूजीसी को उसने पावर्स दी हुई हैं, और अब हर एक रेगुलेशन उस लॉ का पार्ट है. तो किसका लॉ प्रिवेल करेगा? सेंटर का लॉ प्रिवेल करेगा. ठीक है. आर्टिकल 254 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. समझ गए क्यों नहीं कर सकते स्टेट्स? क्लियर? ओके, चलो अब लिखेंगे. अब इसी से रिलेटेड मेरा नेक्स्ट करंट अफेयर भी है, तो हम यहाँ तक स्टिक करेंगे, फिर हम इस पे मूव करेंगे. बट आप नोट्स कॉन्टिन्यूएशन में बना सकते हो, क्योंकि जो भी इसमें मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, मैं अवॉइड करूंगी उसमें दोबारा रिपीट करना. ठीक है. ठीक है. सो हमने ये नहीं लिखना है, ये भी नहीं लिखना है, यहाँ से लिखना है हमको. व्हाट इज द रोल ऑफ यूजीसी? ये सबने नोट कर लिया था दैट गवर्नर एक्ट्स एज द चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज. और अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर्स एक बार नोट कर लो. द गवर्नर मेक्स द अपॉइंटमेंट फ्रॉम a panel of 3 names recommended by a selection committee. Governor makes the appointment from a panel of 3 names recommended by a selection committee. चलो. रोल ऑफ यूजीसी. सिर्फ जो हाईलाइटेड फैक्ट है वही लिखूंगी, बाकी सब आपको पता है. ठीक है. सो एजुकेशन कम्स अंडर कॉन्करेंट लिस्ट, बट फर्स्ट पॉइंट, एजुकेशन कम्स अंडर कॉन्करेंट लिस्ट, बट coordination and determination of standards in institutions
for higher education, or research, or research and scientific and technical institutions comes under entry 66, of union list, Next point, UGC plays standard setting role, in appointments in universities and colleges, Now, next point, according to UGC regulations 2018, the chancellor मोस्टली गवर्नर ही होता है, ठीक है, shall appoint the, अब बार बार वाइस चांसलर की जगह आप वीसी लिखते जाओ, ठीक है, shall appoint the VC out of the panel of names recommended by search cum selection committee. Search cum selection committee, full stop. Next point, higher educational institutions, particularly those get funds, UGC funds are mandated to follow its regulations. Fine. Next is key observations made by Supreme Court. Observations सब heading डालो, ठीक है, Supreme Court observations. First point, appointment as a VC contrary to provisions of UGC regulations, UGC क्या होता है भाई, चलो ठीक है, UGC regulations can be said to be in violation of statutory provisions. Warranting a writ
warranting a writ of what writ? वारंटो, है ना? writ of क्यू वारंटो, ब्रैकेट में लिख सकते हो बाय व्हाट अथॉरिटी इफ यू वांट टू राइट, है ना? जब रिवाइज करोगे याद आता रहेगा. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज UGC regulations are part of UGC regulations are part of UGC Act 1956. UGC Act 1956. अब इसमें आपको ये आंसर भी मिल गया कि UGC किस एक्ट की बैकिंग पे काम करता है. ठीक है, एक पंथ दो काज हो गए, सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस लिख रहे हैं पर आंसर्स आपको और भी मिल रहे हैं. ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट. इन केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट, ये सुप्रीम कोर्ट की सारी ऑब्जर्वेशन है. इन केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, बिटवीन स्टेट सेंट्रल legislation comma central legislation will prevail. Central legislation will prevail as per article 254 of the constitution. ठीक, आर दीज क्लियर ऑल ऑफ देम? चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं. वेस्ट बंगाल्स डिसीजन, पहले वो वाइस चांस तमिलनाडु थोड़ा अभी it was going less hard on the moves, but West Bengal seems like it is more brave because Royal Bengal tiger belongs there. Is it the reason? No? Okay, some other reason must be there. Okay, just because you guys are trying to really insist that this is not the reason, I'm agreeing that this is not the reason. So but West Bengal somehow is really brave, and this particular state is saying that we are not going to have governor as the chancellor, we will have CM as the chancellor. But as soon as the Tamil Nadu government got to know about this idea, we have recently seen a lot of coordination, today itself, between Tamil Nadu and West Bengal. Best friends. Some lines may be found in Tamil Nadu also, right? So they are saying that we are best friends, so we have to be in coordination, right? So since the best friend number or the person number one in the best friendship bond, West Bengal, was saying that we will make CM as chancellor, Tamil Nadu came ahead and said, okay fine, let us open a university, new university for alternative medicines, for alternate medical studies, right? And in this university, we are writing it in the act that regardless whatsoever happens in other universities, whosoever is the chancellor, because the governor is, this university's chancellor will be CM. This is what we are writing in the act. So Tamil Nadu is not much behind, just keeping pace with best friends. Kadam se kadam milakar, aisa good bond, right? So West Bengal's decision to make CM as chancellor. This is the news. The news statement is the West Bengal government has decided to make the chief minister the chancellor of state-run universities instead of the governor. Yes, all the state universities. It is the UGC's act. Governor, so it is going on like that only. No, but no one is writing it anywhere which can be broken.
but it is up to UGC. UGC decides, and UGC has decided. UGC is saying the chancellor is governor. Yeah, it is. Yeah. It is in the UGC's hand. It is, of course, now the states are also, arguing that ये प्री इंडिपेंडेंस का क्या तुम हमारे ऊपर थोपे चले जा रहे हो अभी, लेकिन no, it is UGC is saying, UGC's regulations are saying that it is the governor who will be the ex officio chancellor. Fine, the chancellor's position is with the governor as per UGC, and for vice chancellors, UGC is only saying that chancellor, which is the governor mostly, right? Otherwise, in private universities, it can be a founder. There are people who are chancellors of a university, but that is the UGC is not sending them funds. It was not founded by them. Yes, affiliation they have, but they have the okay, they are working according to the UGC courses, but they are having their own autonomous status of a university itself. So that's a whole different case. That's the only exception, right? Otherwise, the chancellor is going to be the governor, right? And it is by statute. जब कोई स्टेट यूनिवर्सिटी बनती है तो हमें लिखा जाता है कि कौन चांसलर है, तो वो बाय स्टैट्यूट गवर्नर का नाम लिखा जाता है. अब तक जो भी स्टेट यूनिवर्सिटीज बनी थी जिनके आप स्टैट्यूट चेंज भी करने की कोशिश कर रहे हो, वहाँ पे गवर्नर था. जस्ट बिकॉज यहाँ पे तमिलनाडु ने चीफ मिनिस्टर का बाय स्टैट्यूट लिख दिया है, नाउ सम बोन ऑफ कंटेंशन विल पॉप अप. नाउ यूजीसी विल से कि अच्छा ये क्या कर दिया. अभी उड़ीसा में आप लोग अपॉइंटमेंट्स कर रहे थे तो हमने कोर्ट के पास लेके गए थे आप लोगों को, है ना. नाउ लेट्स सी हाउ द changes come up. Fine. Yes, again. A lot of rules was determined by the government itself, but UGC is not just a rule making agency, it's also an implementing one. Whatever the rules government will be making, some more guidelines will be provided. At least it will be made sure that the rules are implemented. Which body is checking all of this for government? It's the UGC. So UGC does not become irrelevant. Yeah, it did not. It's still a bill, right? It's still a draft. But even if it happens so, some specifications the bill is giving, right, with regards to higher education, because of which you are saying that some powers of UGC, that is of setting standards, giving guidelines, will be taken away. Okay, fine, some specifications the government will determine now, but UGC has a lot more to do, right? Very powerful agency when it comes to education, higher education. So yeah, in this case we will know what is the role of governors in state universities, because the statement says instead of governor. So let's think that we are blank charts and we don't know what is the role of governor, so we will write. Fine. And then what is the friction between elected regimes and the governor? There is some friction, which is why these elected regimes of CM, actually it is the part asal, it is the matter of dominance, that we are elected and you are selected, dear governor. Fine, governor is selected by the center, CM is elected by the people, right? However, president as a nominal head is elected indirectly, but elected. That's why we are republic. But governor is selected, right? Okay. What were the earlier recommendations in this regard? What happened so far about these things as CM becoming the chancellor or any other sort of contentions, right? We have already covered a lot in this regard only. So whatever will be absolutely necessary, only that I'm going to go on with. So quickly starting with the role of governor itself, we are listening first and writing later. Fine. So the foundation, I already told you that governor was supposed to be ex officio chairman of universities, and the foundation was laid down in the dispatch of Charles Woods, Woods dispatch in 1854 itself, right? And it was described as Magna Carta of English education in India. Fine. The reason was to insulate the universities from political influence.
एक बफर प्रोवाइड कर दिया यूनिवर्सिटीज को कि पॉलिटिक्स में कुछ भी चेंज होता रहे, आपके पास सब कुछ ठीक रहेगा. इट्स अबाउट एजुकेशन आफ्टर ऑल. पर फ्रिक्शन क्या हुआ? फ्रिक्शन ये हुआ स्टार्ट कि वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर हैं उन्होंने एलिजिडली ये बोला कि वाइस चांसलर्स मेरी परमिशन के बिना अपॉइंट कर दिए जा रहे हैं. वेस्ट बंगाल में ये हो रहा था, हमने देखा ना पहले कि वेस्ट बंगाल ये करने की स्टार्ट कर रहा था. महाराष्ट्र का, वेस्ट बंगाल का, उड़ीसा का, हमने सबका डिस्कस किया था ना कि ऑलरेडी कहाँ हो चुका है. तो वेस्ट बंगाल में कुछ वाइस चांसलर्स बिना गवर्नर के पास आए नेम्स अपॉइंट हो रहे हैं यूनिवर्सिटीज में. तो गवर्नर ने ये एलिगेशंस लगाना स्टार्ट किया, उन्होंने ब्लेमिंग स्टार्ट की कि उनको अपॉइंट कर दिया जा रहा है. अच्छा, जब फिर उनको मीटिंग के लिए बुला रहे हैं वाइस चांसलर्स को, चांसलर यूनिवर्सिटी के गवर्नर इन द पोजीशन ऑफ चांसलर, तो वो आ नहीं रहे. दे आर नॉट शोइंग अप. अब आवर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ टुडे वाज रियली फॉन्ड ऑफ मीट एंड ग्रीट्स. He was calling DGP, he was calling chief secretary, he was also calling vice chancellor. And when people were not showing up, तो उनकी शान में उनकी तौहीन थी तो ना ये, हाँ, गुस्ताखी हो रही थी, है ना. which is not fair. He is in a position of a governor or a chancellor, right? Then Tamil Nadu also came up and passed a bill to establish a new university for alternate systems of medicine with CM as its chancellor, right? Then Kerala governor के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस देखने को मिला स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से इन टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर एंड वर्किंग ऑफ यूनिवर्सिटीज इटसेल्फ. तो केरला गवर्नर थोड़े और ज़्यादा प्रोएक्टिव थे, ठीक है. तो वेरी प्रोएक्टिव एंड वेरी गिविंग पर्सन, काइंड हार्टेड गिविंग पर्सन, आरिफ मोहम्मद खान, right? He is the governor of Kerala, right? Very giving, kind-hearted person. He said, Chief Minister, come here. You please sit on the position of Chancellor. I don't want to. Because if you are not giving me the importance, what I'll do as a Chancellor? You're only insulting me. Please take this position. I don't want it. I'm happy being governor, right? So Kerala's governor Arif Mohammed Khan is asking the CM, inviting him to take over the chancellor's position while the other state governments are trying to snatch it. Kerala governor is saying, take it. Someday you will also snatch. No, take it now, being the bigger person, right? In the light of alleged political interference. Why he is doing so? Because there has been a lot of political interference in the functioning of universities. Fine. Which he would not want to see as himself in the position of chancellor, and lot of politicization of universities happening. So he is saying, take it. I don't want it. Fine, because you won't stop otherwise. So just take it, right? So earlier recommendations क्या थी कि इससे पहले सरकारिया कमीशन आ चुकी है, पुंछी कमीशन आ चुकी है, ठीक है. पुंछी कमीशन का हमने थोड़ा सा मेंशन किया था, सरकारिया कमीशन का भी हम while we will be writing, मैं उसका तब पूरा डिक्टेट करवा के आपको, क्योंकि वो फैक्ट बाय फैक्टर रिकमेंडेशन है, उसमें कुछ एक्सप्लेन करने का नहीं, ठीक है. पुंछी कमीशन, फिर उसके बाद हाई कोर्ट का भी वर्डिक्ट है हमारे पास, सुप्रीम कोर्ट का भी वर्डिक्ट है. हाई कोर्ट पंजाब एंड हरियाणा एंड सुप्रीम कोर्ट तो आपका एक ही है, ठीक है. तो हाई कोर्ट एंड पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का, सॉरी, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के हमारे पास वर्डिक्ट्स हैं, वो भी हम लिखेंगे. सो व्हाट ऑल वी विल राइट, व्हाट इज द रोल ऑफ गवर्नर, फ्रिक्शंस we have understood. We will write what were the earlier recommendations in this regard. Fine. This is supposed to be your last topic for today. We are moving towards governor, but right now the contention is in the fields of chancellor, vice chancellor. Tomorrow we'll get very specific about governor, right? Tomorrow is going to be all about governor. So role of governor in state universities. I'll make you write this detail that I've given you already, Woods Dispatch, so you remember कब से ये चल रहा है. The foundation of governor being ex officio chancellor of universities
rather you should write state universities. But वो state अब हुई है, earlier तो it was universities only. Fine. Was laid down in dispatch of, was laid down in dispatch of Charles Wood. Charles Wood, bracket में Wood's dispatch, because that's how it is better known. Yeah, Wood with no S. Charles Wood. So when you write Woods, you can put apostrophe S before S. Wood's dispatch in 1854. In 1854, described as Magna Carta of English education in India. Full stop. Next point. Reason, colon, 2 dots. To insulate universities from political influence. Friction we have understood. I'm quoting again. It's from West Bengal, Tamil Nadu and Kerala. Fine. Recommendations. First of all, we'll look at Sarkaria Commission. So put a subheading recommendations. Underneath write Sarkaria Commission, put a colon, 2 dots. Sarkaria Commission said that we will write, no, this is, I'm just quoting, you can start writing from now. Chancellor is not obliged to seek government's apostrophe S, government's advice. So the Sarkaria Commission was very frank. He said further, however, there is obvious advantage if they do so. क्या है कि अगर हम एडवांटेजेस क्या हैं डिस्कस करने के, कंसल्ट करने के, और डिसएडवांटेजेस क्या हैं इस बारे में सोचना शुरू करें कि कंसल्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इस डिसीजन को लेने के लिए, तो ऑब्वियस एडवांटेजेस हैं कि आपका एक बेटर कोऑर्डिनेशन रहता है, सब लोग कॉन्फिडेंस में रहते हैं एक दूसरे को लेके, ठीक है, अगर आप कंसल्ट करके चलते हैं. फाइन. आफ्टर ऑल दे आर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, लेट देम हैव देयर ड्यू रिस्पेक्ट in a friendly manner, if not constitutionally, statutorily. हर बात impose करना जरूरी नहीं होता है ना, cooperative federalism भी हो सकता है. Fine. Next is your Punchi Commission. So next point, Punchi Commission. Punchi, Punchi Commission, colon, removal of governor from the post of chancellor. So Punchi Commission was like, let the governor not have this position. Earlier also we discussed Punchi Commission was not in favor of governor having this position of chancellor, ex officio position. Fine. If the state is making a law for a state university and voluntarily wants to make their dear governor a chancellor, okay, fine, but this compulsion of ex officio position, this should not be there. This was a recommendation, it has not been implemented, but these are the recommendations. We are doing earlier recommendations in this regard, so you can quote these Sarkaria and Punchi Commission, they are quotable in your answers, right? Now High Court, next point is High Court verdict. You can just write HC and verdict.
then we can write in detail column. Fine. Punjab and Haryana, Punjab and Haryana in in Hardwari Lal, Hardwari Lal versus GD Tapse, GD Tapse held that held that governor governor has an has an independent independent existence and the office and the office held by him held by him is statutory in nature is statutory in nature as distinct from as distinct from constitutional office of governor. सो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ये बोलते हैं कि जो चांसलर की पोजीशन है वो स्टैट्यूटरी है नेचर में, क्योंकि जो स्टेट यूनिवर्सिटीज है वो फॉर्म होती हैं बाय अ स्टेट लेजिस्लेशन, जबकि गवर्नर की पोजीशन कॉन्स्टिट्यूशनल है ना। आपकी जस्ट बिकॉज आप गवर्नर हो इसलिए आपकी पोजीशन कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हो जाती एज अ चांसलर, सो इट्स नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन दैट यू कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ। फिर सुप्रीम कोर्ट आता है, सो एससी वर्डिक्ट, एचसी वर्डिक्ट लिखा था वैसे ही एससी वर्डिक्ट लिख के ये कॉलन प्रेजेंट करो एंड देन वी विल राइट भूरीनाथ भूरीनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ JNK, स्टेट ऑफ JNK एंड उसके आगे एक हाइफन इस तरीके से, ठीक है। when governors are entrusted with powers derived from statutes in official capacity, comma, they are not to act on the aid and advice of council of ministers। तो यहाँ पे COM क्या बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, on the they are not to act on the aid and advice of council of ministers। तो सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि जब आपने एक बार उन्हें पावर दे ही दी स्टैट्यूटरी, वो बाय स्टैट्यूट एक स्टेट यूनिवर्सिटी क्रिएट हुई एंड अब गवर्नर के पास पावर है एज अ चांसलर इंडिपेंडेंटली एक्ट करने की, तो अब क्यों वो बार बार स्टेट यूनिवर्सिटी से परमिशन ले, ठीक है। अगर किसी स्टेट यूनिवर्सिटी ने स्टैट्यूट ही, जरा सोचो अगर स्टैट्यूट में ये लिखा हो कि गवर्नर शैल एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ एज अ चांसलर, इट इज रिटन फॉर द गवर्नर दैट गवर्नर शैल एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ, but for chancellor is it written that it is going to act on the advice of COM? First of all, the position was created to help it insulate from politicization, political influence, right? But what happens, like think about it like that, what happens if some state is writing it in the act that the chancellor shall act on the advice of COM? It can happen, right? Okay, so this was it in today's session. These were the recommendations we were supposed to cover. Any sort of question from this particular topic is welcome, and then we shall be concluding this class. अभी हो रहा है, हाँ। सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, जिसकी वजह से स्टेट्स को प्रॉब्लम है ना।
तो जो हमने ये तो मैं आपको ना ये लिखवाती हूँ, ये वाला भी पॉइंट्स लिख लो आप। ये नीड, एक पॉइंट बनाओ, नीड फॉर सच बिल्स और नीड फॉर सच इनिशिएटिव्स बाय द स्टेट। तो ये आपका पॉइंट कवर हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट, लैक ऑफ कंसल्टेशन, lack of consultation, with the lack of consultation with the states elected government, states elected government। पुंशी कमीशन यही तो कहती थी कि इट्स बाय डिफॉल्ट कि मिनिस्टर्स इंटरेस्टेड होंगे यूनिवर्सिटी की फंक्शनिंग में। वो एजुकेशन एक कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, वाई शुड दे नॉट बी इंटरेस्टेड? तभी तो पुंशी कमीशन कहती थी कि अगर आप चाहते हो मिनिस्टर्स इंटरेस्टेड ना हो, ये नहीं हो सकता। फाइन, दिस इज क्लैशिंग। तो क्योंकि ऐसा है, तो अगर आपको लगता है कि इस वजह से गवर्नर की पोजीशन अंडरमाइन होती है, तो उसको मत बनाओ ना चांसलर, राइट? पुंशी कमीशन वाज ऑफ द व्यू कि मिनिस्टर्स तो इंटरेस्टेड होने ही वाले, यू कांट स्टॉप देम, सो पॉलिटिक्स होने ही वाला है। हाँ, वहां पे भी इलेक्शंस होते हैं और वो पार्टी से कनेक्टेड होता है ऑन द अपर लेवल, हायर लेवल, है ना? Central government wants to control it. True. Now, next point is administrative irregularities will happen. Administrative irregularities. If the position remains vacant, if the position remains vacant, or there is lack of coordination between the office holder and the government. Then the office holder and the state government. Office holder here is VC. You can write VC instead of office holder. Then power clash. Next point, power clash. Punshi Commission recommended that governors should not be vested, by the powers, with the powers that were not vested by the constitution, in their position, since state level politicians or ministers are bound to be interested in the areas of higher education. Very subtle comment on politics, right? Next point, governors work on behalf of center. Fine, you can use behalf to make it easier for you. Governors work on behalf of center in the state. This is also an allegation. That's why the need comes up. Fine. Yeah, so as a way forward, accepting Punchi Commission's recommendations, you want to say that it'll have the state government let it have the say, and because UGC is there, so regulations तो standards तो वो follow करने ही पड़ेंगे उनको, तो तब भी check and balance बना रहेगा। Just गवर्नर को पोजीशन ना देने से या देने से तो चेक एंड बैलेंस रिमूव नहीं हो जाता ना। तो एक पुंशी कमीशन की अगर हम रिकमेंडेशन एक्सेप्ट कर ले तो इट मेक्स सेंस,
बट फिर अगर हम ये रिकमेंडेशन एक्सेप्ट कर ले पुंछी कमीशन की, तो फिर पॉलिटिसाइजेशन हमने ओपन कर दी यूनिवर्सिटीज में। एक चीज के बैकड्रॉप में होना, बिहाइंड द कर्टेन्स होना अलग बात है, एंड ओपनली यू आर अलाउइंग इट, फिर तो वो अनकंट्रोल्ड हो जाएगा ना। That's why it's not happening. So there are so many issues. Yeah, there's a balance, but there is so many things. Way forward should rather be the Sarkaria Commission's recommendation, trust me. They told that please take it, although you are not although it's not binding, but it is advantageous. Come on, take everyone into confidence. Practice cooperative federalism. It's the Sarkaria Commission. I am trying to contradict you when I am telling you that Punchi Commission की recommendation ले भी लोगे तो open politicization हो जाएगा, right? So it's not the way forward. Sarkaria Commission could be one, right? Okay. It's okay. What next? Nothing. Okay. ठीक है. I shall see you again tomorrow. We'll get more specific with the governors. Should I give you a glimpse of the current affairs which are going to come up? Quick one. The tussle between governor and chief minister. This is happening again. Jagdeep Dhankar and our chief minister Mamata Banerjee was in a lot of tussle. Then there was some questions on what are the governor's position with regards to bill. How can it absolutely stop Tamil Nadu's bill and be make it defunct absolutely, right? Then the office of the governor we should discuss, while we are discussing so much about the governor himself, right? And the pleasure of the governor, doctrine of pleasure. Once you know about the office of the governor, there's this doctrine, pleasure of the governor. That's what we are going to cover. Now, the fact of the matter is that you have already covered, in fact, the office of the governor you have already covered well in class, right? This is just going to be a quick revision for you. Treat it like that and do not think it is repetition. Fine? Okay. About governor, yesterday governor was just there by chance because he is also a chancellor, right? Today governor will be in governor's position and we'll see what are the tussles when it comes to governor. Governor is a major link when it comes to federalism between center and state, but does the state see governor as a link between center and state? They see governor's position as of center over them, right? Okay. So there has been tussles if I may, because there is although one tussle which is the news point, but we can go back to so many. We have many examples of tussles between governors and CMs, right? And the recent one is from West Bengal again. It is from the time when our vice president was still governor of West Bengal, Mr. Jagdeep Dhankar. So when West Bengal's chief minister Mamata Banerjee outbursted against the governor Jagdeep Dhankar, that incident gained and brought to forefront the role of governor in relation with the elected government and legislature. There was so much tussle that Twitter was witnessing the war between the two, right? So what we have to discover is how is the governor related to the state, right? Then what are the discretionary powers of the governor, right? Then what are the current tussles between the governor and chief minister, followed by any efforts that may have been taken to solve this tussle game, right? Tug of war game. Then constitutional provisions regarding the governor, right? Although it's sheer politics, but we are going to look at it from UPSC CSE's perspective. Fine. Okay. So my first question is going to be, how is the governor related to the state? How is he related? He is a nominal head of the state, right? Or should I say constitutional head also?
both the phrases are correct? Which one would not be correct? Real head, executive head, which one is not correct? अच्छा, इलेक्टेड हेड नहीं है, सिलेक्टेड हेड है, ऐसा है क्या? ओके, ठीक है। तो प्रेसिडेंट इलेक्टेड है, गवर्नर सिलेक्टेड है ना? सिलेक्ट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। और ये ऑफिस ऑफ गवर्नर एक लिंक रहता है बिटवीन सेंटर, दैट इज यूनियन, एंड स्टेट geographically. It's a link between the governments, governing bodies, right? अच्छा, ठीक है। तो डिस्क्रिशनरी पावर्स क्या रहती हैं गवर्नर के पास? क्या गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर्स प्रेसिडेंट की इक्वल होती हैं, उनसे ज़्यादा होती हैं? व्हाट डू यू गाइस थिंक? ज़्यादा होती हैं, है ना? जैसे कि हाई कोर्ट की रिट जुरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा होती है, राइट? सो ये लिंक हम लेके चलेंगे हमेशा इसी हिंट को कि डिस्क्रिशनरी पावर गवर्नर के पास ज़्यादा है, प्रेसिडेंट के पास कम है। क्यों? क्योंकि गवर्नर के पास सिचुएशनरी और कॉन्स्टिट्यूशनल दोनों तरीके की डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, जबकि प्रेसिडेंट के पास सिर्फ सिचुएशनरी डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में तो वहाँ पे सिर्फ यही उनको दिया होता है कि ही विल बी वर्किंग ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड COM, राइट? तो हर चीज़ के लिए प्रेसिडेंट इज डिपेंडेंट, बट गवर्नर हैज़ अ लॉट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर्स, क्योंकि when he is not liking some aid and advice of COM, he is going to refer it to the president, the central government, है ना? चलो, तो आर्टिकल 163 है, लिखेंगे नहीं अभी, ठीक है? आर्टिकल 163 है, वर्ड बाय वर्ड बोलता है, there shall be a council of ministers with the chief minister at the head to aid and advise the governor, right, in exercise of his functions of governor, except, so discretionary powers का जो जिक्र है वो right in the article 163 ही आ जाता है, except discretion granted by the constitution, यानी कि गवर्नर को constitution भी discretionary powers दे रहा है, which is not there in case of president, right? अगर कोई भी क्वेश्चन अराइज होता है इससे रिलेटेड कि एक मैटर जो है वो गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर्स के अंडर या डिस्क्रिशन के अंडर आता है या नहीं, तो ये फाइनल डिसीजन किसका होता है कि ये मेरी डिस्क्रिशन है या नहीं? गवर्नर का ही डिसीजन होता है। गवर्नर ही खुद से डिसाइड करता है कि ये मेरी डिस्क्रिशन में आएगा या मेरी डिस्क्रिशन में नहीं आएगा, राइट? अब जो डिस्क्रिशनरी पावर्स है गवर्नर की वो डेफिनेटली यहाँ पे वाइडर हो जाती हैं प्रेसिडेंट से, क्योंकि वो बोथ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड सिचुएशनल पावर्स भी, सिचुएशनरी डिस्क्रिशनरी पावर, सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी पावर, वन एंड द सेम थिंग, है ना? अनलाइक प्रेसिडेंट हु एंजॉयज ओनली सिचुएशनरी वंस, ठीक है? कि जस्ट कोई ऐसी सिचुएशन आ गई कि इलेक्टेड लोग आए और किसी की भी मेजॉरिटी नहीं है, discretionary power, but it is situational, right? While the governor is having constitutional ones also. अब constitutional discretionary powers गवर्नर की specifically किस आर्टिकल से आती हैं? आर्टिकल 167 से, आर्टिकल 200 से, आर्टिकल 356 से, है ना? तो एक एक करके आर्टिकल 167 में बोलते हैं कि गवर्नर कैन सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम CM about the state's administrative as well as legislative matters, ठीक है? तो कभी भी CM को बुलाएं अपने पास और पूछ लें उनसे। आर्टिकल 200 कहता है कि गवर्नर कैन रिजर्व अ बिल फॉर द प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन, ठीक है? और आर्टिकल 356 तो स्टेट इमरजेंसी, राइट? तो गवर्नर कैन रिकमेंड द प्रेसिडेंट टू इम्पोज प्रेसिडेंट्स रूल ऑन फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, वर्ड बाय वर्ड ये बोलते हैं ये सब आर्टिकल्स। अब इसका मतलब गवर्नर ना तो बाउंड है ऑन द एडवाइस, एड एंड एडवाइस, ही इज नॉट बाउंड टू एक्ट, ही कैन always go for consideration of the president, he has a way out, right? But can the president do so? Does he also enjoys a way out? No, right? Okay, now while performing the duties as an administrator of a UT, let's say the governor is governor of a state and is additionally given the charge of administrator of a state,
Is he dependent on the aid and advice of Council of Ministers in the state he is governor at to perform the duties as the administrator of the UT? No. So he is performing at his discretion as an administrator while being the governor, right? Just in case there was any confusion with that regard. And then there comes sixth schedule. Sixth schedule में कुछ areas हैं, tribal areas, जिनके पास बहुत ज़्यादा स्पेशल एंड यूनिक प्रोविजंस हैं उनकी गवर्नेंस के लिए, ठीक है. तो वहाँ पे जो गवर्नर होता है, जैसे कि ऑटोनमस ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होती हैं, उनकी फंडिंग्स, ठीक है, उनकी जो रॉयल्टी आती है, उनके जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है, उसके लिए डिस्क्रिशन गवर्नर के पास है, ठीक है. कि जो मिनरल लाइसेंसेस उनको मिलते हैं, वहाँ पे मिनरल माइनिंग करने के लिए जो गवर्नमेंट देती है सिक्स शेड्यूल एरियाज में, जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, सबकी जो पार है, फाइनल से है, वो गवर्नर के पास है, नॉट द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, राइट. तो गवर्नर को ये स्पेशल प्रोविजंस की टेक केयर करने के लिए सिक्स शेड्यूल में सेंटर प्रोविजंस बनाती है. सिक्स शेड्यूल स्टेट्स के लिए ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स आ गए, ठीक है. तो वो गवर्नर के अंडर होते हैं डायरेक्टली. They don't go through the state assembly, autonomous district councils, right, to the governor. They have the direct link with the governor itself. Now, when it comes to situational discretionary power, some of them are also enjoyed by the president. For example, like in hung assembly, right, when the governor can appoint CM when no party has a clear-cut majority, right. At his discretion, he will invite somebody that, okay, you become CM and prove your majority within next 6 months, right. No confidence, at the time of no confidence, governor can dismiss the CM, right, when it cannot prove the confidence in the house, in the legislative assembly, right. Then appointment of caretaker government, in case there is nobody is able to prove majority, even when governor used his discretion, appointed a CM, that CM could not gain the majority support in house. Now the government will appoint a caretaker government until next elections take place. And at whose discretion the caretaker government would be? Who will be the CM? The answers are with the governor, right. And then there are special provisions with respect to states. Article 371, right. All those special provisions like Vidarbha region in Maharashtra, Saurashtra in Gujarat, remember? So Kutch as well, right. So all these special provisions are there with Nagaland, Karnataka, so many, and Andhra Pradesh, sorry. So many states are having these special provisions, right. So governor is taking care of implementation of these provisions under Article 371, right. Okay. So these were the discretionary powers of the governor. Okay, now let's see what are the tussles. हाँ जी. स्टेट बिना गवर्नर के रह सकता है जब, लेट्स से कि एक स्टेट में जब तक गवर्नर, लेट्स से किसी गवर्नर की रिटायरमेंट पॉइंट आ गया, बट जब तक उसका जो नेक्स्ट सक्सेसर है वो ऑफिस अज्यूम नहीं करता, तब तक तो वो ऑफिस में रहते हैं. तो ये कॉन्टिन्यूएशन इंश्योर किया गया है. अगर लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है किसी स्टेट में, तो क्या गवर्नर स्टिल अपनी पोजीशन पे रह सकता है? ये क्वेश्चन है. प्रेसिडेंट रूल लगाए ना, तो गवर्नर ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट रूल्स बना रहा है उस स्टेट के लिए, गवर्नर इम्प्लीमेंटेशन देख रहा है बस. हाँ, तो ये है ना, आंसर तो आपके पास था. ठीक है, ओके. तो करंट टसल्स क्या है? वेस्ट बंगाल में है करंट टसल्स. समनिंग चीफ सेक्रेटरी, यू नो द ड्रिल, राइट. सो ऑलरेडी मैंने बता दिया, वो चीफ सेक्रेटरी को समन करे थे, डीजीपी को समन करे थे, फिर हावड़ा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का बिल रोक लिया था, ठीक है. ये सब प्रॉब्लम्स आ रही थी. फिर सीएम क्या करे थे कि गवर्नर को चांसलर की पोजीशन से हटाओ, हम बनेंगे. ये सब म्यूचुअल जो था टग ऑफ वॉर वो चल रहा था. महाराष्ट्र में गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है. उन्होंने स्टॉल कर दिए थे इलेक्शन ऑफ स्पीकर
and post is vacant since February 2021. ठीक है, तो आप हम सोच रहे थे कि वहां पे स्पीकर क्यों नहीं है पोजीशन पे. रिमेंबर कल मैं डिस्कस करी थी कि चेयर पे एक सर्टेन एमएलए थे, ठीक है, स्पीकर नहीं थे, और एमएलए जाके वहां पे बोलते हैं कि स्पीकर को अथॉरिटी है, वो रिमूव करेंगे, रेजोल्यूशन से क्यों रिमूव कर रहे हो. द आइडिया वॉज सो गुड बिकॉज स्पीकर वॉज नॉट देयर. ठीक है, ओके. नाउ उन्होंने ये, महाराष्ट्र के ही गवर्नर ने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की रिकमेंडेशन एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था. जब नॉमिनेट करना होता है ना एमएलएस को असेंबली में, लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने बताया कि गवर्नर साहब इनको, इन 12 मेंबर्स को नॉमिनेट कर दो. तो उन्होंने कहा नहीं, जिनको आप बोल रहे हो उनको मैं नॉमिनेट नहीं करूंगा. और फिर ये जो केस था, ये जो झगड़ा था, वो हाई कोर्ट पहुंच गया. ठीक है, ये अब तमिलनाडु का आपको पता है कि उन्होंने तमिलनाडु में जो नीट एंट्रेंस वाला मेडिकल अंडर ग्रेजुएट्स के लिए उन्होंने रिजर्वेशन लाने की कोशिश की, उस पर आर एन रवि ने एक्ट नहीं किया. ठीक है, वो इंडेफिनिटली स्टॉल्ड है बिल. ठीक है, तो ये सब कुछ रीसेंट वंस हैं. इससे पहले आपने दिल्ली में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं. ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ. अब बात ये है कि वो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, ठीक है, तो वो फेडरल इशू कैसे होता है. तो जहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर हो या गवर्नर हो बट एक सीएम भी हो, दैट बिकम्स फेडरल, राइट. ओके, अब कौन से एफर्ट्स अब तक लिए गए इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए, या अब तक क्या सजेशंस आए हैं. सो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ARC 1968 के बारे में देखेंगे. ठीक है, उन्होंने प्रेसिडेंट रूल्स के बारे में क्या कहा है. राजमन्नार कमेटी थी 1971 की, उन्होंने रोल ऑफ गवर्नर के बारे में कुछ बोला था, उसको भी लिखेंगे. ठीक है, आई विल गो थ्रू इट व्हाइल आई विल बी डिक्टेटिंग इट. देन सरकारिया कमीशन ने भी रिकमेंडेशंस दी हैं 1983 में रिगार्डिंग हंग असेंबली एंड रोल ऑफ गवर्नर एंड मच मोर. सरकारिया कमीशन को और डिटेल से करेंगे बिकॉज उन्होंने अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर से लेके डिसमिसल ऑफ COM तक, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तक बहुत सारी बातें कही हैं. देन एक SR बोमई जजमेंट था 1994 का, वहाँ से भी प्रेसिडेंट रूल के बारे में वर्डिक्ट आता है. पुंशी कमीशन के बारे में हमने पहले भी बात की थी, उन्होंने भी, पुंशी कमीशन 2007 से है, उन्होंने भी गवर्नर के बारे में काफ़ी सारी बातें की हैं. फिर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो हमें कवर करने होंगे वो है आर्टिकल 153, दैट इज द पोजिशन ऑफ द गवर्नर इटसेल्फ, प्रेजेंस ऑफ द गवर्नर इटसेल्फ, वहाँ से आता है. आर्टिकल 153 बस इतना बोलता है कि देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट. ठीक है, बस यहाँ से वो प्रेजेंस इंश्योर कर लेते हैं गवर्नर की. देन आर्टिकल 154 में एग्जीक्यूटिव पावर्स के बारे में बात होती है. आर्टिकल 155 में अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर के बारे में बात होती है. एंड आर्टिकल 156 में टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर के बारे में बात होती है. देन आर्टिकल 157 क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, 158, 159, 158 में कंडीशंस ऑफ ऑफिस, 159 में ओथ. तो हम पूरा कवर कर लेंगे जो आपने ऑलरेडी कवर किया हुआ है अपने क्लासरूम में. ठीक है, हम एक क्विक रिवीजन ले लेंगे, मैं पूरा डिक्टेट करूंगी, अगर आप चाहें आप नोट कर लेना, अगर आपको लगता है कि ये आपका रेपिटेशन ऑफ एफर्ट हो जाएगा तो आप नोट मत करना, बस सुनते रहना. ठीक है, ठीक है, स्टार्ट करें. ओके, the ARC from 1968 was very specific about president's rule and role of governor. So that's what I'm going to cover, right? First of all, how is the governor related to state? So we will write nominal head, constitutional head, nominal head, comma, constitutional head. Then second point, president elected, governor selected by central government. President elected, governor selected by central government. Then third point will be governor is link between union and state government. Governor is link between union and state government.
Your next subheading is to be discretionary powers of governor. Article 163. Article 163. There shall be a council of ministers. When you are writing council of ministers, you can prefer writing it like this. With the chief minister, you can write CM. At the head, to aid and advise, the governor in the exercise of his functions, except except the discretion granted by the Constitution, We will continue the same point, but we'll change the line and we will write, if any question arises whether a matter is within the governor's discretion or not, comma, the governor's decision shall be final. We will change the line again and we will write discretionary powers of governor are wider than that of president, as he enjoys both constitutional and situational discretionary power, unlike the president who enjoys only situationary discretion. Situationary discretion. चलो, अब हम सब हेडिंग डालेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर्स. First point, Article 167. Governor can seek information from CM
about about state administrative and legislative matters and legislative matters. Next point, Article 200. Article 200. The governor can reserve a bill for president's consideration. For president's consideration. Then Article 356 is your next point. This is also under the discretion of governor. So we will write the governor can recommend the president to impose impose president's rule on failure of constitutional machinery. So अगर COM अपने स्टेट में मेजॉरिटी इंजॉय कर रही है लेजिस्लेटिव असेंबली में, गवर्नर फिर भी प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज करने की रिकमेंडेशन दे सकता है. लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो सकता है, कुछ भी इशू हो सकता है. कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेकडाउन हुई तो गवर्नर एक रिपोर्ट भेज सकता है कि मेरी रिकमेंडेशन ये है फॉर द फॉलोइंग रीजंस. रिपोर्ट में सब अच्छे से उसने डिस्क्राइब किया रहता है कि आप प्रेसिडेंट्स रूल लगा दो यहाँ पे, है ना. सो वी विल चेंज द लाइन एंड राइट note, 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 then colon, 2 dots. The governor is not bound to act on the aid and advise of CM and COM, of Chief Minister and Council of Ministers while performing his duties as the administrator of neighboring union territory. You can also write UT. In case of additional charge. Next point is sixth schedule. The governor may determine the amount payable to an pay plus able payable to an autonomous
tribal district council, tribal district council as royalty, as royalty from mineral from mineral exploration licenses. Exploration licenses by the governments of 6th schedule areas, by the governments of 6th schedule areas. If you want to exemplify it for yourself, you can write in the bracket Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. Fine? Okay. Situational discretionary power is going to be our next subheading under the question, what are the discretionary powers of governor? Situational discretionary power. Situational discretionary power. First point, during hung assembly, governor can appoint CM when no party has a clear-cut majority, Second point is no confidence. Governor can dismiss the Council of Minister COM when it cannot prove the confidence of the state legislative assembly, comma, the governor can dissolve the state legislative assembly. The governor can dissolve the state legislative assembly when the Council of Ministers lose their majority. When the COM lose their majority. What is the next point? Appointment of caretaker government. Appointment of caretaker government. So the governor can appoint the caretaker government for a temporary period until a regular government is elected or formed. Next point is special provisions with respect to states. with respect to कैसे लिखेंगे? WRT. ठीक है, शॉर्ट में लिखो. Special provisions with respect to states. The president may provide special responsibility for the governor to form separate development boards for Vidarbha
मराठवाड़ा, मराठवाड़ा, MARATHWADA, मराठवाड़ा, कॉमा सौराष्ट्र, SAURASHTRA, सौराष्ट्र, and Kutch, as per Article 371, as per Article 371. 3 questions we have completed. This one you don't have to write, so you take a break. Should I come again with the examples, or we have done it? We have done it, right? Okay. Now, efforts. Has there been any efforts to solve the tussle? Efforts to solve. अब क्योंकि हम टसल्स नहीं लिख रहे हैं तो आप efforts to solve tussles पूरा लिख लो सब हेडिंग में. Efforts to solve tussles. 3 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए. हमने डिस्क्रिशनरी पास कवर कर ली, ठीक है. गवर्नर का स्टेट से रिलेशन कवर कर लिया. देन हमने टसल्स के एग्जांपल्स नहीं लिखने हैं, हम अब बात करेंगे जो एफर्ट्स हो रहे हैं टसल के सॉल्व करने के लिए. तो फर्स्ट हम लिखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन. ये वाला थोड़ा न्यू मटेरियल है अदर देन व्हाट यू मे हैव ऑलरेडी कवर्ड इन टर्म्स ऑफ योर गवर्नर्स टॉपिक फॉर द स्टैटिक पोर्शन अंडर पॉलिटी. ठीक है, जो भी मैंने पहले लिखवाया हो सकता है आपने ऑलरेडी कवर कर रखा हो, जो अब लिखवाऊंगी वो बिल्कुल न्यू है. ठीक है. So the Administrative Reforms Commission 1968. The Administrative Reforms Commission 1968. इसको अंडरलाइन करेंगे. इसके नीचे एक सब पॉइंट बनाएंगे, प्रेसिडेंट्स रूल. प्रेसिडेंट्स रूल. It recommended that the report of the governor regarding the president's rule has to be objective and also governor should exercise his own judgment in this regard. तो हमें प्रेसिडेंट्स रूल के बारे में जो गवर्नर का रोल है उसके लिए एआरसी कहती है कि आपको ज़रूर अपनी जजमेंट यानी कि अपनी डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करनी चाहिए और आपको एक ऑब्जेक्टिव रिपोर्ट प्रेजेंट करनी चाहिए जब आप प्रेसिडेंट्स रूल रिकमेंड कर रहे हो. ऑब्जेक्टिव मतलब यहाँ पे आप उनको ये बोल रहे हो कि ऑब्जेक्टिव भी रहो, आप उनको ये भी बोल रहे हो कि जजमेंट भी यूज़ करो, यानी कि सब्जेक्टिविटी भी हो जाती है. सो आप क्या अलाउ कर रहे हो, डिस्क्रिशन अलाउ कर रहे हो along with facts, along with the reasons of certain judgment. मतलब ARC कह रही है कि okay fine, make the judgments you want to, use your discretion, but please present objective reasons in your report, right? What led you to come to a certain judgment should be very clear and it should not be merely political, right? Okay, then there is next underline करेंगे राजमन्नार कमेटी 1971. राजमन्नार कमेटी. राजमन्नार कमेटी 1971. इसके नीचे सब पॉइंट बनाएंगे, रोल ऑफ गवर्नर कॉलन, रोल ऑफ गवर्नर कॉलन. The Rajmannar Committee stressed the governor
of the state of the state should not consider himself as an himself as an agent of the center but play his role as the constitutional head of the state यानी कि अपने आप को अज्यूम किया जा रहा है एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंटर बिकॉज आपका जो इंक्लिनेशन है वो विजिबली टुवर्ड द सेंटर दिखता है. अगर आप एक ऑब्जेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की तरह परफॉर्म करेंगे उस तरीके का रोल आपका होना चाहिए. वॉज रिकमेंडेड बाय राजमन्नार कमेटी. अच्छा, अब ये बताओ कि राजमन्नार कमेटी ने कुछ नया तो नहीं कहा. गवर्नर तो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है ना, और उसे सेंटर भेजती है. तो राजमन्नार कमेटी की इस रिकमेंडेशन देने से मैसेज क्या पहुंचता है? हाँ, correct. So see, everyone knows that there is a learned person sitting on the position, and just having a nudge given to that learned person is enough of a message that something is written already and you are not being obliged with it, right? Okay, next is Sarkaria Commission Recommendations 1983. अंडरलाइन कर लेना, सरकारिया कमीशन रिकमेंडेशंस 1983. इसमें कुछ पॉइंट्स मल्टीपल रहेंगे. तो फर्स्ट पॉइंट है हंग असेंबली कॉलन. इट प्रोवाइडेड द ऑर्डर of preference. The governor should follow in selecting a CM in such a situation. What situation? CM in such a situation. हंग असेंबली उसी के अंडर लिख रहे हो ना. नितान भैया पानी रिफिल करवा दो. नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट, प्रेफरेंसेस दिए ना, प्रायोरिटी लिस्ट दी है ना. तो फर्स्ट पॉइंट है an alliance of parties that was formed prior to the elections. Number two, the single largest party staking a claim to form the government with the support of others including independents. Next, third preference, a post कैसे लिखोगे पोस्ट इलेक्टोरल? पोस्ट इलेक्टोरल alliance of parties with some
of the parties in alliance forming a government and the remaining parties including independents supporting the government from outside. क्या समझ में आया भाई? यानी कि एक हंग असेंबली की सिचुएशन है. इट इज गिवन कि कोई भी एक पार्टी या एक अलायंस जो है वो सब एक पार्टी पूरा मेजॉरिटी सपोर्ट में नहीं आया है, तो आप पहली प्रेफरेंस दो ऐसे प्री पोल अलायंस को जो किसी पार्टी ने किसी के साथ किया हो. अगर उससे आपको कोई गवर्नमेंट फॉर्म करने का मौका मिल रहा है, मेजॉरिटी बन रही है हाउस में, तो उसको प्रेफरेंस दो. अगर वो भी ना हो, वो भी केस रूल आउट हो जाए, तो एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, फिर चाहे वो कोई सी भी हो जिसकी मेजॉरिटी नहीं है, लेट्स से सिर्फ 50 ही उसके एमएलएज हैं, ठीक है, 50 एमएलएज हैं, बट लेकिन वो क्लेम कर रही है कि हमें गवर्नमेंट फॉर्म कर लेने दो, हम सपोर्ट मोबिलाइज कर लेंगे, ठीक है, इंक्लूडिंग सपोर्ट ऑफ इंडिपेंडेंस. बस गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए जितने लोगों का सपोर्ट चाहिए, जिन लोगों को कॉन्फिडेंस चाहिए, हम प्रेजेंट कर देंगे. फिर ऐसी पार्टी को नेक्स्ट मौका देना चाहिए. अब तब भी ना हो कुछ, तो फिर एक वैसे पोस्ट पोल अलायंसेस ज़्यादा सपोर्ट नहीं की जाती हैं. इलेक्शंस जब वोटर्स जो होते हैं ना, वोटर्स ही पोस्ट पोल अलायंसेस को कंडेम करते हैं, बिकॉज उस पोलिंग से पहले उन्होंने एक सर्टेन पार्टी को इसीलिए वोट नहीं किया था, बिकॉज दे डिड नॉट लाइक इट. इफ नाउ यू आर गोइंग टू फॉर्म अ गवर्नमेंट विद दैट पार्टी, with the support of that party, right, then the voter is not going to like it. This is why also ये आइडियोलॉजी हमारी विचारधारा मैच नहीं करती है कि एक्सक्यूजेस देते हुए नहीं, पार्टीज भी एक दूसरे को कंडेम करती है, पोस्ट पोल अलायंसेस कंडेम की जाती हैं. बट थर्ड प्रेफरेंस में सरकारिया कमीशन गवर्नर को सजेस्ट करती है कि अगर हंग असेंबली हो गई है, एक पोस्ट पोल अलायंस बनने दो पार्टीज की, यानी कि इलेक्शंस कंडक्ट होने के बाद के अलायंस बनने दो, जिसमें कुछ पार्टीज अलायंस फॉर्म करके एक गवर्नमेंट बना ले, और जो रिमेनिंग पार्टीज हों अगर पोस्ट पोल में, तो वो बाहर से, यानी कि गवर्नमेंट में कोई एग्जीक्यूटिव ऑफिस, लेजिस्लेटिव ऑफिस तो सब होल्ड कर रहे हैं एमएलएस का, ठीक है, कोई एग्जीक्यूटिव ऑफिस होल्ड ना करते हुए बाहर से गवर्नमेंट को सपोर्ट शो करें, ठीक है. ये आपका थर्ड रिजॉर्ट हो सकता है. अब सरकारिया कमीशन के अंडर ही नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये तो हम हंग असेंबली के अंडर लिख रहे थे ना सब, तो नेक्स्ट पॉइंट है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर. अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, सीएम शुड बी consulted in the governor's appointment. Sarkaria Commission says that chief minister of a state should be consulted in governor's appointment. Next is dismissal of COM. Next point is dismissal of COM. Colon, the governor cannot dismiss the COM, the Council of Ministers, when it commands a majority. तो सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशन है कि गवर्नर बिल्कुल भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को डिसमिस ना करे जब तक उनकी हाउस में मेजॉरिटी है. हालांकि हमने अभी डिस्कस किया था, मैंने आपसे पहले ये पॉइंट हाईलाइट किया था कि क्या गवर्नर तब भी प्रेसिडेंट्स रूल के लिए रिपोर्ट दे सकता है. अच्छा, जब प्रेसिडेंट्स रूल लगता है तो इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं, सीओएम सस्पेंड होता है ना. तो हालांकि गवर्नर ऐसा कर सकता है इवन इफ मेजॉरिटी इज देयर, बट सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशन ऐसी है कि ऐसा ना किया जाए, ठीक है. नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट रिकमेंडेशंस पे आएंगे, बेसिकली एक जजमेंट पे आएंगे, एसआर बोमई जजमेंट 1994.
इसको अंडरलाइन करेंगे, SR बोमई, जजमेंट 1994, अंडरलाइन करके नेक्स्ट पॉइंट बनाएंगे प्रेसिडेंट्स रूल कॉलन, प्रेसिडेंट्स रूल कॉलन, the Supreme Court, you can write SC, classified the instances of failure of constitutional machinery into four heads. मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन हो रहा है, फेलियर हो रहा है, तो किस किस तरीके से हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एसआर बोमे जजमेंट में आपको 4 कैटेगरीज में डिवाइड करके बताया, ठीक है। तो आप एक हाइफन डालेंगे 4 हेड्स लिखने के बाद, एंड नीचे आप एक बुलेट पॉइंट बना के लिखेंगे पॉलिटिकल क्राइसिस, या नंबर 1 भी लिख सकते हैं, पॉलिटिकल क्राइसिस। देन नंबर 2 इज इंटरनल सबवर्जन, इंटरनल subversion disturbance, right? Then third is physical breakdown, then fourth is non compliance with constitutional directions, ब्रैकेट में लिखेंगे ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव, यानी कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बात को उन्होंने डिस्टर्ब किया है, वायलेट किया है तो, या फिर यूनियन गवर्नमेंट, क्योंकि उनकी लेजिस्लेशंस, उनके डायरेक्शंस, दे आर गोइंग टू प्रिवेल ओवर द एग्जीक्यूटिव डिसीजंस ऑफ द स्टेट। लेट्स से कोई इंटरनेशनल ट्रीटी हमें करनी थी, है ना, इम्प्लीमेंट, बट वो नहीं हो पा रही क्योंकि एक स्टेट जो है वो बहुत नोटोरियस हो रहा है। तो यहाँ पे भी इस केस में भी अगर बहुत ज़्यादा नोटोरियस एक्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं तो गवर्नर डेफिनेटली रिकमेंडेशंस दे सकता है। अब ये एसआर बोमई जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं, तो हमने सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशंस करी, बट हमें दिख रहा है कि उसके बाद एक आता है केस जिसमें सुप्रीम कोर्ट बता रहा है कि नहीं, even though it is elected, there are many reasons for which it can be, taken away or can be considered as failure of constitutional machinery. Fine. So we will change, yes, disturbances, internal disturbances like communal riots, right, like terror attacks, anything. Now next line में हम लिखेंगे इसी पॉइंट को कंटिन्यू करते हुए, the verdict allows Supreme Court to investigate claims of malafide, malafide investigate claims of malafide grounds in governor's report, मतलब ये वेरीफाई किया जा सकता है कि जो गवर्नर ने क्लेम्स किए हैं अपनी रिपोर्ट में वो कहीं गड़बड़ तो नहीं है, पॉलिटिकल एजेंडा से इंस्पायर्ड तो नहीं है, मैलिफाइड तो नहीं है, ठीक है। मैलिफाइड मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, माल प्रैक्टिस ना यूज की गई हो क्लेम करते वक्त। नाउ नेक्स्ट वन इज पुंशी कमीशन रिकमेंडेशंस, सो वी आर गोइंग टू अंडरलाइन दिस ऑल्सो।
पुंशी, पंछी, जो भी आप कहना चाहो. हाँ, पुंशी कमीशंस रिकमेंडेशंस 2007. So we will write underneath the PC, or you can write the whole thing, Punchi Commission. On center state relations said that the governor should invite the leader of inverted commas a pre-poll alliance commanding largest number inverted comma close, or the inverted commas largest single party inverted commas close, largest single party to form government in case no party or pre-poll coalition has a clear majority. यानी कि सरकारिया कमीशन से इत्तेफाक रखते हैं. They agree to the recommendation commission over here, right? Okay. Pre-poll coalition has a clear-cut majority. Fine. तो एफर्ट्स पता चल गए, रिकमेंडेशंस, एफर्ट्स, क्या क्या अब तक किया गया कि ये जो टसल है वो सॉल्व हो जाए किसी तरीके से. पर क्या कोई चाहेगा ये टसल सॉल्व हो? नहीं. क्यों? पॉलिटिकल गेन्स, राइट? पॉलिटिकल गेन्स आर देयर. ठीक है. और पता है कुछ लूप होल्स बने रहने चाहिए ताकि जब रियल प्रॉब्लम आए तो उन लूप होल्स को एक्टिवेट करके उन रियल प्रॉब्लम से थोड़ा सा जो कमर्शियल मीडिया है उसको और भी मसाला मिल जाता है, रियल प्रॉब्लम्स के बारे में बात ना करनी पड़े, है ना. चलो ठीक है. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग गवर्नर. अगेन ये फिर से वही मटेरियल होने वाला है जो शायद आपने कवर किया हुआ है. आई एम स्टिल गोइंग टू डिक्टेट इट जस्ट इन केस यू वांट टू राइट. ठीक है. जैसे पीपल अलायंस नहीं रजिस्टर होती है, पार्टीज रजिस्टर होती है. अब ये एनडीए और यूपीए जो अपनी अलायंसेस बना रखी हैं, सर्टेन पार्टीज उसमें आती जाती रहती हैं, बट एक लीडिंग पार्टी है जिसने अपनी अलायंस का नाम एनडीए रख लिया है, एक लीडिंग पार्टी है जिसने अपनी अलायंस का नाम यूपीए रख लिया है. ठीक है. अब वो एनडीए से कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग चले जाते हैं. शिवसेना एनडीए में थी? नहीं है. अकाली दल एनडीए में था? नहीं है. बट एनडीए एग्जिस्ट कर रही है. तो अगर रजिस्टर्ड होती तो बात बात पे वो अलायंस की फॉर्मेशन ही चेंज करवाते रहते इलेक्शन कमीशन के पास, राइट? चलो, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग द गवर्नर. सो आर्टिकल 153 इज वेयर वी बिगिन विद द गवर्नर. सब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है वो सब शॉर्ट में हम लिखते जाएंगे. ठीक है. आर्टिकल 153 के आप ब्रैकेट्स में लिख सकते हो प्रेजेंस ऑफ गवर्नर. वो इंश्योर करता है कि देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ गवर्नर. एंड आर्टिकल वर्ड बाय वर्ड कहता है, ऐसा करते हैं जो शॉर्ट में वो कहता है वो मैं लिखवाती जाती हूँ, जो वर्ड बाय वर्ड कहता है वो मैं बताती जाती हूँ, है ना. तो शॉर्ट में ही हम लिखेंगे प्रेजेंस ऑफ गवर्नर इंश्योर करता है 153. वर्ड बाय वर्ड कहता है देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट. ठीक है. आर्टिकल 154 ये आपके को इन्फॉर्मेशन देता है एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में. तो यहाँ पे आप लिख दो एग्जीक्यूटिव पावर. वर्ड बाय वर्ड आर्टिकल कहता है द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शैल बी वेस्टेड इन द गवर्नर एंड शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय हिम आइदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट टू हिम इन अकॉर्डेंस with the constitution. Fine.
Then Article 155 is about appointment of the governor. Appointment of the governor. The governor of a state shall be appointed by the president by warrant under his hand and seal. Fine, these are the words. लिखना तो नहीं है किसी को? I'll be slow. अगर कोई लिख रहा है तो बताओ, नहीं लिख रहे हो ना? ठीक है, सिर्फ वही लिखो जो बता रही हूँ. 156 में लिखो टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर. Term of office of governor. The text of article is, the governor shall hold office during the pleasure of the COM, president. A governor shall hold office for a term of 5 years from the date on which he enters upon his office. Right? This is the text of 156. Then Article 157, qualifications for appointment. Yes. रीअपॉइंटमेंट हो सकती है, ठीक है. अच्छा, 1-2 दिन 5 साल से ऊपर इसीलिए भी हो जाते हैं क्योंकि जो उसका नेक्स्ट सक्सेसर होता है वो भी ऑफिस अज्यूम नहीं किया होता, तो जब तक ऑफिस अज्यूम नहीं करता तब तक भी गवर्नर अपनी पोजीशन पे रहता है. यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझे याद आता है स्पीकर के बारे में. स्पीकर, जब हमारी लोकसभा की जो जनरल इलेक्शंस होते हैं, मतलब एक टाइम होता है जहाँ पे एक्सपायरी डेट आ जाती है एक पार्टी की, एक गवर्नमेंट फॉर्म की हुई की, ठीक है. फिर उसके बाद इलेक्शंस होते हैं, नई गवर्नमेंट फॉर्म होती है. तो यहाँ पे जो स्पीकर है, तो यहाँ पे मुझे कहना चाहिए कि लोकसभा डिसॉल्व हो गई. अच्छा, लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाती है ना. चलो, अब लोकसभा तो एक हाउस है भाई, वो रहेगा, ठीक है. लोकसभा की जगह कोई नया हाउस तो नहीं आ जाएगा. तो यहाँ पे एक ऑफिस है स्पीकर का. उसके साथ क्या होता है, जब तक नया स्पीकर नहीं आता तब तक वो स्पीकर, ऑल्दो ही केम इलेक्टेड and then assume the role of the speaker, nobody else who came elected anymore enjoys the provisions or special rights of an MP unless he is elected again. But speaker remains a speaker until and unless his successor assumes the office. Right? So this is the case कि 5 साल के beyond भी वो बेचारा स्पीकर काम करता रह सकता है. ठीक है, चलो. गवर्नर नहीं दे रहे थे. कि स्पीकर के बिना, लाइक आपको स्पीकर इलेक्ट करना है विद इन सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम. हाँ, वहाँ पे इलेक्ट हुए थे स्पीकर, फिर वो नहीं रहे स्पीकर वहाँ पे. अभी वो स्पीकर की इलेक्शंस नहीं होने दे रहे हैं. तो जब स्पीकर की एक एब्सेंस होती है तो उसका प्रोविजन क्या होता है कि एक डेप्यूटी स्पीकर होगा. जब डेप्यूटी स्पीकर भी नहीं होता है तो हाउस से एक इंसान को इलेक्ट करके स्पीकर की पोजीशन पे फॉर द टाइम बीइंग बिठा देते हैं. तो वही हो रहा है वहाँ. ऐसा नहीं है कि कोई मीटिंग्स या हाउस की जो प्रोसीडिंग्स है वो कोई कंडक्ट नहीं कर रहा है चेयर पे बैठ के, बट वो पोजीशन स्पीकर की होल्ड नहीं कर रहा पर्सन. हाँ, हाँ, एक्चुअली नहीं, वो प्रोटम स्पीकर नहीं होगा वो, क्योंकि वो सब प्रोसीडिंग्स, इनफैक्ट जो रेजोल्यूशंस भी हैं वो भी पास करवा रहे हैं. और जब प्रोटम स्पीकर के तो ड्यूटी तब खत्म हो जाती है जब एक स्पीकर इलेक्ट हो जाता है. राइट? ठीक है, बट क्या वो प्रोटम स्पीकर का काम कर सकते हैं जब आपका स्पीकर इलेक्ट होगा? तो उसके लिए लाइक आई वाज अज्यूमिंग कि आप वो पूछ रहे हो. तो वो ऑफ कोर्स वो जब नया स्पीकर आएगा तो उसको ऑफिस अज्यूम करवाएंगे. ठीक है, चलो. एक बार पानी पी ली थी. ओके, 156 टर्म्स ऑफ ऑफिस कर लिया था हमने ये. 157 क्वालिफिकेशंस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर. क्वालिफिकेशंस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर. नेक्स्ट, अच्छा इसका टेक्स्ट है, गवर्नर की क्वालिफिकेशंस क्या है? मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया and has completed age of 35 years. ठीक है. Then article 158, conditions of governor's office.
Conditions of governor's office. The governor shall not hold any office of profit and shall not be member of either house of the parliament or house of state legislature. ठीक है, इस तरीके के पर्सन को आप गवर्नर अपॉइंट करते हैं. 159th is oath. 159th is oath. Every governor and every person discharging the functions of governor shall, before entering upon his office, take a oath in presence of Chief Justice of High Court or in the absence the senior most judge of the court available. Fine. अच्छा, किस किस को लगा था कि प्रेसिडेंट ओथ दिलवाते होंगे गवर्नर को? किसी को नहीं लग रहा था. मुझे पता ही था तुम लोग सुपर इंटेलिजेंट हो. अच्छा, ओके, ठीक है. नेक्स्ट आर्टिकल है 161 जो बताता है, ये आप लिख लो, पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट pardons and to suspend remit or commute sentences in certain cases. ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं गवर्नर से रिलेटेड. 161 थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, इसीलिए लिखवा दिया. ठीक है, पावर टू ग्रांट पार्डन में भी काम चल जाता. ठीक है, ओके. बट क्योंकि आपने ये लिखा है तो आपको ये अलग से याद रहेगा. दिस इज हाउ ब्रेन वर्क्स ना, कि कुछ भी डिफरेंट हो जाए तो वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट जरूर थोड़े टाइम तक दिमाग में रह जाता है. चलो, ओके, फाइन. दिस टॉपिक, इसमें से अब पूछो. कोशिश क्या करो कि अभी पूछा करो, क्योंकि मेरा फ्लो जो है ना वो ब्रेक हो जाता है. मैं पूरा याद करके आई होती हूँ तुम लोगों के लिए, और फिर मैं भूल जाऊंगी बीच में, फिर क्या होगा, है ना. रट के आई होती हूँ मैं. है ना. अब माना तुम लोग हो सुपर इंटेलिजेंट, सब नहीं होते, अभी क्या कर सकते हैं, है ना. चलो, ये इसमें से कोई डाउट्स हैं तो बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं. स्लो चल रही हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम? टाइम है तुम सबके पास? मुझे 5 टॉपिक कवर करना है. ठीक है, एक हुआ है टाइम. पढ़ने ही आए हो ना, आराम से पढ़ूं? अच्छा, ठीक है. और किसी की कोई ऑक्यूपेंसी नहीं है ना? नहीं है ना. ठीक है, चलो मूव करते हैं. The governor's options regarding bills. The governor's option regarding bills. तो हुआ क्या था? हुआ ये था कि गवर्नर ने giving assent to a bill passed by legislature is a normal constitutional act performed by the governor. But of late हो क्या रहा है? They have become a source of confrontation between state government and governors. अब इस तरीके के हमें चीजें देखने को मिल रही हैं तमिलनाडु में, वेस्ट बंगाल में हावड़ा म्यूनिसिपल काउंसिल वाले केस में, तमिलनाडु में रिजर्वेशन वाले केस में. तो देयर आर मल्टीपल एग्जांपल्स, which is why we are discussing this particular topic. What all we are going to discover, what is the position of the governor in constitutional setup of India. By the way, you have already covered this. So पिछला टॉपिक में बहुत सारा टाइम देने का एक बेनिफिट जो आपको अगले टॉपिक में होने वाला है कि आपको बहुत सारा कुछ अब नहीं लिखना है वापस. ठीक है, बट हम बात करते हुए चलेंगे. देन व्हाट आर द ऑप्शंस बिफोर द गवर्नर विद रिस्पेक्ट टू बिल. अब ये आपको लिखना पड़ेगा, ये नया है. हाँ भाई, तुम हो इंटेलिजेंट, पर मैं याद करके आई हूँ ना, मैं भूल जाऊंगी. हाँ. देन व्हाट इज द करंट इशू. व्हाट इज द करंट इशू. एग्जाम्पल्स भी आपको पता है, इससे भी हम बहुत जल्दी गो थ्रू हो जाएंगे. रिपीट हो के याद हो गए होंगे अब तक तो आप लोग को. और अगर तीन दिन से करंट अफेयर की क्लास चल रही है, अगर 3 दिन और ना याद रहे ना तो फिर मुश्किल है. ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल्स अभी दे रही हूँ ना, वो कम से कम 3 दिन और याद रहने चाहिए, जब नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो जाएगा तब भी. फाइन. देन व्हाई इज द प्रोसेस अनडेमोक्रेटिक.
अगर ये होता है कि गवर्नर बिल्स रोकता है, एक्ट नहीं पास होने देता है, उसको एक्ट में कन्वर्ट नहीं होने देता है, तो ये अनडेमोक्रेटिक प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, वो सारी कॉन्स्टिट्यूशनल फिलोसफी आपको पता है, ठीक है, वो भी हम वर्ड्स में देखेंगे। तो एक एक करके बात करना शुरू करते हैं, बात करना लिखना नहीं, ठीक है। पोजीशन ऑफ द गवर्नर इन कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप। सबसे पहले गवर्नर इज एन अपॉइंटी ऑफ प्रेसिडेंट विच मीन्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। इस बात को समझ लेना चाहिए कि अपॉइंटमेंट होके आती है यूनियन गवर्नमेंट से। अब एक पर्सन है या एक बॉडी है जो आपको अपॉइंट कर रही है कहीं, आप इनहेरेंटली ऑब्लाइज्ड हो जाते हो उनकी तरफ, इनहेरेंटली ऑब्लाइज्ड हो जाते हो। दिस इज हाउ ह्यूमन बीइंग्स हैव सोशलाइज्ड, इस तरीके से उनका समाजीकरण हुआ है ना, कि अगर आपको किसी ने एक बहुत अच्छा प्लेस दिया है तो आप ऑब्लाइज्ड फील करते हो उस बॉडी की तरफ, उस इंस्टीट्यूशन की तरफ, है ना, जिसकी वजह से इंक्लिनेशन देखने को मिलती है गवर्नर्स की टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनली भी एक अपॉइंटी है जो प्रेसिडेंट के थ्रू यूनियन गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया रहता है। देन आर्टिकल 154 क्लॉज 1 कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गवर्नर में पावर वेस्ट करता है, एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक है। हमने लिखा ना कि पीछे अभी आर्टिकल 154 एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक है। तो गवर्नर इज ओनली अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड एंड एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट हाउएवर इज एक्चुअली एक्सरसाइज्ड बाय द COM. सो दीज 154 में जो एग्जीक्यूटिव पावर की बात की है ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, ठीक है, एंड गवर्नर कैन एक्ट ओनली ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ COM इन दिस केस। ये सब आपने लिख रखा है, हमें पता चल गया, इस क्वेश्चन पे हम टिक मार्क कर देंगे। देन व्हाट आर द ऑप्शंस बिफोर द गवर्नर विद रिस्पेक्ट टू बिल्स, ठीक है। इसमें इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको बाद में लिखवाते हुए चलूंगी कुछ गवर्नर की पोजीशन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप में, उसमें हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, कुछ नई चीज़ जो ऐड करवानी है जो आपने नहीं लिखी है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके जो मेंबर्स थे उनके क्या व्यूज़ थे, जैसे कि डॉक्टर BR अम्बेडकर का क्या व्यू था, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की क्या पोजीशंस रही हैं, ठीक है, ये सब मैं आपको लिखवाती हुई जाऊंगी, अभी स्किप कर रही हूँ ये पॉइंट, ठीक है। देन गवर्नर्स ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू बिल। सो आर्टिकल 200 जैसे जगदीश ने बताया था हमें, ठीक है, कि आर्टिकल 200 प्रोवाइड करता है कि देयर आर 4 ऑल्टरनेटिव कोर्सेस, ठीक है, जैसे कि क्या क्या एक्शंस गवर्नर ले सकता है अगर एक बिल उसके पास आता है, द गवर्नर कैन गिव हिज असेंट स्ट्रेट अवे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन रहता है गवर्नर कैन विद होल्ड हिज असेंट। तीसरा ऑप्शन आपके पास रहता है कि एक रिजर्व कर ले फॉर प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन, ठीक है, जिसमें अगर असेंट दिया तो ठीक प्रेसिडेंट ने, फिर तो असेंट ठीक है, अगर नहीं दिया तो वो जो बिल है वो पास नहीं माना जाएगा, है ना, यही होता है। फिर दूसरा ऑप्शन, सॉरी चौथा ऑप्शन क्या है कि जो बिल है उसको वापस कर दे रिकंसिडरेशन के लिए, ठीक है, और रिक्वेस्ट करे कि रिकंसिडर करे असेंबली इसको, ठीक है, और कोई भी अगर पर्टिकुलर प्रोविजन हाईलाइट करना चाहता है गवर्नर किसी बिल का वो भी कर सकता है। ये 4 चीज़ें हैं, यानी कि पहली असेंट दे दो, दूसरी विदहोल्ड कर लो, तीसरा प्रेसिडेंट के पास भेज दो, चौथा रिकंसिडरेशन के लिए भेज दो, ठीक है। देन गवर्नर कैन ऑल्सो सजेस्ट द अमेंडमेंट्स। अब जो वो प्रोविजन हाईलाइट करके भेजेगा गवर्नर, जो कि हमने पिछले वाले में देखा था कि ये प्रोविजन है, ठीक है, एक जो हम नोट लिख सकते हैं यहाँ पे, given the last, that is fourth option that governor has with respect to bill, उसमें हमें जो समझने की बात है जो हम नोट में लिखेंगे अपने, वो ये है कि गवर्नर जब हाईलाइट करता है किसी प्रोविजन को तो वो सजेस्ट भी कर सकता है कि अमेंडमेंट क्या होना चाहिए, ठीक है, किसी भी बिल में। However, again it depends on the legislative assembly whether or not to accept that recommendation, that suggestion, that amendment, whether or not to pass the bill with amendments or to pass it again without amendments। जब एक बार गवर्नर ने अपनी पावर एक्सरसाइज कर ली उसके बाद सर्टेन पावर लेजिस्लेचर की हो जाती है जिसपे गवर्नर भी कोई कंट्रोल नहीं कर पाता, ठीक है। अब करंट इश्यूज आपको पता है, करंट इश्यूज आपको पता है, नीट अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो होता है, ठीक है, उसमें मेडिकल के ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएशन के लिए सीट्स रिजर्व करना चाह रहे थे तमिलनाडु में डोमिसाइल के बेसिस पे, है ना, लोकल रेजिडेंट्स के लिए, तो वहाँ पे गवर्नर ने अभी तक इनएक्टिविटी दिखाई है उस बिल को लेके। एंड इसके अलावा जो वेस्ट बंगाल के हमारे गवर्नर थे जगदीप धनखड़, उन्होंने हावड़ा
म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो बिल है वो पास नहीं किया था, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स करना चाहती थी लेजिस्लेटिव असेंबली, बट क्योंकि उन्होंने पास नहीं किया तो इलेक्शंस डिले होते रहे हावड़ा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की। ठीक है, अब जब ये बात सब सच है कि आर्टिकल 200 गवर्नमेंट को बहुत सारा टाइम देता है, किसी बिल को विद होल्ड कर ले, कुछ भी कर ले, है ना, तो ये इश्यूज क्यों आ रहे हैं? ये इश्यूज का जो कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअली फिलोसफिकल है कि क्या चीज़ें इस सब पावर से गवर्नर अंडरमाइन कर लेता है। ठीक है, जैसे कि हमारा जो आर्टिकल 200 है, हमने समझ लिया कि उसके पास चारों ऑप्शन है, वो तो कुछ इलीगल नहीं कर रहा, उसके पास चार ऑप्शन थे, उसने कुछ इलीगल नहीं किया। अगर उसने विद होल्ड कर लिया, देयर इज नथिंग रॉन्ग ही हैज डन, बट if these power of delays are exercised by the governor, then what becomes defunct? The legislative assembly as a whole. And who does the legislative assembly in the state represent? The people of the state, right? So there is inherent philosophical and social context, which is why it becomes undemocratic. Fine, then we will talk about how article 200 is, giving the way for being undemocratic to the governor, right? We will write about it and you will understand that basically we are going to criticize article 200. Fine, then we will also say that the governor is acting non-responsibly, right? And the fact that he is non-responsible for his actions because he has constitutional backing, that's why he is readily doing so with political intentions, right? Then there are certain legislative powers ki giving assent to a bill is in fact a legislative power, कि एक legislature ने पास कर दिया एंड आपके हैंड एंड सील के अंडर वो बिल जाना है, आपके सिग्नेचर के बिना वो एक्ट कन्वर्ट नहीं होगा। तो अगर किसी बिल को गवर्नर ने असेंट नहीं दिया तो वो लेजिस्लेटिव पावर को हैम्पर करता है लेजिस्लेचर की, यानी कि आपने एक पूरी इलेक्टेड बॉडी को डिफंक्ट कर दिया बाय जस्ट विद होल्डिंग। इट्स लाइक तुम घर घर खेलते रहो, ठीक है, जब मेरे पास बिल आएगा तो कुछ इंप्लीमेंट नहीं होगा। देन व्हाई द टाइम एंड रिसोर्स of legislative assembly is being wasted along with being undemocratic for the people of the country. Such holding of bills is such a burden on the functioning of the government, है ना। then anti federal nature हो जाता है इस केस में, फेडरलिज्म को काउंटर करता है ये सब। अगर स्टेट को आप फंक्शन नहीं करने दोगे एंड आप गवर्नर हो और स्टेट क्या सोच रहे हो, आप सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव हो और आप हैम्पर कर रहे हो हमारी फंक्शनिंग, तो यहाँ पे जो फेडरलिज्म का फीलिंग है वो बिल्कुल एंटी हो जाता है। तो ये जो एक्ट है गवर्नर का कि ये जो ऑप्शंस वो कैरी करता है बिल से रिलेटेड, वो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर के लिए भी अंडरमाइनिंग रहते हैं, ठीक है। फिर अनडेमोक्रेटिक तो है ही, ठीक है। हम ये सब हेडिंग्स में लिखेंगे, मैं इन्हें एक्सप्लेन करूंगी, जो आपको इंपॉर्टेंट लगे इन वर्ड में आप सिर्फ वो लिखना, वरना ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अगर आप सिर्फ अनडेमोक्रेटिक समझते हो तो एक्सप्लेन आप खुद कर सकते हो, है ना। चलो अब इन सब क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे एक एक करके। ये हमारा कवर्ड है। देन ऑप्शंस बिफोर द गवर्नर के बारे में बात करने से पहले मैं आपको कुछ लिखवाऊंगी। इसकी सब हेडिंग रखते हैं व्यूज ऑन द पोजीशन ऑफ गवर्नर। व्यूज ऑन द पोजीशन ऑफ गवर्नर। फर्स्ट पॉइंट अंडरलाइन करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, डॉक्टर B.R. अंबेडकर, और जस्ट राइट डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर explained in the Constituent Assembly, explained in the Constituent Assembly that the governor under the Constitution has no functions which he can discharge by himself। तो डॉक्टर B.R. अंबेडकर कहते थे कि और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वो ये बात एक्सप्लेन करी थी कि गवर्नर के पास ऐसा कोई फंक्शन नहीं है जो वो अपनी मर्जी से डिस्चार्ज कर ले,
ठीक है, तो ये उनका आइडिया था। हम इस आइडिया को क्यों समझने की कोशिश करें, हम ये समझने की कोशिश करें कि कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी क्या थी पोजीशन के पीछे, एंड आज के टाइम पे क्या चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। सो थ्योरी एंड प्रैक्टिकल में जो डिफरेंस देखने को मिलता है ना, उसके बारे में हम समझने की कोशिश करें इस स्टेटमेंट से, ठीक है। जबकि अब हम नेक्स्ट पॉइंट बनाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। सो द सुप्रीम कोर्ट हैज क्लियरली the Supreme Court has clearly affirmed the position of governor in Shamsher Singh versus State of Punjab 1974। मतलब उन्होंने विदहोल्ड किया है कि हाँ ठीक है, गवर्नर की पोजीशन के पास जो भी पावर्स हैं वो फेयर हैं, एंड जो भी वो प्रैक्टिसेस करता है उसमें कुछ भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। तो गवर्नर अगर इनडेफिनेटली भी कोई चीज़ विदहोल्ड कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर रहा, अफर्मेशन दे रहा है उनकी पोजीशन को, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट है। हमने ये ऑलरेडी कवर किया है, हम जस्ट स्पीकिंग इट अप, इट्स योर डिस्क्रिप्शन इफ यू वांट टू राइट, ठीक है। सरकारिया कमीशन सेज दैट एज लॉन्ग एज COM enjoys the confidence in the assembly, its advice in matters unless absolutely blatantly unconstitutional must be demanded and deemed as binding on the governor. Fine. And again Sarkaria Commission says that as long as the COM is enjoying majority, the governor cannot dismiss them, ठीक है। ये वाला जो मैंने स्टेटमेंट अभी बोला, दिस इज वेरी स्पेसिफिक टू बिल्स। जब हम कहते हैं कि जो भी एडवाइस COM देगा, इट शुड बी डीम्ड एज बाइंडिंग ऑन गवर्नर बिकॉज COM इज एंजॉइंग मेजॉरिटी। सो सरकारिया कमीशन के बारे में जब हमें सोचना है तो हमें ये सोचना है कि वो जिस भी तरफ जाएंगे वो मेजॉरिटी होल्ड करने की पोजीशन को स्ट्रॉन्गर रिस्पेक्ट देते हैं एज कंपेयर टू गवर्नर्स पोजीशन। तो बिल के बारे में भी वो COM को फेवर करेंगे, उनकी डिसमिसल के बारे में भी वो COM को फेवर करेंगे, कब तक, जब तक मेजॉरिटी उनके पास है, ठीक है। सरकारिया कमीशन की फिलॉसफी के बारे में ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। फिर 2016 में एक 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था, उसके बारे में लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट बनाएंगे। In 2016, a 5-judge constitution bench of the Supreme Court Nabam Rabia case reaffirmed the position of governor's power in our constitutional setup तो जो भी पावर अब गवर्नर को दे दी है वो सुप्रीम कोर्ट कहता है एब्सोल्युटली कॉन्स्टिट्यूशनल है। गवर्नर कुछ भी गलत नहीं करता अगर वो इनडेफिनेटली भी विदहोल्ड कर लेता है एक बिल को। अब गवर्नर्स ऑप्शंस, व्हाट आर द ऑप्शंस बिफोर द गवर्नर with respect to bills? First point is Article 200. ये भी हमने नोट किया हुआ है, आप बस Article 200 पे भी छोड़ सकते हो, I'm dictating however. Article 200 of the Constitution provides for 4 alternative courses of a governor when a bill being passed by legislature is presented to him for his assent,
क्या क्या है भाई? वन बाय वन. फर्स्ट क्या है? Give his assent straight away. Then withhold. Third, reconsideration of president. Fourth, reconsideration of the house. Fine. So first is governor can give his assent straight away. Governor can give his assent. Then second is governor can withhold his assent. Governor can withhold his assent. आप ऐसे लिख सकते हो give assent, withhold assent. ठीक है. थर्ड में लिख सकते हो president's consideration. एंड फोर्थ में लिख सकते हो रिकंसिडरेशन ऑफ लेजिस्लेचर. बस एक नोट लिखेंगे. नोट, द गवर्नर कैन ऑल्सो suggest any new amendment to the bill. However, if legislature again passes the bill without accepting any of the amendments suggested by governor, he is constitutionally bound to give his assent to the bill. इसी वजह से तो indefinite holding उनको ज्यादा पसंद आती है रिकंसिडरेशन के लिए भेजने के कंपैरिजन में. चलो, कि आप वो बिल ना दे, पास ही ना करे, अपने पास विदहोल्ड करके रख ले अगेन. जब वो दोबारा रिकमेंडेशन के लिए आ जाता है ना, तो वो ये होता है कि वो रिकंसिडर करने नहीं भेज सकता दोबारा. हाँ, प्रेसिडेंट के पास भेज सकता है और अपने पास रख सकता है, पर रिकंसिडरेशन के लिए अब दोबारा नहीं भेज सकता वो. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड हो जाता है कि अपना असेंट दे दो उसको. Yeah, that's what I'm sorry. I just get carried away with the statement he make. So उनके पास दो ऑप्शंस रहते हैं कि अपना असेंट दे दे, और जब वो कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड हो गए तो अपने असेंट के लिए तो वो कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड हो गए. द ओनली ऑप्शन ही इज लेफ्ट विद इज टू सेंड इट फॉर प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन. ठीक है, हमने करंट इश्यूज कवर कर लिए. शुड आई रिपीट? आई एम डन रिपीटिंग. ठीक है, चलो. Now, how is the process undemocratic? Your first point is against Article 200. So you can, if you want, this is a very informal subheading, but if you want, you can put it like this: against Article 200. Start करें. Article 200 clearly says that when the assembly reconsiders the bill on the recommendation of the governor and presents it to him, he shall not withhold the assent. If the governor does not exercise any of the four options, he will not be acting in conformity with the constitution. I was not expecting you to write the whole thing, but okay. Because non-action is not an option
once reconsideration is made under Article 200. Once reconsideration is made under Article 200. ठीक है. Then second point, non-responsible for the actions. Non-responsible for the actions. In our constitutional system, the governor or president is not constitutionally personally responsible for their acts THEIR, and it is the elected government that is responsible. इसमें आर्टिकल 361 क्या कहता है? That the president or a governor under Article 361, the president or a governor is not answerable to any court for anything done in the exercise and performance of their powers and duties. जिस वजह से भी अनडेमोक्रेटिकनेस प्रमोट होता है, बिकॉज वो उनका पर्सनल कुछ आंसरेबिलिटी नहीं है, ठीक है, तो वो कुछ भी विदहोल्ड कर लेते हैं एंड दे आर नॉट आंसरेबल टू एनीवन फॉर डूइंग सो. कुछ चाहिए पानी, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है लेजिस्लेटिव पावर. गिविंग assent to a bill passed by the legislature is a part of the legislative process, and not executive power. तो आप क्या हैम्पर करते हो अपनी एग्जीक्यूटिव पावर एंजॉय करते वक्त? लेजिस्लेटिव प्रोसेस को हैम्पर करते हो. नेक्स्ट पॉइंट. अब यहीं पे अगर मुझे गवर्नर को सपोर्ट करना होता तो मैं क्या कहती? मैं कहती कि उसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, और मैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को कोट करती कि उन्होंने किस तरीके से रीअफर्म किया है एंड अफर्म किया है बार बार कि गवर्नर कुछ भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कर रहा. बट क्योंकि मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि अनडेमोक्रेटिक कैसे है, तो मैं अपनी सेम गिवन इंफॉर्मेशन को अलग तरीके से इंटरप्रेट एंड प्रेजेंट कर रही हूँ. देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी a limit to the amount of information you guys are going to have, and with same amount of information you have to write your mains answers in the tone and toner in which the question has been asked. So interpretation will be there working for you. Next point, anti-federal nature. The option of withholding assents is essentially against federalism. ठीक है. Then undemocratic. Withholding of assent is not
normally exercised by governors because it will be an extremely unpopular step. Because it will be an unpopular step. Why? Because the government is popular one, no? पॉपुलर सपोर्ट से गवर्नमेंट बनी है, तो अगर आप उसके अगेंस्ट कुछ करते हो तो वो क्या हो गया? अनपॉपुलर हो गया. ठीक है. एंड इट मे न्यूट्रलाइज जेड भी लिख सकते हैं एस की जगह, न्यूट्रलाइज the entire legislative exercise by an elected legislature. हालांकि ये इसके अंदर जो मटेरियल फिल इन करना है सब हेडिंग्स के अंदर वो आप खुद भी कर सकते थे, बट आई एम जस्ट डिक्टेटिंग इट कि चलो एक प्रेजेंटेशन का आइडिया हो जाएगा. एक्सरसाइज बाय एन इलेक्टेड लेजिस्लेचर enjoying the support of the people. कोई रॉकेट साइंस नहीं बताई. चलो चारों क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं. इनमें से कोई डाउट? अरे पक्का आप लोगों को? ठीक है. ओके. ऑफिस ऑफ द गवर्नर, इसके बारे में बात करेंगे. ये तो आपने ऑलरेडी कर रखा है. इसके बारे में क्या बात करेंगे? कुछ तो करंट में मटेरियल रहा है जिसकी वजह से ये न्यूज में है. सो द रोल ऑफ द गवर्नर हैज बीन कंटेंशियस वन राइट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट्स टू सुप्रीम कोर्ट केसेस अराउंड इट. अब आप ये सोचो ये तो कोई करंट अफेयर की स्टेटमेंट नहीं है. जी हाँ, नहीं है. न्यूज स्टेटमेंट्स मैं पिक करती हूँ इस पर्सपेक्टिव से कि एक मेन स्टेटमेंट की क्वेश्चन के जैसा लगना चाहिए वो स्टेटमेंट. ठीक है. तो लुक एट दिस स्टेटमेंट एंड कैन यू नॉट इमेजिन इट एज इट इज इन यूपीएससी सीएसई's एग्जाम, है ना? तो ये स्टेटमेंट लिख लो, ट्रीट इट एज अ क्वेश्चन फॉर योरसेल्फ. अगर प्रैक्टिस करना चाहो ना तो इसी स्टेटमेंट को लेके एक आंसर लिख सकते हो. The office of governor, and the new statement is the role of the governor has been contentious one right from the constitutional assembly debates to supreme court cases around it. अब इस बेस पे हम देखेंगे कि भाई रीसेंट इश्यूज क्या क्या हुए हैं ऑफिस ऑफ गवर्नर को लेके. यहाँ पे मैं झारखंड, दिल्ली, एक तमिलनाडु वाला आपको पता है, वेस्ट बंगाल वाला आपको पता है, फिर पुडुचेरी का भी है एक, वो मैं डिस्कस करूंगी. यानी कि झारखंड, दिल्ली और पुडुचेरी के न्यू इश्यूज हैं जो आपको बताने हैं मुझे. फिर हाउ डिड द गवर्नर्स पोस्ट कम अबाउट, एग्जिस्टेंस में कैसे आई, कहाँ से, इसकी हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स वाला जो आपका पार्ट है ना लक्ष्मीकांत में, उस वो कवर करेंगे गवर्नर की पोस्ट के लिए स्पेसिफिकली. ठीक है. कहाँ से गवर्नर की पोजीशन आती है इंडिया में. देन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या बात करते हैं गवर्नर के रोल से रिलेटेड. देन व्हाट आर द प्रोविजंस अवेलेबल रिगार्डिंग द लेफ्टिनेंट गवर्नर. लेफ्टिनेंट गवर्नर और गवर्नर में अगर डिफरेंस आ जाए बताने के लिए, और आपने ये करंट अफेयर कवर किया है तो कंटेंट है आपके पास. ठीक है, हो जाएगा. तो कॉन्स्टिट्यूशन बाय कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि आर्टिकल बाय आर्टिकल जाएंगे. कुछ आर्टिकल्स आपने लिख लिए हैं, जैसे 174 है वो अब आपने नहीं नोट किया है ना. देन प्रोविजंस फॉर लेफ्टिनेंट गवर्नर तो बिल्कुल नहीं किया, आर्टिकल 239 वगैरह हमने वो सब लिखेंगे. ठीक है. फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की क्या क्या इंटरप्रिटेशंस रही हैं, कुछ हमने कवर की हैं. शमशेर सिंह हमने कवर कर लिया, एसआर बोम्मई हमने कवर कर लिया. उसकी भी मैं डिटेल्स डिक्टेट करवा दूंगी, नहीं लिखना होगा तो नहीं लिखना होगा. ठीक है. पॉलिटिकल क्राइसिस इन अरुणाचल प्रदेश हुआ था 2015 में, उसके बारे में भी बात करेंगे. देन कमीशंस की क्या रिकमेंडेशंस हैं उसके बारे में भी बात करेंगे. अगेन कमीशंस वही आएंगे आपकी, पुंछी कमीशन एंड सरकारिया कमीशन. तो ये शेयर रिपीटिशन है और इसीलिए फर्स्ट करंट अफेयर के बाद से हम फास्टर मूव कर रहे हैं. ठीक है. चलो ठीक है. तो कुछ रीसेंट इश्यूज जो झारखंड, दिल्ली और पुडुचेरी के हैं वो मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ. तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल के आप सोच लो आपने रिवाइज कर लिए. ठीक है, ऐसा इमेजिन कर लेने का. तो झारखंड में क्या हुआ था कि बहुत टाइम तक
अच्छा, झारखंड के एक सीएम है हेमंत सोरेन, उनकी ना डिस्क्वालिफिकेशन के केसेस हैं एज एन एमएलए। तो इस वजह से और गवर्नर को उनको डिस्क्वालीफाई करना है, गवर्नर साइलेंस मेंटेन करे जा रहे हैं उनकी डिस्क्वालिफिकेशन पे, जिस वजह से पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी एंड इश्यूज हैं कि अगर, अरे भाई उनको अगर आप डिस्क्वालीफाई कर देते तो कोई नया सीएम इलेक्ट कर लेते, पार्टी तो मेजॉरिटी में थी, ठीक है, और अगर आप नहीं कर रहे हो तो एक अनसर्टेनिटी क्या, कभी भी कर दोगे, तो जो ये पावर एक्सरसाइज होता है, स्टेबिलिटी का जो क्वेश्चन होता है, डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी का, वो यहाँ पे हैम्पर होता है और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बनी रहती है, ठीक है, कि कब साइलेंस ब्रेक करेंगे, क्या सोच रहे हैं, क्या सोचना चाहते हैं, ठीक है, इस चीज़ की। और ये गवर्नर एक अगेन अपने एक फंक्शन से खुद को प्रिवेंट कर रहे हैं, ठीक है। देन दिल्ली में क्या होता है, बहुत सारा पास पैट होता रहता है बिटवीन द दिल्ली गवर्नमेंट एज वेल एज द लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। स्पेशली सबसे ज़्यादा होता है, या सबसे ज़्यादा देखा गया था, सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड वाला देखा गया था अपॉइंटमेंट ऑफ ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर, ठीक है। यहीं पे तमिलनाडु में जो डेडलॉक है आर एन रवि का, वो है आपके अंडर ग्रेजुएट मेडिकल सीट्स के लिए, ठीक है। देन वेस्ट बंगाल में बहुत सारे इश्यूज रहे हैं बिटवीन जगदीप धनकर एंड ममता बनर्जी। पुडुचेरी में रिमेंबर कौन था, किरण बेदी। तो होता क्या था, देयर वाज डिसकंटेंट कि वो बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करती थी एडमिनिस्ट्रेशन में, वो एक पैरेलल गवर्नमेंट की तरह, पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन की तरह रन कर रही थी जो पुडुचेरी है वहाँ पे। एंड इट वाज रिपोर्टेड दैट किरण बेदी वाज serving as a parallel government of Puducherry itself. So she was behaving like a administrator and not a governor. डिफरेंस है ना, जिन यूनियन टेरिटरीज में इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं होती वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर होता है, फिर वो सारा कुछ रन कर रहा होता है ना। हालांकि पुडुचेरी में इलेक्टेड गवर्नमेंट है, तो यहाँ पे गवर्नर को गवर्नर की तरह रन करना है, ना कि एडमिनिस्ट्रेटर की तरह, राइट, ठीक है। नाउ इंडिया में किस तरीके से पोस्ट आई गवर्नर की, इसकी स्टोरी ये है कि सबसे पहले तो इंडिया ब्रिटिश क्राउन के अंडर था और वहाँ से ये पोजीशन आना शुरू हुई थी। जो प्रोविंसेस थे, जैसे कि मद्रास प्रेसिडेंसी था, कलकत्ता था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी था, ये सब क्राउन के अंडर आते थे। एंड उनकी जो फंक्शनिंग थी, उनके ऊपर एक एक गवर्नर को अपॉइंट किया गया था, और अल्टीमेटली इंडिया में एक गवर्नर जनरल होता था जो इन सब को सुपरवाइज करता था, या ये सब सबऑर्डिनेट रहते थे गवर्नर एक गवर्नर जनरल को। जो गवर्नर जनरल होता था वो किसको रिप्रेजेंट करता था इंडिया में, क्राउन को, ठीक है। फिर आया इवेंचुअली फास्ट फॉरवर्ड टू 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसमें यहाँ से ये बात शुरू हुई कि जो अब गवर्नर्स हैं, जो प्रोविंसेस में इलेक्टेड गवर्नमेंट बनी है, उनकी एड एंड एडवाइस पे काम करेंगे। तो पहली बार ये प्रोविजन एड एंड एडवाइस का आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, ठीक है। एंड उसके बाद हमने भी इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में इसी प्रोविजन को अडॉप्ट करते हुए गवर्नर की प्लेस को एग्जिस्टेंस में रखा, मेंटेन किया, इवन इन इंडिपेंडेंट इंडिया, विद द सेम रोल दैट this positions on this position governor is going to work on the aid and advice of council of ministers, ठीक है। तो ये हिस्ट्री थी, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, गवर्नर की पोजीशन से इन द प्रोविंसेस, जिनको सुपरवाइज करता था गवर्नर जनरल, ठीक है। फिर 1935 में जीओआई का जो एक्ट था, उससे आज की जो पोजीशन है वो रिलेट होती है, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, अगेन आर्टिकल 154, 155, 164, 163, 167, 174 सब कवर करेंगे, आर्टिकल 200 भी कवर करेंगे, ठीक है। फिर प्रोविजंस रिगार्डिंग लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये अभी डिटेल में बोल रही हूँ, फिर से बोल दूंगी, ठीक है, क्योंकि ये एक भी बार हमने अभी तक कवर नहीं किया है। आर्टिकल 239, आर्टिकल 239 कहता है कि ईच यूटी विल बी एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट through an administrator appointed by him. The administrators in some UTs are designated as lieutenant governor, as for example NCT of Delhi, that is article 239
A, right? Then Lieutenant Governor of Delhi also acts on the advice of COM, right? Except on the subjects of, ये हेल्थ और एजुकेशन तो सब कवर कर रहे हैं ना केजरीवाल जी, तो फिर कैसे? पुलिस, लैंड, पब्लिक ऑर्डर, right? Police, land and public order. In case of difference of opinion with the ministers, he would have to consult whom? President. President, right? Okay. फिर ये सिंपल बिल्कुल इतना ही है लेफ्टिनेंट गवर्नर के बारे में, इससे ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस इतना समझना है. फिर सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशंस हमने शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रेसिडेंट एंड गवर्नर शैल एक्सरसाइज देयर फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स ओनली अपॉन एंड इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ देयर मिनिस्टर्स. ठीक है. और एसआर बोमई केस में 1994 में बोला था कि राइट आफ्टर 20 years, 1974 में शमशेर सिंह केस होता है, 1994 में एसआर बोमई केस होता है, तो 20 years यानी कि 2 decades के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इम्पोज किया कि प्रेसिडेंट रूल शेल ओनली बी इन द इवेंट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी. ठीक है. एंड उन्होंने ये भी बोला, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी रूलिंग दी कि अगर फ्लोर ऑफ द असेंबली पे एक शुड बी द ओनली फोरम जहां पे ये डिसाइड हो कि कॉन्फिडेंस है या नहीं है. गवर्नर खुद से ना मान ले कि कॉन्फिडेंस नहीं है, कोई और रीजन हो सकता है, बट मेजॉरिटी इंजॉय कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसका डिसीजन कहाँ होगा? फ्लोर ऑफ द असेंबली पे. ठीक है. दैट इज द ओनली एंड ओनली फोरम टू टेस्ट द मेजॉरिटी ऑफ द current government, incumbent government, right? And not the subjective opinion of, क्या डिसाइड नहीं करेगा किसका सब्जेक्ट? गवर्नर. दैट वाज द रूलिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन एसआर बोमई, राइट? अच्छा, अब एक पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ था 2015 में अरुणाचल प्रदेश में, जिसमें कि जो गवर्नर है वो सीएम की बिना एडवाइस के एक्ट किए जा रहा था. ठीक है. जैसे कि उन्होंने एडवांस कर दिया असेंबली सेशन, पहले बुला लिया. ठीक है. एडवांसमेंट मीन्स यू हैव कॉल्ड देम बिफोर टाइम, राइट? देन द लिस्टेड रिमूवल ऑफ स्पीकर, वहां पे एजेंडा में डाल दिया, एजेंडाज की लिस्ट में रिमूवल ऑफ स्पीकर डाल दिया गवर्नर ने अरुणाचल प्रदेश में. ठीक है. क्या कोई रोल था? कोई बैकिंग थी इस स्टेप की गवर्नर के पास? नहीं थी. ठीक है. फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि गवर्नर मूव इज वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. फिर उन्होंने ये भी हाईलाइट किया कि गवर्नर को जो डिस्क्रिशन है ना, उसकी भी कुछ लिमिट है. ठीक है. गवर्नर इस तरीके की स्टेप्स तो नहीं ले सकता कि स्पीकर के रिमूवल का एजेंडा डाल दे और असेंबली को एडवांस में बुला भी ले ताकि इनका रिमूवल हो जाए. नहीं ले सकता है ना. तो बट गवर्नर वाज वेरी लर्नेड एंड कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, राइट? ओके. देन हाँ जी, नहीं, लेफ्टिनेंट गवर्नर की पोजीशन एक एक्सेप्शनल पोजीशन है. ऐसा नहीं है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को बुलाया. अच्छा, आप बोल रहे हो कि द सेम पर्सन कैन होल्ड चार्ज ऑफ 2 places. हाँ, एडिशनल चार्ज कैन बी गिवन. yes, additional charge can be given. However, it is the government that is specifying who is a lieutenant governor. Fine. Administrators in UT do not have the legislative assemblies with them. They are exercising all the executive powers, and where the legislative decision making is done for the UT in the center. Fine. However, these lieutenant governors have legislative assemblies with them to function in the UT. There are legislative assemblies in 2 UTs, which all? And Puducherry, right? Okay. Now, yeah. CM से कोई लेना देना नहीं है, पब्लिक नहीं, नहीं.
ये एनसीटी ऑफ दिल्ली के लिए एक्सेप्शनल केस है कि पुलिस, लैंड एंड पब्लिक ऑर्डर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है यहाँ की, उनके सब्जेक्ट्स में नहीं आता. जैसे देयर आर सब्जेक्ट्स, राइट, जिसकी वजह से हम डिफाइन कर पाते कि कौन सी पार कौन एंजॉय करेगा. तो ये स्पेशली मेंशन्ड है एनसीटी ऑफ दिल्ली के लिए आर्टिकल 239 ए में कि पुलिस, लैंड एंड पब्लिक ऑर्डर उनके कंट्रोल में नहीं है दिल्ली का. ठीक है. Because it's capital territory, so land acquisitions cannot be done otherwise, yeah, by the state government. It cannot be allotted, it cannot be like any land records cannot be under them, right. देयर एक आप ऐसे इमेजिन करके देखो प्रैक्टिकल, आपको समझ आएगा कि दिल्ली में 3 तरीके से गवर्नमेंट फंक्शन कर रही है. एक तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है दिल्ली की, ठीक है, फिर एक लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, फिर कुछ पावर सेंटर भी इंजॉय करता है थ्रू लेफ्टिनेंट गवर्नर. ठीक है, जिसकी वजह से देयर आर डिविजन्स ऑफ सब्जेक्ट्स डिफरेंटली, राइट. MCD, yeah, and not the legislative assembly. There is just different provisions for the space being different. ऐसा स्पेशल कर दिया इसको. पहले तो बिना सेंटर की परमिशन के कि कोई भी स्टेट अपनी बाउंड्री खुद से तो चेंजेस नहीं कर सकता जगदीश, चाहे फिर वो यूटी हो चाहे फिर वो यूटी ना हो. ठीक है, हालांकि सेंटर को परमिशन की जरूरत नहीं है स्टेट की, बट स्टेट तो नहीं कर सकते अपनी डिस्क्रिप्शन से. तो वहां पे लैंड उनके पास है भी तो भी वो गिव अवे नहीं कर सकते. आपके एग्जाम्पल की वजह से बोल रही हूँ. हाँ, ये सब नहीं कर सकते दिल्ली में बिना सेंटर की परमिशन के, जबकि स्टेट में ये परमिशन स्टेट गवर्नमेंट देती है किसी भी कंपनी को अगर वहां पे सेटअप करना है एंड ऑल. तो वहां पे जब इलेक्शंस होंगे उनके लिए जो प्रोविजंस, अगर जैसे मान लो कि उन्होंने अभी जो अदरवाइज यूटीज हैं उनके जैसे प्रोविजंस उनको दे दिए, वहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली आई या लेफ्टिनेंट गवर्नर ने वर्क करना शुरू किया, बट पार्लियामेंट ने अब ये बात कह दी है कि जैसे कि बाकी सब स्टेट्स एंड यूटीज के साथ होता है, एक प्राइवेट जो इंडिविजुअल है वो कहीं भी लैंड एक्वायर कर सकता है, जो कि जेएनके में नहीं था प्रोविजन, अब वो वहां पे एप्लीकेबल है. तो वो स्टेट किसी को सर्टेन रीजंस बियॉन्ड दिस ही रोक सकती है, किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को नहीं रोक सकती. यू डोंट नो, बट यू विल बी वंडरिंग एंड यू विल बी ऑल्सो सरप्राइज बाय द फैक्ट कि अभी ये जो प्राइवेट लैंड ओनरशिप वहाँ से जो भी लिमिटेशंस थी वो रिमूव हुई, तो सबसे ज़्यादा लैंड्स किसने एक्वायर की होंगी वहाँ पे? पॉलिटिशियंस ने, तुरंत, है ना, ली होगी ना. सो इट इज द केस कि किसी को अनलेस देयर इज लाइक फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में प्रॉब्लम है तो रोक सकती है, बट इसीलिए कि आप ये स्टेट के लिए बिलोंग नहीं करते जो कि पहले रिस्ट्रिक्शन था, इसीलिए नहीं रोक सकते. ओके, या वहां इनफैक्ट वहां पे तो जाने के लिए भी परमिट लगता है ना. या but JNK was so highlighted because it has its own constitution and absolute restrictions, not at all allowing the center government to interfere with itself. However, in these cases, when it comes to other states and territories, it is discretion of central government that if center government wants to make an exception, it can, right? Which was not there in JNK otherwise. What will be changed? It's been already changed. Yeah, unless and until specified by the parliament that this is what you are not going to enjoy, you are going to enjoy it. Like it's done for Delhi, right? But since it's a UT,
So there is just a better amount of control that the center government anyways enjoys, right? Okay. Do not. Do not. Because patriotism will always be upper, having an edge over federalism, right? If you are not federal, if you are just one in the center, but patriotism will take an edge. फेडरलिज्म थोड़ा हर्ट होता है तो हो, पेट्रोटिज्म नहीं होना चाहिए, है ना? अरे मतलब हाँ, ये वाला कोट नहीं करोगे आपकी, मतलब ये एक फेडरलिज्म पे दाग क्यों था? बाकी स्टेट्स भी तो हैं, वो भी तो इनफैक्ट इट इज in favoring the federalism by equating the other states with JNK or equating JNK with other states. But then you are, but if you are Sakshi, if you are going to, Sakshi is your name, right? So if you are going to quote it like this, then you are being negligent towards a bigger context, which will not give a better message to the examiner himself. What is the bigger context? Bigger context is that the state had a lot of problems within it, because of which the rationale was clear why the center wanted to take it as a UT first. And again, the step of delimitation, the step of being willing to have elections, these are all in favor of the central government, and which is why you cannot criticize, and especially in this manner, because if you are putting a blind eye on a lot more context, that is not what I mean when I tell you that interpret information in certain way. Yeah, you should avoid it, because it is going to, see, if agar advantages or disadvantages weigh out kare, तो it is going to play as a disadvantage for you, because then examiner will be like, you are narrowing down the context in itself. That is not what I mean when I say interpret the information accordingly. That is not what I mean, right? So then there will be Supreme Court's interpretation, then there will be Commission's recommendations. We have already covered both of them. Sarkari and Punshi is what we are going to cover once again, right? Should we start? Okay. तो recent issues में आप पुडुचेरी, दिल्ली का और झारखंड का लिख लो, अगर आपको लिखना है, नहीं तो ये पॉलिटिकल है, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जस्ट एन एग्जाम्पल फॉर यू, ठीक है? झारखंड, शुड आई रिपीट वंस अगेन? नो, ओके, रिपीट करूँ? नहीं, ओके, चलो. हाउ डिड द गवर्नर्स पोस्ट कम अबाउट, ये लिख लेते हैं, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स लिख लेते हैं हम, क्योंकि हमारे चैप्टर में भी ये सेपरेटली गवर्नर के लिए तो नहीं दी हुई, तो ये कुछ नई इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, आपको पता है. बट इस तरीके से जब आप लिंकअप करते हो तो फिर आंसर के टाइम पे भी उसी तरीके से माइंड सिमुलेट होता है सोचने के लिए, ठीक है? व्हेन इंडिया वाज एडमिनिस्टर्ड बाय, व्हेन इंडिया वाज एडमिनिस्टर्ड बाय द ब्रिटिश क्राउन, द ब्रिटिश क्राउन, comma, provincial, provincial governors were agents of the crown, agents of the crown, functioning under the supervision, the supervision, super लिख के vision, supervision of governor general, governor general. Next line, or rather next point, with the Government of India Act 1935, the governor was now to act in accordance with aid and advice
with aid and advice of ministers of ministers of legislature, but but retained special responsibilities retained special responsibilities and discretionary powers This is the closest relation from historical underpinning that we can relate with the current position of governor in India. Next line, under the parliamentary discretionary power. Next line, under the parliamentary and cabinet systems of governance adopted by the independent India the independent India the governor was envisaged to be envisaged envisaged to be constitutional head of state. ठीक है. Now, how did the post of governor come about? We have understood. Next question is, what are constitutional provisions that talk about governor's role? What all you have covered is Article 154, 155, 200 you have covered. 164 says, 164, that's not what you have written. So you are going to write 164. The governor appoints the CM after an election and COM on the advice of CM. So ये पार्ट कौन देता है, कौन सा आर्टिकल गवर्नर को देता है? 164. देन 163 भी है जो कहता है कि COM of a state with the CM as the head should aid and advise the governor in carrying out his functions. Then there is Article 167, which empowers the governor to ask CM to submit for consideration to the Council of Ministers a decision that was taken without council's consideration. यानी कि अगर कोई डिसीजन सीएम लेके आता है गवर्नर के पास, लेट्स से उसने कैबिनेट से डिस्कस करके दे दिया, तो गवर्नर क्या बोलेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से डिस्कस करके आओ. क्या डिफरेंस है भाई? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बिगर बॉडी है, ठीक है. तो नेक्स्ट है आर्टिकल 200 जिसको हमने लिख लिया है. सो आई एम गोइंग टू रिपीट. एवरी बिल पास्ड इन असेंबली हैज टू बी सेंट टू द, should I dictate? No, okay. Has to be sent to the governor, after which he has 4 options. Repeat one by one. First of all, give assent. Second, withhold. Third, president's consideration. Fourth, reconsideration. Fine. So you know it, right? Okay.
Then what are the provisions available regarding Lieutenant Governor? It's Article 239. So subheading में लिख लो provisions regarding Lieutenant Governor, या फिर सिर्फ Lieutenant Governor भी लिख सकते हो. हाँ, नीचे पॉइंट लिखोगे Article 239. Each UT Union Territory will be administered by the president through an administrator appointed by him. Next line में लिखेंगे the administrators in some UTs are designated as Lieutenant Governors. अब पूरा लिखने की जगह LT.Governor भी लिख सकते हो. तो यहाँ पे मैं बोल रही हूँ डेजिग्नेटेड, तो क्या आप अपनी मर्जी से ऑल्टरनेटिवली उस एडमिनिस्ट्रेटर को लेफ्टिनेंट गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर या गवर्नर बोल सकते हो? नहीं, ये एक डेजिग्नेशन है. कौन देता है? गवर्नमेंट देती है. ठीक है, तो जो एलजी है सिर्फ वही एलजी है, हर कोई एलजी नहीं है. ठीक है, कुछ लोग सैमसंग भी हैं. ठीक है, चलो. तो the administrator in some UTs are okay, actually LG and Samsung are two companies of appliances, electronic appliances. Yeah. ठीक, चलो. That's a good debate which should not be carried out right now in the polity current affairs class, right? Okay. The administrators in some UTs are designated as Lieutenant Governors as for the NCT of Delhi. Bracket में लिखेंगे Article 239. Article 239 इस तरीके से लिखेंगे, कैपिटल एज दो, ए. नेक्स्ट लाइन में the Lieutenant Governor of Delhi also acts on the advice of COM except on the subjects of कौन से? Land, police order, public order and police. Subjects of police, public order and land. Police, public order and land. Police, comma, public order and land. ठीक है. Next line में in case of a difference of opinion with the ministers, he would have to consult the president. Fine. ठीक है, तो दो केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट के जो मैं अब कोट करने वाली हूँ, वर्ड बाय वर्ड, लिखना नहीं है. ठीक है, वी हैव कवर्ड देम. शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, it was in 1974. The Supreme Court said that the President and Governor shall exercise their formal constitutional powers only in accordance with the advice of their ministers. Formal constitutional powers. But then the fact that Constitution gives them discretion as well as situation gives them discretion, also
is affirmed by the same statement while it has not been said. It is implied, reading between the lines. ठीक है, मतलब उन्होंने ये अफर्म कर दिया कि जो फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन पावर्स है ना वो मिनिस्टर्स की एडवाइस पे करेंगे, यानी कि कुछ और भी पावर्स हैं जब आप इतना स्पेसिफाई कर रहे हो, यानी कि देयर इज अ रूम फॉर alternating available, which is discretion, right? So there is affirmation of discretion, there is affirmation of constitution inherent in this statement, and it's the constitution which is giving the governor a lot of discretion. Fine. Next is SR Bomai case 1994. After 2 decades, the imposition of president's rule was talked about in the SR Bomai case, and the Supreme Court said that there shall be president's rule only in case of breakdown of constitutional machinery. And the Supreme Court also said that to test the majority, to test the confidence, to test the majority is to be done only on the floor of the house, and that is the only forum, correct forum to do so, and not the subjective judgment of governor, subjective opinion of गवर्नर. तो जस्ट बिकॉज गवर्नर को ऐसा लगता है कि मेजॉरिटी नहीं है, वो प्रेसिडेंट्स रूल अप्लाई करने के लिए रिपोर्ट भेज दे, पहले उसे टेस्ट करना पड़ेगा कि ये जो उसकी हाइपोथेसिस है वो प्रूव भी हो रही है या नहीं. हाइपोथेसिस क्या होता है? हाँ, कोई हम चीज़ अज्यूम कर रहे हैं, फिर हम उस पर रिसर्च करते हैं कि वो सही भी है, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू पता करते हैं कि वो सही है कि नहीं है. ठीक है, तो अब अगर कोई चीज अज्यूम कर रहे हो तो एक हाइपोथेसिस हो गई, राइट? चलो ठीक है. देन पॉलिटिकल क्राइसिस ऑफ अरुणाचल प्रदेश के बारे में आप लिख लो, क्योंकि वो आपके लिए नई इन्फॉर्मेशन है. ठीक है, तो हम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का की बात लिख सकते हैं, अगर आप चाहो तो पॉलिटिकल बात आप स्किप कर सकते हो. ठीक है, हाउएवर सुप्रीम कोर्ट का कॉन्टेक्स्ट आपको तब तक याद नहीं आएगा अगर आप लेटर डेज में इसे पढ़ोगे, जब तक आपके पास पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन ना हो. ठीक है, तो मैं पूरा डिक्टेट करूंगी, डिस्क्रिशन इज योर्स. ठीक है, द गवर्नर एक्टिंग विदाउट, द गवर्नर, सब हेडिंग हम डालेंगे पॉलिटिकल क्राइसिस इन अरुणाचल प्रदेश 2015. पॉलिटिकल क्राइसिस इन अरुणाचल प्रदेश 2015. सो गवर्नर एक्टिंग विदाउट, गवर्नर acting without the advice of CM, the advice of CM advanced the assembly session and listed removal of speaker as agenda. Next line, the Supreme Court, just write SC, the Supreme Court held that the governor's move as violation of what? Constitution. Next line, the Supreme Court highlighted that the area for exercise of governor's discretion is limited. Exercise of governor's discretion is limited. इसके बाद कमीशंस हैं, ये भी आपको नहीं लिखनी है, मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ. सरकारिया कमीशन 1988. I just write political crisis in Arunachal Pradesh. ये अरुणाचल प्रदेश, just let me look at it. I don't want to dictate anything wrong, so just give me a minute. No, I don't think so.
या यू आर राइट, केस लॉ ही पढ़वा दिया पूरा। ठीक है ठीक है, नबम रेबिया केस अरुणाचल प्रदेश का ही केस है, जिसमें गवर्नर ने प्रीपोन कर दिया था कॉलिंग ऑफ असेंबलीज मीटिंग। ठीक है ओके। सरकारिया कमीशन 1988, it would not be desirable to appoint a governor who is member of ruling party, सरकारिया कमीशन ने बोला था। कुछ नया है तो लिख लो, लिखोगे ये बात नहीं की है ना पहले हमने, लिख लो। It would not be desirable to appoint a governor, it would not be desirable to appoint a governor who is a member of ruling party, who is a member of ruling party at the center in a state where an opposition party is governing, in a state where an opposition party is governing. It would not be desirable to appoint a governor who is a member of ruling party at the center in a state where an opposition party is governing. यानी कि ऐसी पार्टी सेंटर में जो रूल करी है उसका कोई भी मेंबर ऐसे स्टेट में गवर्नर अपॉइंट नहीं किया जाना चाहिए जहां पे कोई ऑपोजिशन पार्टी रूल कर रही हो। नेक्स्ट लाइन, इट सेड दैट द गवर्नर अपॉइंटी शुड बी डिटैच्ड, the governor appointee should be detached outsider and a person of eminence in some walks of life, then your next cases, Punchi Commission 2007. Next commission is Punchi Commission 2007. Governors were expected to be independent. And to act in a manner devoid of any political consideration. Governors were expected to be independent and to act in a manner devoid of any political consideration. एक थोड़ा और पेशेंस हो तो एक लास्ट हमारा टॉपिक रह गया, इसका कंप्लीट करते हैं तो फेडरलिज्म से हम आगे बढ़ पाएंगे। थोड़ा सा ज़्यादा नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। प्लेजर, डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर ऑफ गवर्नर, थक गए बहुत ज़्यादा, नहीं हो पाएगा। कौन सी क्लास थी सुबह? चलो इसके बाद पक्का रेस्ट कर लेना, ठीक है। हाँ तो अब तभी आप इतने एक्सपर्ट हो ना, तो गिव योरसेल्फ सम क्रेडिट नो। मुझे लगता है कि अगर आप कंप्लीट कर लोगे ना तो एक कंक्लूड हो जाएगा फेडरलिज्म, ठीक है। ठीक है, तो स्टोरी क्या है? स्टोरी से पहले चाहिए न्यूज स्टेटमेंट। केरला गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान gave an indirect threat that he can independently dismiss the ministers of the state. आरिफ खान याद है, कल तक बहुत गिवर थे, अभी वो टेकर हैं, ठीक है। किसकी पोजीशन ले लेंगे? एमपी की। गिवर कैसे थे वो? सीएम को बोल रहे थे कि आओ आप चांसलर की सीट पे बैठ जाओ, हमको चाहिए नहीं है ना। चलो अब यहाँ पे स्टोरी पूरी कवर करेंगे जो कि आपकी यूपीएससी सीएससी से रिलेटेड नहीं है, बट क्योंकि इंटरेस्टिंग है, ठीक है, तो हम कवर कर लेंगे। देन इज द गवर्नर्स क्लेम राइट, क्या वो सच में इंडिपेंडेंटली डिसमिस कर सकता है मिनिस्टर्स को? एंड व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस कन्फ्रंटेशन, कि ये हुआ क्यों, ये क्लैश क्यों हुआ, कन्फ्रंटेशन क्लैश क्यों हुआ ये, ठीक है। तो अगेन जैसे कि मैंने बोला था, इसमें बहुत कुछ लिखने के लिए नहीं है, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हम कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो स्टोरी ये थी कि केरला गवर्नर एक लॉक हो गया एक स्टैंड ऑफ में विद इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ केरला, ठीक है।
और बहुत सारे रेंज ऑफ इश्यूज की वजह से ये स्टैंड ऑफ उन दोनों में देखने को मिला, इंक्लूडिंग अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट रन यूनिवर्सिटीज इन केरला। रिमेंबर कि बहुत सारा पॉलिटिसाइजेशन हो रहा था, तो गवर्नर की जो चांसलरशिप है ना, उसकी जो रिस्पेक्ट है, उसका जो रिगार्ड है, वो हार्म हो रहा था, ठीक है, जिसकी वजह से गवर्नर बहुत सारे क्लैशेस में थे, अलग अलग स्टेटमेंट्स दे रहे थे, चीफ मिनिस्टर को इनवाइट करे थे कि आप चांसलर की पोजीशन ले लो एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। देन he threatened to sack the ministers, as in dismiss, suspend the ministers whose statements lowered the dignity of his office, as their statements can invite action including withdrawal of pleasure। जैसे गवर्नर जो थे वो कर रहे थे, स्टेटमेंट दे रहे थे सीएम के लिए कि आप आ जाओ पोजीशन पे, बैठ जाओ चांसलर की, आप अज्यूम कर लो पोजीशन, मुझे तो चाहिए नहीं, ठीक है, क्योंकि आप पॉलिटिसाइजेशन करे हो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ का। वैसे ही सामने से भी रिटेलिएशन आ रही थी। अब कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी आई कि उनको लगा कि ये तो मुझे डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, मेरी पोजीशन को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, गवर्नर की पोजीशन को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो अब जो उन्होंने तौहीन कर दी थी, तो उन्होंने बोला कि अगर इस तरीके से तौहीन करोगे तो मैं आपको डिसमिस कर दूंगा, हटा दूंगा आपकी प्लेस से, ठीक है, क्योंकि विड्रॉल ऑफ प्लेजर को लीड कर सकता है, क्योंकि आप मुझे डिसप्लीज कर रहे हो, आप मेरा प्लेजर हैम्पर कर रहे हो, तो अगर मैं डिसप्लीज हो गया तो विड्रॉल ऑफ प्लेजर कर लूंगा, जिसकी वजह से आपका जो पोजीशन है वो चला जाएगा, ठीक है। अब क्या गवर्नर का क्लेम यहाँ पे राइट है? आपको क्या लगता है, वो कर सकता है ऐसा? So Kerala governor's claim is neither keeping with the dignity of his own office, तो वही अभी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं अपने ऑफिस को, एंड नॉर इन लाइन विद द कॉन्स्टिट्यूशन, वो नहीं कर सकते, ठीक है। आर्टिकल 164 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये बोलता है कि सीएम शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर एंड अदर मिनिस्टर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द सीएम्स एडवाइस, ठीक है। इट ऑल्सो एड्स, the 64th article also adds that the ministers shall hold office during pleasure of the governor, जिस वजह से वो कह रहा है कि मैं रिमूवल ऑफ प्लेजर कर सकता हूँ, ठीक है। देयर हैव बीन इंस्टांसेस इवन अर्लियर ऑफ गवर्नर्स डिसमिसिंग द सीएम्स, बट दोज वर रिलेटेड टू constitutional situations and not because there was some exchange, verbal spat between the governor and the party legislatures, right, in which legislative majority of course is one constitutional case, major case of the incumbent government, the government which is ruling। तो जब हम आप इलेक्शंस में सोचते हो ना कि एंटी इनकम्बेंसी, एंड जब एक पार्टी रूलिंग पार्टी होती है ना, तो लोग इलेक्शन में मीडिया बोल रहा होता है कि एंटी इनकम्बेंसी फेस करनी पड़ेगी, एज एन उनके रूल से जब लोग खुश नहीं होते, चेंज लाना चाहते हैं, दैट इज एंटी इनकम्बेंसी। तो जो रूलिंग पार्टी है उसे इनकम्बेंट गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इनकम्बेंट मिनिस्ट्री जो भी है, अगर वो किसी भी डाउट में हो उससे रिलेटेड, या मेजॉरिटी प्रूव ना कर पाए, तब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के ब्रेकडाउन की वजह से गवर्नर अपना प्लेजर विड्रॉ करता है। तो यानी कि प्लेजर विड्रॉल के लिए एक प्रॉपर ऑब्जेक्टिव रीजन का प्रेजेंस होना जरूरी है, ठीक है। इट इज ऑल्सो नाउ जुडिशियली डिटरमाइंड दैट क्वेश्चन ऑफ मेजॉरिटी, जुडिशियली ने बोला था कि क्वेश्चन ऑफ मेजॉरिटी के लिए सिर्फ एक ही सही फोरम है, कौन सा फोरम? फ्लोर ऑफ द हाउस, ठीक है। ओनली ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली थ्रू अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है। या तो वो हारेंगे या तो वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस विन करेंगे, ठीक है। बट गवर्नर कैन डिसाइड ऑन हिज ओन? नो। सो अगेन प्लेजर ऑफ द governor should be supported by a objective reason, right? Nothing in article means that the governor may independently dismiss a minister, while the statement, news statement which you should write, because this is something which can come in mains directly if required, if UPSC willing, right? यहाँ पे जो नोट करने वाली बात है वो है द प्लेजर डॉक्ट्राइन, तो हम नोट करके लिखेंगे NOTE नोट, द प्लेजर डॉक्ट्राइन, ब्रैकेट में प्लेजर ऑफ गवर्नर, द प्लेजर डॉक्ट्राइन, ब्रैकेट प्लेजर ऑफ गवर्नर, ब्रैकेट क्लोज, exists only in a constitutional sense and is exercised by constitutional sense and is exercised by
the governor only on the advice of CM. The governor only on the advice of CM or other discretions under constitution or discretions under constitution. Now किस कॉन्टेक्स्ट में ये सारी कन्फ्रंटेशंस देखने को मिली? तो क्या क्या हुआ? सबसे पहले हुआ ये कि यूनिवर्सिटीज़ के जो लॉज अमेंड करने का जो बिल था वो 2022 में ही अभी केरला में आया था. गवर्नर ने उसको असेंट देने से मना कर दिया. ही वॉज रिलेक्टेंट इन गिविंग द असेंट्स. देन हायर एजुकेशन मिनिस्टर के कुछ रिमार्क्स थे वहाँ के, दैट द गवर्नर शुड बी रिटर्निंग द बिल फॉर रिकन्सिडरेशन. अगर उनको नहीं करना है तो अपने पास क्यों रख लिया है उन्होंने? विद होल्डिंग हिज अप्रूवल इज that too indefinitely. It was the reason why this comment was triggered from the हायर एजुकेशन मिनिस्टर. एंड वो ये बताने की, गवर्नर को ये परेशानी है कि वो मुझे बताने की कोशिश करें कि मुझे क्या करना चाहिए. आई एम अज्यूमिंग द ऑफिस, आई एम eligible for this post, which is why I am in this office. Nobody should come and tell me what should I do. This is toheen of my office, right? Then while the governor may differ with the contents of bill and may exercise available constitutional way, that is he can suggest some amendments, he should not use the power to stall the legislation, was the further comment. And the minister went on to say that the stalling legislation is absolutely undesirable to them, the elected government. That is they are trying to say it is undesirable to the people, right? Now what are the legal courses in this case? ठीक है, कौन गलत है कौन सही है in terms of legality. So जहाँ तक चांसलर के ऑफिस की बात है, गवर्नर के, द ऑफिस ऑफ चांसलर इट वाज क्रिएटेड बाय अ स्टैट्यूट. हर एक, क्योंकि यूनिवर्सिटी एक स्टैट्यूट से क्रिएट होती है, एक एक्ट बनता है, एक स्टैट्यूट बनता है. तो यूनिवर्सिटी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टैट्यूटरी होता है, ठीक है. तो इसी तरीके से जो चांसलर की पोजीशन हो गई यूनिवर्सिटी में, वो एक स्टैट्यूट के थ्रू हो गई, which establishes a university. Statute means law, right? The act. The legislature is equally competent to curtail the chancellor's power if it wants to. चांसलर गवर्नर को ही रखो, बट अगर आप कुछ स्पेसिफाई कर रहे हो एक्ट में, यूनिवर्सिटी कॉन्स्टिट्यूट करते वक्त चांसलर की किसी पावर को लिमिट कर रहे हो, ये एक लूप होल है जो लेजिस्लेचर के जो एम्बिट है उसमें आता है, उनकी पावर में आता है, ठीक है. It is competent to do so. Then, or even it can abolish the system of having the governor as a chancellor itself, using a statute of establishing the university at first. However, we have covered that what UGC says about it, and if anybody is going to want the funding from UGC, definitely it has to follow the mandate, right? Even MM Punchi Commission was there, which believed and reviewed the center-state relations and believed that the governor should not be a burden, and with the role of chancellor he becomes a burden for government, right? And Punchi Commission was saying that do not burden the governor with the role of chancellor, do not give him. So Punchi Commission was in favor of not having the chancellor's position with the governor. नहीं दो उनको चलेगा, ठीक है. And now जब इम्प्लीमेंट करने का टाइम था रिकमेंडेशन को, इस प्रिंसिपल के, गवर्नर जो है वो बहुत ही एंडेंजर्ड एंड एग्रेसिव बिहेवियर करते हैं जब उनको लगता है कि उनकी इस पोजीशन पे किसी भी तरीके का अटैक आता है, ठीक है. एंड बहुत एग्जेजरेट करके एक नोशन ये प्रेजेंट किया जाता है गवर्नर से कि देयर ओन रोल ऑफ चांसलर as if it's a constitutional role and taking it away would be a constitutional default, right? So governors are very sensitive about role of chancellor somehow. They are governors, but so much sensitivity they are showing for a ex officio position, right, of chancellors. A lot of sensitivity is being seen, right? So they are expected to defend the constitution, they say, but please remember it is not a constitutional position. Position of governor is the constitutional one, right? And they may use their power to caution the elected regimes as a governor, but they cannot do nothing as a chancellor of a university,
right? And their powers of to caution the elected regime against violating the constitution, but this does not mean that they can use the absence of time frame for the decision making and the discretionary space given to them to actually stall the functions or function as a parallel power in at the state level. अब यहाँ पे सेंसिटिविटी किस तरफ है? चांसलर की पोजीशन की तरफ. बिल क्यों रोक रहे हैं? चांसलर की पोजीशंस की पार लिमिट करने की कोशिश कर रही है स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, तो वो क्या बोल रहे हैं? पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है यूनिवर्सिटीज का. ऐसा करो, चांसलरशिप तुम ही ले लो. और मैंने क्या किया? गवर्नर की पोजीशन पे बैठ के मैंने वो बिल इंडेफिनिटली अपने पास रख लिया, यानी कि मैंने एक लेजिस्लेशन स्टॉल कर दी. तो यहाँ पे मैं अपना कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट है उसको यूज कर रहा हूँ कि मेरे पास एक वे आउट है कि उस लेजिस्लेशन को बिल्कुल भी पास ना होने दूं, पर मैं सेंसिटिव किस तरफ हूँ? चांसलर की पोजीशन की तरफ. ठीक है, और जो मैं ये राइट अपना इंडेफिनिटली यूज कर रहा हूँ, ये मैं एक तो फंक्शनिंग ऑफ लेजिस्लेचर स्टॉल कर रहा हूँ और दूसरा अपना पैरेलल गवर्नमेंट रन करने की कोशिश कर रहा हूँ बाय नॉट अलाउइंग द लेजिस्लेचर टू फंक्शन प्रॉपरली. ठीक है, तो अल्टीमेटली चल किसकी रही है? गवर्नर की. तो ये पूरा कॉन्टेक्स्ट है कन्फ्रंटेशन का. अब इसमें कौन जीता कौन हारा की बात नहीं है, हमने इस बारे में ऑलरेडी बहुत सारी डिस्कशन कर रखी है ऑलरेडी. ठीक है, यू नो द वे आउट्स, यू नो द solutions also. The point of this discussion was only to have you this understanding कि context क्या था पूरी confrontation का. ठीक है, कि confrontation इसलिए है क्योंकि governor is having over sensitivity towards the position of chancellor. However, it is under the power of legislature कि वो किसी statute के through चलो governor को chancellorship से नहीं हटा सकती, जो UGC ने बोला था. रिमेंबर, UGC ने ये तो नहीं बोला कि चांसलर की पावर्स आप कर्टेल नहीं कर सकते हो, आप एक स्टेट यूनिवर्सिटी बना रहे हो, पर चांसलर की पावर आप लिमिट तो कर सकते हो. चांसलर गवर्नर को रहने दो, बट गवर्नर इज बीइंग सेंसिटिव अबाउट इट एंड वो बोल रहे पॉलिटिसाइजेशन होगा इस तरीके से. ठीक है, तो कुछ वर्बल स्पैट यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाता है जिसकी वजह से उन्होंने लेजिस्लेशन स्टॉल कर ली है. ठीक है, तो यहाँ पे हालांकि बहुत सारा सपोर्ट हमने गवर्नर को दिखाया था जब हम पहले डिस्कशन कर रहे थे, बट लुक एट द इंटेंट्स. ठीक है, तो ये कॉन्टेक्स्ट था पूरी कॉन्फ्रंटेशन का एंड दिस वाज अबाउट दिस न्यूज. ठीक है, इससे आगे का इसके पीछे का पूरा कॉन्टेक्स्ट हम ऑलरेडी कल कवर कर चुके हैं बहुत ज़्यादा रिपीटेटिवली. ठीक है, जैसे आज कुछ चीज़ें रिपीटेटिवली की हैं वैसे ही कल भी की थी. फाइन, ओके, चलो, दिस इज इट इन टुडेज क्लास. आई विल सी यू अगेन. अनदर लार्जर अम्ब्रेला टॉपिक फेडरलिज्म इज डन हियर फॉर द पास्ट 1 year. फाइन. सो लास्ट टाइम फेडरल इश्यूज या फेडरलिज्म के अराउंड जो भी इश्यूज थे हमने 3 सेशंस लेके उनको कवर किया था, जिसमें कि एक सेशन बहुत स्पेसिफिक टू गवर्नर था. उससे पहले स्टेट पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ बातें थी, है ना, और उसके बीच में जो हमारा सेकेंड सेशन था वो एजुकेशन के अराउंड रिवॉल्व करता था. बेसिकली चांसलरशिप जो गवर्नर की एक एक्स ऑफिशियो पोजीशन होती है, ज़्यादातर वहाँ पे जो अटैक्स हो रहे थे वहाँ पे हम डील कर रहे थे, है ना. आज का सेशन लेने से पहले एक सिंपल सी इंस्ट्रक्शन है कि कुछ लोग ऑनलाइन क्लासेस हमारी ज्वाइन करते हैं. ठीक है, जब आप लोगों के मैं डाउट्स एंटरटेन कर रही होती हूँ तो उनको आप लोगों की तो आवाज़ नहीं जाती है, तो उनको कॉन्टेक्स्ट रिलेट करना थोड़ा मुश्किल रहता है. तो एक हम क्लास का रूल बनाएंगे. मुझे सर ने बोला है कि ऐसा था कल की क्लास में, तो एक क्लास का रूल बनाएंगे कि आप सभी की नोटबुक्स में मार्जिन्स हैं. ठीक है, जब हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आप जैसे ही आपको डाउट आता है आप उसको अपने नोटबुक के मार्जिन में लिखो. जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चंस एनलिस्टेड रखती हूँ और मैं इंश्योर करती हूँ कि बाय द एंड ऑफ द डिस्कशन आपको उन क्वेश्चंस के आंसर मिल जाने चाहिए, है ना. तो बाय द एंड ऑफ डिस्कशन फॉर दैट टॉपिक आपको अपने उस पर्टिकुलर डाउट का आंसर मिल जाना चाहिए. बट हो सकता है कि जब आपको मिडवे वो डाउट आए, तो जब हमारी डिस्कशन स्टिल पेंडिंग है उस टॉपिक पे, तो हो सकता है वो डाउट आपका एनीवेज क्लियर हो जाए, है ना, बिना आपके पूछे. तो जब आप लिखते जाएंगे मार्जिन पे, टुवर्ड्स द एंड जब मैं पूछती हूँ अब ये चारों क्वेश्चंस हो चुके हैं या ये जो एनलिस्टेड क्वेश्चंस है वो हो चुके हैं, आपका कोई क्वेश्चन है, तब हम वो डाउट एंटरटेन करेंगे. ठीक है, चलो.
तो आज के जो टॉपिक्स हैं वो फेडरल इश्यूज से नहीं है, मेनली स्टेट लेवल इश्यूज हैं जो कि हमें इम्पोर्टेंस देते हैं विद रिस्पेक्ट टू यूपीएससी सीएससी सर्टेन टॉपिक्स, जैसे कि तमिलनाडु में रिजर्वेशन का इशू, महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली में जो पॉलिटिक्स प्ले हुआ उसका इशू, ठीक है, वो हमारे लिए यूपीएससी से रिलेटेड। अच्छा, हर स्टेट इशू भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होता, बट आज के जो 4 टॉपिक हैं पिछले 1 साल में वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे कि एक उनका इम्पैक्ट था नेशन वाइड इतना कि एक क्वेश्चन इंस्पायर होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो हो जाती है, ठीक है। अब ये जो तमिलनाडु का फर्स्ट ऑफ ऑल हम टेकअप कर रहे हैं टॉपिक, इट इज़ अबाउट स्पेशल रिजर्वेशन एक्ट ऑफ 2021। पहली ब्रीफ इंफॉर्मेशन ये है कि एक तो ये एक्ट जो है वो अब कॉश्ड है सुप्रीम कोर्ट, पहले मद्रास हाई कोर्ट ने और फिर सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट का डिसीजन अपहेल्ड करते हुए इस रिजर्वेशन को वॉइड कर दिया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया है, ठीक है। उसके पीछे काफ़ी सारे रीजंस हैं, देयर आर मेनी रीजंस। तो हिस्ट्री तमिलनाडु में काफ़ी बड़ी रही है विद रिस्पेक्ट टू रिजर्वेशंस। एक वन्यार कम्युनिटी है वहाँ पे, उसके बारे में, फिर मोस्ट बैकवर्ड क्लास एमबीसी, इस कम्युनिटी के इस कैटेगरी के बारे में, ये एक अलग कैटेगरी है जो आपको एससी एसटी ओबीसी नेशन वाइड रिजर्वेशंस में देखने को मिलता है, उससे डिफरेंट। जैसे कि एक एसईबीसी भी कम्युनिटी होती है स्टेट्स लाइक ओडिशा में, जहाँ पे ये अलग कैटेगरी है अपार्ट फ्रॉम एससी एसटी एंड ओबीसी। इवन इट्स डिफरेंट फ्रॉम ईडब्ल्यूएस, जो मतलब सेंट्रली आप सुनते हो, उनसे भी अलग स्टेट लेवल पे ही इन कैटेगरीज का रिजर्वेशन दिया जाता है। अब इन कम्युनिटीज़ के चलते अलग अलग स्टेट्स में आपको पता चलेगा कि बियॉन्ड 50% जो आपको लगता है कैपिंग है, उससे भी ज़्यादा रिजर्वेशन देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक हमारे पास इंदिरा शाह केस के अंदर कैपिंग है ना 50% का रिजर्वेशन के लिए, बट उसके बियॉन्ड भी, जैसे झारखंड में अप टू 60% एंड इनफैक्ट तमिलनाडु में 69% का रिजर्वेशन आज भी है। डिस्पाइट ऑफ दिस एक्ट, ये कुछ और ही थोड़ा डिफरेंट केस था जो अभी अभी क्वॉश हुआ है, बट अदरवाइज भी एग्जिस्ट करता है 69% ऑफ रिजर्वेशन तमिलनाडु में, यानी कि सिर्फ 31% ओपन कॉम्पिटिशन के लिए वहाँ पे अवेलेबल रहता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड जॉब्स में, ठीक है। तो यहाँ पे जो वन्यार कम्युनिटी है वहाँ से मैं बात करना स्टार्ट करूँगी। कम्युनिटी है एक जो कि मोस्टली कॉन्सेंट्रेटेड है नदर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तमिलनाडु में। सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स में उनका इतना ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को नहीं मिलता, हालांकि नदर्न डिस्ट्रिक्ट्स में टोटल पॉपुलेशन का 25% कॉन्सेंट्रेशन वनियार्स का ही है, यानी कि नदर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तमिलनाडु में जितना भी पॉपुलेशन है उसमें से 25% वन्यार कम्युनिटी का है, यानी कि एक अच्छा खासा वोट बैंक आपको नज़र आता है। तो यहाँ पे जब इंडिपेंडेंस के बाद जब सबसे पहले रिजर्वेशंस की डिमांड्स होना शुरू हुई थी अलग अलग कम्युनिटीज़ के थ्रू, अच्छा ये तो हमें पहले से ही पता था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है रिजर्वेशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ही ये बातें हुई थी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने सपोर्ट किया था, है ना। लेकिन उसके बाद कुछ कम्युनिटीज़ ने सेपरेटली डिमांड्स भी की हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल एजिटेशंस हमें देखने को मिले हैं। तो वन्यार कम्युनिटी इन तमिलनाडु वाज वन ऑफ द फर्स्ट वंस टू मेक दिस डिमांड, ठीक है। एंड उसके चलते क्या हुआ कि इवेंचुअली उस टाइम जो वहाँ की गवर्नमेंट थी उन्होंने एक 20% रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस किया था, 20% रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस किया था। उससे पहले वहाँ पे जो रिजर्वेशन था वो इस तरीके का नहीं था कि कोई स्टेट स्पेसिफिक रिजर्वेशन चलता आ रहा हो, ठीक है। तो वहाँ पे फिर एमबीसी कम्युनिटी इंट्रोड्यूस हुई जिसका फुल फॉर्म है मोस्ट बैकवर्ड क्लास, ठीक है। उस मोस्ट बैकवर्ड क्लास कम्युनिटी में वन्यार्स के, हालांकि अच्छा पॉलिटिकल अपहीवल क्या हुआ था, एक बार उन्होंने चक्का जाम भी किया था, ये सब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जस्ट इन केस यू आर वेरी इंटरेस्टेड उस टाइम की न्यूज़ जाके गूगल कर सकते हो, बट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट आज की स्टोरी में ये है कि उस टाइम पे उनको सिर्फ वन्यार कम्युनिटीज़ को नहीं मिला था, हालांकि अपहीवल उनका था। तो बहुत सारी मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटीज़ जो कि एससी एसटी
ओबीसी की कैटेगरी में नहीं आती, जिनको एससी की कैटेगरी में नहीं लेके आ सकते। अच्छा, ओबीसी उसके भी बाद आया था मंडल कमीशन के टाइम पे, पर जिनको एससी की कैटेगरी में नहीं लेके आ सकते थे, रीजन क्या था कि क्यों नहीं लेके आ सकते थे उनको, एससीज में क्यों नहीं नोटिफाई कर सकते थे? बिकॉज अनटचेबिलिटी उनके साथ प्रैक्टिस नहीं होती थी। ठीक है, एससीज के साथ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस होती थी। एससीज में उन कम्युनिटीज को ज़्यादातर इनलिस्ट किया गया था जिन्होंने ये प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी फेस की थी हिस्टोरिकल टाइम्स में। जबकि हम जिन कम्युनिटीज़ की बात कर रहे थे अंडर एमबीसीज, उनके साथ किसी भी तरीके का इस तरीके का प्रैक्टिस नहीं देखने को मिलता था। हालांकि उनके जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस था वो उनको बैकवर्ड बनाता था। उसका रीज़न क्या था कि ये जो बनियार कम्युनिटी थी मोस्टली फार्मर्स, पीजेंट्स, ठीक है, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, इस तरीके की ऑक्यूपेशन से बिलोंग करते थे, जिसके चलते फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ना होने के चलते इवेंचुअली वो बैकवर्ड रह जा रहे थे अपने एजुकेशनल स्टेटस के को लेके भी। एंड उसी तरीके से आपको पॉवर्टी का विशियस साइकिल समझ में आता है कि कैसे वो अपलिफ्ट नहीं हो पा रहे थे। ठीक है, तो वो अपलिफ्ट करने के लिए उनको रिजर्वेशन की ज़रूरत थी, उनकी डिमांड थी। हालांकि उनके साथ जो हिस्टोरिकली हम जिस वजह से रिजर्वेशन देते हैं, अब तो हमारे पास ईडब्ल्यूएस आता है, हम इकोनॉमिक को, सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस को इंपॉर्टेंस देते हैं, पर हिस्टोरिकली हम कास्ट सिस्टम को ओवरकम करना चाहते थे ना इस रिजर्वेशन से। जो हिस्टोरिकली कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होने के चलते लोगों ने फेस किया था, तो हमने उस तरीके से रिजर्वेशंस का बैकड्रॉप रखा था कि कास्ट के ना चलते हुए जो लोग आगे नहीं आ पाते थे उनके साथ। फिर हम जब फोकस करने लगे सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, तब से ये वनियार कम्युनिटी का एक फोकस रखते हुए इशू को एमबीसी कम्युनिटीज़ इंट्रोड्यूस हुई तमिलनाडु में। हालांकि इन एमबीसी कम्युनिटीज़ में सिर्फ वनियार कम्युनिटी नहीं थी, अपार्ट फ्रॉम वनियार्स 115 और कम्युनिटीज़ भी थी जो वो 20% रिजर्वेशन जो एमबीसीज के लिए रखा गया था उसमें इंक्लूड होती थी। इस रिजर्वेशन को इंट्रोड्यूस करने के बाद जो रिजर्वेशन का परसेंटेज था तमिलनाडु में वो 69% हो गया था। यानी कि ये वाले एक्ट की वजह से नहीं हुआ है 69%, 69% ऑलरेडी था और आज भी है। क्यों है? क्योंकि इस पर्टिकुलर एक्ट को 9th शेड्यूल में प्रेसिडेंट के पास कंसल्टेशन के लिए भेजा गया, एंड प्रेसिडेंट के पास कंसल्टेशन के बाद प्रेसिडेंट ने अप्रूव करके इस एक्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट ने 9th शेड्यूल में इंक्लूड करने का अप्रूवल दे दिया था। जब गवर्नर के पास एक एक्ट असेंट के लिए जाता है तो उन्होंने प्रेसिडेंट को कंसिडर करने के लिए भेजा, प्रेसिडेंट ने अप्रूवल दे दिया कि इसको 9th शेड्यूल में रख लिया जाए, क्योंकि नहीं रखा जाएगा तो ये सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा और ये कैपिंग तो वायलेट कर रहा है 50% की। पर कोर्ट्स ने भी उसके बाद क्या ऑब्जर्व किया कि अगर आपके पास रीजनेबल ग्राउंड्स हैं, एक स्पेसिफाइड डेटा है जो सपोर्ट करता है स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे नहीं, स्टेट लेवल पे आपको थोड़ा रिजर्वेशन का कैप ब्रीच करना पड़ता है, यू हैव टू गो बियॉन्ड इट, तो सुप्रीम कोर्ट उसे एक्सेप्ट करता है। द नीड इज कि आपके पास प्रॉपर डेटा हो, तो कोर्ट्स उसे एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ इस कम्युनिटी को रिक्वायरमेंट है। हमने भी तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी इंट्रोड्यूस किया है ना, रिजर्वेशन का 50% कैप तो पहले से ही है, राइट? और ये हाँ आपका ये करंट अफेयर पहले भी तब ईडब्ल्यूएस कम्युनिटी इंट्रोड्यूस हुई थी 10% के लिए रिजर्वेशन के लिए, तब भी ये करंट अफेयर बहुत न्यूज़ में था, बट इसकी नीड रिकॉग्नाइज की गई एंड अभी इम्प्लीमेंटेशन में है। ईडब्ल्यूएस कम्युनिटी का रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन में है ना, क्योंकि नीड रिकॉग्नाइज्ड है। बट ये कॉश कर दिया गया क्योंकि जो अब ये जो इलेक्शंस होने वाले थे तमिलनाडु में इस साल हुए हैं इन द बिगनिंग, ठीक है, तो उसके चलते जस्ट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने से कुछ टाइम पहले जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट थी उस टाइम की, उन्होंने ये जल्दी जल्दी में रिजर्वेशन में क्या किया था कि रिमेंबर वो जो 20% का एमबीसी का जो रिजर्वेशन था इंक्लूडिंग वनियार्स प्लस 115 अदर्स, ठीक है, क्योंकि वनियार्स की ये डिमांड चल रही थी। वनियार्स एक अच्छा खासा पॉपुलेशन है तमिलनाडु में, यानी कि एक अच्छा खासा वोट बैंक है, एंड प्रेशर ग्रुप के फॉर्म में जो वनियार कम्युनिटी है वो काफ़ी अच्छे से गवर्नमेंट का सपोर्ट भी मोबिलाइज करने में सक्सेसफुल रहती है, गवर्नमेंट पे प्रेशर क्रिएट कर लेती है, ठीक है, इट कैन क्रिएट इनफ प्रेशर ऑफ गवर्नमेंट ऑन गवर्नमेंट। सो 10.5% from amongst this 20% of MBC reservation
इस एक्ट के चलते दे दिया गया था वन्यार्स को, वन्यार्स एंड इट्स सबकास्ट, मतलब इस कम्युनिटी की जो भी सबकास्ट होंगी उनको 10.5% आउट ऑफ दिस 20%, यानी कि सिर्फ 9.5% किसके लिए रह गया, बाकी 115 के लिए, ऐसा किया गया। तो जब ये चैलेंज हुआ मद्रास हाई कोर्ट में तो उन्होंने भी, अच्छा इससे पहले क्या किया था, ये किया उन्होंने फेब 2021 में। इससे पहले दिसंबर में उन लोगों ने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी, एक कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया था रिटायर्ड हाई कोर्ट जज के अंडर, जिस कमीशन ने अपनी, कोई कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कुछ भी नहीं सबमिट की थी, हालांकि उनको बोला गया था कि डेटा कलेक्ट करें उनके सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में, तो बिना रिपोर्ट की बैकिंग के जल्दी जल्दी में ये रिजर्वेशन दे दिया जस्ट बिफोर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वहाँ पे अप्लाई होता। ठीक है, आचार संहिता यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो इलेक्शन से पहले आपका आता है, जो लग जाए तो उसके बाद आप कुछ भी ऐसा इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते जो पॉपुलर सपोर्ट के लिए आपको फायदा करे, इवन इफ यू आर इन इनकम्बेंट गवर्नमेंट, है ना। तो यहाँ पे जस्ट उससे पहले जल्दी जल्दी में ये एक्ट पास कर दिया गया। जब मद्रास हाई कोर्ट में एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ तो वहाँ पे उन्होंने ये रिकॉग्नाइज किया कि आपके पास कोई एडिक्वेट डेटा नहीं है जिसके चलते हम इस रिजर्वेशन को सही माने। ठीक है, कि आपने 115 कम्युनिटीज एक तरफ और एक वन्यार कम्युनिटी को एक तरफ करके 10.5% रिजर्वेशन दे दिया फ्रॉम विद इन द 20%। अब ये जब 20% का एम्बिट होता है तो सब 116 कम्युनिटीज यानी कि वन्यार प्लस 115 इस 20% में से बेनिफिट करती हैं। बट अगर ये 10.5% सिर्फ वन्यार्स के लिए रख दिया जाए तो पूरी 115 के लिए सिर्फ 9.5 ही शेयर रहता है। ठीक है, ऐसा करने का कोई रीजनेबल ग्राउंड प्रूव नहीं कर पाए, जो गवर्नमेंट थी वो नहीं प्रूव कर पाई, जिसके चलते हाई कोर्ट ने ये रिजर्वेशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया था। अब ऑब्वियसली जब हाई कोर्ट के पास ये चीज़ हो जाती है तो गवर्नमेंट्स को क्या होता है कि हम तो एपेक्स कोर्ट जाएंगे, तो वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट का जो डिसीजन था वो अपहेल्ड करते हुए यही कहा कि आपके पास कोई एडिकेट डेटा नहीं है। हालांकि यू गाइस हैव टू रिकॉग्नाइज कि रिजर्वेशन का जो कैपिंग है वो कई और स्टेट्स में भी ब्रीच हो चुका है और हमारे लिए भी ब्रीच हो चुका है। 50% का जो कैपिंग था इंदिरा शाह वाला, हालांकि वो एग्जिस्ट करता है एक पैरामीटर की तरह, हम उसे अभी भी उसे रेफर करते हैं, बट इफ द क्वेश्चन इज कैन इट बी ब्रीच्ड, यस, है ना। चलो, तो ये था पॉलिटिकल न्यूज। अब हमें यहाँ पे कवर क्या क्या करना है, न्यूज स्टेटमेंट लिखने के बाद क्वेश्चंस में देखते हैं। सो द सुप्रीम कोर्ट हैज क्वॉश्ड द तमिलनाडु स्पेशल रिजर्वेशंस एक्ट ऑफ 2021 on the grounds that it was not based on updated quantifiable data, यानी कि कोई भी ऐसा enough adequate updated क्वांटिटी या डेटा की फॉर्म में आपके पास प्रेजेंट करने के लिए नहीं है जिससे ये प्रूव हो जाए कि हाँ सच में वन्यार कम्युनिटीज इतनी सफर कर रही हैं कि उनको विद इन द ब्रैकेट ऑफ रिजर्वेशन भी स्पेसिफिक 10.5% अलग से पार्क कर देना चाहिए उनके लिए। इस बात को प्रूव करने के लिए कोई भी रिलायबल डेटा आपके पास नहीं है। Now we have to figure out what is the history of reservation in the state of Tamil Nadu. This is what I just told you, the whole story. Fine, we can do it again. Then how Tamil Nadu's reservation stands at 69% despite the 50% quota cap. I have also made you understand the same, but we will write some of the things, right? Then what is the act about? ये जो act था उसने क्या specify करना था, उसकी भी स्टोरी मैंने पूरी ऑलमोस्ट स्टोरी आपको बता दी है। जो हमें स्पेसिफिक डिटेल्स फिल इन करनी होंगी वो हम लिखते जाएंगे, ठीक है। एंड देन व्हाट इज सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, वी आल्सो नो अबाउट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, मोर और लेस यू नो द होल स्टोरी राइट नाउ, फाइन। देन इज इट पॉसिबल फॉर स्टेट्स टू मेक चेंजेस इन द बैकवर्ड क्लासेस लिस्ट, यहाँ पे हमें डिस्कस करना है 102nd अमेंडमेंट। 102nd अमेंडमेंट से क्या हुआ था, नहीं, 102nd अमेंडमेंट से जो एनसीबीसी है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था, ठीक है। एंड 105th अमेंडमेंट, यहाँ पे हमें
इस आंसर को फिगर आउट करना है इन दो अमेंडमेंट से। 102nd अमेंडमेंट में जब प्रेसिडेंट को ये राइट दे दिया गया था कि वो नोटिफाई करेंगे बैकवर्ड क्लासेस, उससे पहले तक स्टेट्स भी करती थी, बट 102nd अमेंडमेंट आने के बाद जिसका मेजर फोकस था एनसीबीसी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने का, उसमें ये भी था एक्ट में कि प्रेसिडेंट नोटिफाई करेंगे, एनसीबीसी प्रेसिडेंट को अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगी, फिर प्रेसिडेंट को अगर अपनी लिस्ट अपडेट करनी होगी तो प्रेसिडेंट नोटिफाई करके किसी भी और कम्युनिटी को उस लिस्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। बट क्योंकि वहाँ पे ये चीज़ लिख दी गई थी कि प्रेसिडेंट नोटिफाई करेंगे, तो आगे प्रॉब्लम ये आई कि इसका मतलब स्टेट से ये राइट ले लिया गया कि वो भी एडिशनल चेंजेस कर सकते हैं बैकवर्ड क्लासेस लिस्ट में अपने लिए स्पेसिफिकली। ऑब्वियसली स्टेट पूरे नेशन के लिए तो करेगी नहीं, है ना। बट देन ये चीज़ उनको रियलाइज हुई मोदी गवर्नमेंट को, एंड 105th अमेंडमेंट उन्होंने लेके आया। बट 105th अमेंडमेंट बाद में आया और ये तमिलनाडु का केस जो मद्रास हाईकोर्ट ने क्वॉश करना था वो पहले कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो स्पेसिफिसिटीज थी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए बात करने की, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के बेसिस पे रिजर्वेशन देने की, तब तक उनको ये वाला राइट नहीं था स्टेट्स को, ठीक है। 105th से ये राइट इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो आज की रियलिटी इस क्वेश्चन की क्या है कि इज इट पॉसिबल फॉर स्टेट्स टू मेक चेंजेस इन बैकवर्ड क्लासेस लिस्ट? क्योंकि 105th अमेंडमेंट आ चुका है एज ऑफ टुडे, तो आज ये पॉसिबल है। बट 102nd अमेंडमेंट के टाइम से ये टेक अवे हो गया था, एंड उससे पहले भी ये पॉसिबल था, ठीक है। हाँ, चलो अब इसमें डिटेल्स हम फिल इन करेंगे वन बाय वन। तो हिस्ट्री क्या रही है तमिलनाडु में, कुछ स्पेसिफिक जो चीज़ें लिखने वाली हैं, जो डिटेल मैंने दी है उसमें कुछ कमीशंस के नेम के साथ हम स्पेसिफिसिटीज एंटर करेंगे। तो पहली बैकवर्ड क्लास कमीशन स्पेसिफिक तमिलनाडु के लिए आई थी 1969 एंड 70 के टाइम पे। 1969 एंड 70 के टाइम पे एन संथानन, somebody's yeah, और इंदिरा शाह ने हमारा कब हुआ था केस 1992 में, ठीक है। तो अभी हम इंदिरा शाह से पहले की बातें कर रहे हैं जब हम ये सब बात करते हैं, ठीक है। इस कमेटी की बात इंदिरा शाह से काफ़ी पहले की बात है, फाइन। ये 1992 आप नोट करके रखोगे क्योंकि 50% की बात उसके बाद आती है। देन उन्होंने क्या सजेस्ट किया था उस टाइम पे कि एक प्रोविजन होना चाहिए, एक टूल फिगर आउट करना चाहिए गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु को। उनकी कमीशन थी, उनको सजेशंस देगी ना, तो उनको सजेस्ट करी थी कि एक टूल फिगर आउट करो कि आप क्रीमी लेयर को ना रिमूव करते जाओ जब आप रिजर्वेशंस देते हो। So the commission said that it is necessary to have a device for removing the top layers. You don't have to write if you don't. It's not so important to write this one, right? Top layers of the communities periodically, which gives us the creamy layer concept for the first time and not the Supreme Court's judgment of Indira Shane, right? क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट सबसे पहले हमें मिला था तमिलनाडु की फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन अंडर एन संथानन, ठीक है। फिर सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन आती है एंड उन्होंने सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन अंबा शंकर was the head of second backward class commission again for तमिलनाडु, जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कि रिजर्वेशन का कंपार्टमेंटलाइजेशन होना चाहिए, कंपार्टमेंटल रिजर्वेशन बाय ग्रुपिंग ऑफ बैकवर्ड क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकवर्डनेस। सो ये जो कैटेगरी वाइज 115 प्लस वनयार्स को रिजर्वेशन दिया था, उसको इस कमेटी ने एक तरीके से अपनी बैकिंग दी थी। हालांकि एट द बैकड्रॉप पॉलिटिकल प्रेशर ऑलरेडी वनयार्स खूब सारा क्रिएट कर रहे थे, ठीक है, जिसमें हम अभी स्टोरी में हम एंटर नहीं हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अप टिल 1971
तो ये वाला जो रिजर्वेशन था, नाउ रिमेंबर दिस, ये इंदिरा शो आने वाला है। एंड 1971 तक, जब तक ये वाली कमेटी ने अपना सपोर्ट नहीं दिखाया था इस कंपार्टमेंटलाइजेशन को एडिशनल रिजर्वेशन के लिए, तो 1971 तक तमिलनाडु में 41% रिजर्वेशन था। 1971 तक तमिलनाडु में 41% रिजर्वेशन था। फिर 69% हो गया, जिसमें से 20% आपका एमबीसी एंड रेस्ट डीएनसी, डी नोटिफाइड कम्युनिटीज के लिए था। ठीक है, एमबीसी के साथ आप रिलेट करोगे वन्यार्स प्लस 115। ठीक है, सो फार क्लियर? 69% total, do the maths, 20% for MBC, rest how much left? 8%. It was 41%, right? Okay, chalo. Then in 1989 this nomenclature was introduced, that is MBC। तो ये स्पेसिफिकली ये ही वर्ड्स यूज कब से होना शुरू हुए हैं? MBC एंड DNC 1989 से। ठीक है, जबकि रिजर्वेशंस उन्होंने देना स्टार्ट कर दिए थे आफ्टर 1971। अप टिल दैट टाइम इट वाज 41%। फाइन, चलो अब इसमें भी जो डीएनसीज है उसमें भी थोड़ी स्पेसिफिसिटीज हैं कि कुछ परसेंट मुस्लिम्स को दे रहे हैं, वो कुछ परसेंट क्रिश्चियंस को दे रहे हैं। इतना डिटेल में हमें नहीं ज़रूरत है जाने की। ठीक है, चलो this question has been answered. What is the history? Now, how Tamil Nadu's reservation stands at 69% despite the 50% cap. तो इसकी स्टोरी ये है कि 1990 में तमिलनाडु का जो ओवरऑल रिजर्वेशन था वो ऑलरेडी जब से ये इंदिरा शाह ने केस स्टार्ट हुआ था, या जब से हमारी मंडल कमीशन का ही पूरा गेम स्टार्ट हुआ था, उससे काफ़ी पहले से ऑलरेडी तमिलनाडु में 69% रिजर्वेशन का प्रोविजन अवेलेबल था। ठीक है, वो हमने अब तक समझ लिया, जिसकी वजह से डिस्पाइट 50% कैप 69% अभी अवेलेबल है in the state of Tamil Nadu. And mind you guys, Tamil Nadu is very infamous for this, maximum reservation वही है, उसी स्टेट में है। ठीक है, infamous का क्या मतलब होता है? famous in a bad manner। ठीक है, impopular, impopular is still popular but just for bad reasons, for wrong reasons, negative publicity। तो यहाँ पे जो हाई कोर्ट ऑफ मद्रास एंड एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने हालांकि ये रूल किया था कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, बट तमिलनाडु में ऑलरेडी ये चल रहा था। फिर इस रिजर्वेशन के जो रूलिंग्स आई उसके बाद तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने एक और एक्ट इंट्रोड्यूस किया था अपनी 69% बैकिंग को बचाने के लिए। ठीक है, जिस एक्ट को अप्रूवल मिल गया था और वो 9th शेड्यूल में ऐड कर लिया गया था। ठीक है, अब तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट थी उसने तमिलनाडु बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, ये बहुत लंबा सा नाम है, मैं आपको शॉर्ट में लिखवाऊंगी, पहले सुन लो। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड ऑफ अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट इन सर्विसेज अंडर स्टेट बिल 1993 में इंट्रोड्यूस किया था आफ्टर 1992। ठीक है, क्योंकि तब तक क्या बोला गया कि 50% कैप रहना चाहिए। ठीक है, तो ये 1992 में एक्ट इंट्रोड्यूस किया, बिल इंट्रोड्यूस किया और वो पास कर दिया। फिर प्रेसिडेंट्स असेंट के लिए वो गया था, जिसके थ्रू 9th शेड्यूल में इसको इंक्लूड कर लिया गया था। ठीक है, तो 69% अब चैलेंज भी वो नहीं कर रहे थे कोर्ट में लोग। ठीक है, तो इस एक्ट को हम छोटे में लिखेंगे तमिलनाडु गवर्नमेंट, यू कैन राइट TN गवर्नमेंट, TNGOV, introduced the TN
और तमिलनाडु BC, SC, ST, which means backward class, scheduled caste, scheduled tribe, Bill 1993. मेन रीजन तो यही है ना कि 50% कैप के बाद भी 69% क्यों है ना। तो ये आप इस क्वेश्चन के आंसर में रिटर्न में आप ये लिखोगे, ये आपका मेन पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। अब इसके नीचे नेक्स्ट लाइन में लाइन चेंज करके लिखेंगे द प्रेसिडेंट्स असेंट केम, द प्रेसिडेंट्स असेंट केम which cemented the 69% reservation for Tamil Nadu, TN. प्लस नेक्स्ट लाइन में प्लस का साइन, नेक्स्ट लाइन में प्लस का साइन, द एक्ट वॉज ऑल्सो ब्रॉट अंडर 9th schedule, नेक्स्ट लाइन में फिर प्लस का साइन, प्लस आर्टिकल 31B, अब ये आर्टिकल 31B पूरा आर्टिकल 31 एक झारखंड के रिजर्वेशन के बारे में हम बात करने वाले हैं, ये लास्ट टॉपिक होगा आज की क्लास का। तो जिसको आर्टिकल 31 से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो ना इस पर्टिकुलर टॉपिक में, सिर्फ वो होल्ड करना, उसके अलावा कोई क्वेरी होगी इस टॉपिक में बाय द एंड ऑफ द डिस्कशन तो वो हम लेंगे। 31 आर्टिकल को नहीं लेंगे क्योंकि वो बहुत डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, वो मैंने पहले बता दिया। पर यहाँ पे हम लिखेंगे आर्टिकल 31B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन states that none of the acts, actually 9th schedule was created with the help of article 31B, states that none of the acts that are included under the 9th schedule shall be deemed to be void by any court or tribunal, यानी कि 9th शेड्यूल को ये जो पूरा इंसुलेशन है वो कौन प्रोवाइड करता है, आर्टिकल 31B, ठीक है। अच्छा, अदरवाइज आर्टिकल 31 किस चीज से रिलेटेड था, प्रॉपर्टी, जो कि कॉश करके उसको एक लीगल राइट बना दिया था, है ना। चलो खैर, नाउ व्हाट इज दिस एक्ट अबाउट, तो आपको ये आंसर मिल गया कि क्यों है 50% रिजर्वेशन, क्योंकि ये 9th शेड्यूल में और 31B कहता है कि 9th शेड्यूल में कुछ चैलेंज नहीं हो सकता और प्रेसिडेंट ने असेंट देके 9th शेड्यूल में डाल दिया था, इसीलिए 69% अभी भी है, 50% कोटा के बियॉन्ड भी, कोटा कैप के बियॉन्ड भी, ठीक है, आंसर हो गया। सेकेंड है कि व्हाट वाज दिस एक्ट अबाउट, अब ये एक्ट क्या करना चाह रहा था, जितना जब मैं बोलूंगी लिखना है उतना लिखेंगे क्योंकि अगेन थोड़ा सा पॉलिटिक्स है स्टोरी में। सो तमिलनाडु का ये जो स्पेशल रिजर्वेशन एक्ट ऑफ 2021 है, ये जो टैगलाइन है इस पूरे टॉपिक की, तमिलनाडु स्पेशल रिजर्वेशन एक्ट ऑफ 2021, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं वन्यार कोटा, क्योंकि पूरा एक्ट ही सिर्फ वन्यार्स को एक स्पेसिफिक कोटा देने के लिए, तो वन्यार कोटा लॉ इसे कमर्शियली या अल्टरनेटिवली हम बोल रहे हैं मीडिया में, ठीक है, was introduced to meet the demands of Vanyars, fine, only their demands specifically, because they were still not satisfied with the overall 20% cap they were enjoying with other 115 communities, right. Vanyar basically is a caste that is classified amongst the MBC in the Tamil Nadu, right. MBC's full form is most backward class, fine. Now this law is doing what, we are talking about this act, we have already talked about it, I'm just repeating it. It provides 10.5% reservation to specifically Vanyars within the 20% reservation available for MBCs. This was the story of the act, यही करना चाहते थे, ठीक है। The act was promulgated on the
बेसिस ऑफ रिकमेंडेशंस ऑफ तमिलनाडु's बैकवर्ड क्लास कमीशन, वो वाली जिसने ये बोला था कि आप स्पेसिफिक कंपार्टमेंटलाइजेशन कर लिया करो। हम उस कमीशन की बात कर रहे हैं इस एक्ट को इंट्रोड्यूस करते वक्त, ठीक है। उसने तो बोला था कंपार्टमेंटलाइजेशन करो, सेकेंड वन ने, है ना, ठीक है, अंबाशंकर कमीशन ने, ठीक है। अब यहाँ पे जो लेजिस्लेशन है वो ऑब्वियसली हाई कोर्ट के आगे चैलेंज हुई। हाई कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट के आगे चैलेंज हुई, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया दैट इट इज इन वायलेशन विद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। नाउ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अगर, तो ये हमें पता चल गया कि एक्ट किस बारे में था, कुछ लिखने का जरूरत इसमें नहीं है। लिखना है तो बस इतना लिखना है कि 10.5% फॉर 1 years विद इन 20% फॉर MBCs, ठीक है। यहां से एग्जैक्टली इस डेटा पॉइंट से क्वेश्चन आने का पॉइंट नहीं बनता है इतना। ना सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में कुछ हेडिंग्स है, जो आप सिर्फ हेडिंग्स लिखोगे, एक्सप्लेनेशन सिर्फ सुनोगे, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट। उसमें आप फर्स्ट पॉइंट लिखो वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो एपेक्स कोर्ट में बोलते हैं, अच्छा फंडामेंटल राइट्स लिख के आप आर्टिकल 14, 15, 16 वहां पे स्पेसिफाई कर दोगे, ठीक है। तो एपेक्स कोर्ट ने ये मद्रास हाई कोर्ट का जो जजमेंट था कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है रिजर्वेशन इस तरीके से देना, वो अपहोल्ड किया और उन्होंने बोला कि ये तो वायलेट करता है 14, 15, 16 को, कि बेसिस क्या है, आप क्यों उनको स्पेसिफिकली इतना रिजर्वेशन दे रहे हो। जब आपने ओवरऑल दिया था तो हमें समझ आया था, बट उनको स्पेसिफिकली, वो बैकवर्ड है, वो ऑलरेडी इंजॉय कर रहे हैं रिजर्वेशन, बट ये इस चीज की बैकिंग क्या है कि 10.5% उनको मिलना चाहिए। तो तमिलनाडु के लिए बैकिंग थी उनकी पॉपुलेशन, बट किसी की पॉपुलेशन कितनी है किस कम्युनिटी की, ये क्या डिफाइन कर सकती है कि उसको कितना रिप्रेजेंटेशन या रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ये बेसिस हो सकता है, कोर्ट के जजमेंट से ही समझ जाओ कि ये बेसिस नहीं हो सकता। बेसिस हो सकता है उनका सोशल एंड इकोनॉमिक जो अभी स्टेटस है वो, that is supposed to be the basis and not how much of a population somebody is constituting, ठीक है। वरना तो जो ओपन कंपटीशन क्लास है उसका सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, तो अभी क्या करने का फिर, है ना, राइट हाँ, तो ऐसा नहीं हो सकता कि पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में रिजर्वेशन मिले। तो पॉपुलेशन इज नॉट अ क्राइटेरिया। The criteria is how much is the status developed with respect to social and economic background or underdeveloped with respect to the same. Fine. तो however यहाँ पे अगर आप उनके पास इनफ क्वांटिफाइबल डाटा होता बैक करने के लिए अपना पूरा जो रीजनेबल ग्राउंड्स होते प्रूव करने के लिए, तो कोर्ट इस चीज को क्वॉश नहीं करने वाला था, ठीक है। उन्होंने यही साइड किया कि यू डू नॉट हैव इनफ क्वांटिफाइबल डेटा, राइट। इसीलिए आपका रिजर्वेशन हम खत्म कर रहे हैं, इस तरीके से आप नहीं दे सकते। हालांकि अगर मैं आपसे ये पूछूं, मेरा क्वेश्चन ये हो कि वनयार कम्युनिटी आज के टाइम पे तमिलनाडु में रिजर्वेशन एंजॉय करती है या नहीं, तो उसका आंसर हाँ है या ना है। हाँ, वो जो 20% ब्रैकेट है विद इन दैट इट इज एंजॉइंग, बट इट इज नॉट सोनली एंजॉइंग 10.5%। फाइन, चलो। एंड आपको पता ही है कि 50% कैप कोर्ट ने लगाया था इंदिरा स्वामी के टाइम पे, तो उसको भी रेफर किया और उन्होंने उसको रेफर करते हुए कहा कि इन केस द स्टेट एक्सीड्स 50% लिमिट, द सेम नीड्स टू बी जस्टिफाइड ऑन वैलिड ग्राउंड्स और एल्स इट विल अमाउंट टू गिविंग प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट फ्रॉम अमंग सम पर्टिकुलर क्लास, ठीक है। तो कोर्ट भी ये अपहेल्ड करता है कि हाँ, इस स्टेटमेंट से आप ये भी चीज फिगर आउट कर सकते हो कि कोर्ट रिकॉग्नाइज करता है कि कैप ब्रीच हो सकता है। कोर्ट रिकॉग्नाइज करता है कि कैप ब्रीच हो सकता है, बट उसके लिए रीजनेबल ग्राउंड्स अवेलेबल होने चाहिए विद इन द स्टेट, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे एब्सेंस ऑफ क्वांटिफाइबल डेटा। तो पहला रीजन था वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, सेकेंड रीजन है एब्सेंस ऑफ क्वांटिफाइबल डेटा।
तो हालांकि caste can be, it is recognized in India that caste can be a starting point to give a community reservation, which this community already has on the basis of caste, if it is supposed to be given. Population तो ground है नहीं, caste ground है, वो हमने मान लिया. बट अगर उसके बियॉन्ड भी उनके लिए कुछ करना है तो अगेन एक क्वांटिफाइबल डेटा होना चाहिए. जो कास्ट का वैलिड ग्राउंड है वो 20% रिजर्वेशन में उनको इंक्लूड करके ही आपका सेटिस्फाई हो जाता है. अब ये चेंजेस लाने का जो वैलिड ग्राउंड है वो आप प्रूव नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, बिकॉज यू डू नॉट हैव इनफ क्वांटिफाइबल डेटा टू प्रूव द सेम. सो देयर वाज लैक ऑफ क्वांटिफाइबल डेटा. देन नेक्स्ट पॉइंट इज नो प्रॉपर एनालिसिस. तो कोर्ट के क्वेश्चंस थे कि क्या रिलेटिव बैकवर्डनेस है बाकी एमबीसी कम्युनिटीज की 115 और इन वनियार्स की स्पेसिफिकली. इनफैक्ट डीएनसीज के बारे में कोर्ट ने पूछा कि रिलेटिव हमें बताओ कि क्या पोजीशन है वनियार्स की स्पेसिफिकली, कि उनको आप स्पेसिफिकली एक एक्स्ट्रा कोटा रिजर्व करना चाहते हो उनके लिए विद इन द रिजर्वेशन अवेलेबल, ठीक है. तो जो कंपैरेटिव एनालिसिस था वो प्रेजेंट नहीं कर पाई गवर्नमेंट. सो क्योंकि एक प्रॉपर एनालिसिस ही नहीं किया, बस पॉलिटिकल जो गेन था उसके लिए वनियार्स को, क्योंकि एक अच्छा पॉपुलेशन है, एक अच्छा वोट बैंक है और उन इनकम्बेंट गवर्नमेंट जो थी वो जीतना चाहती थी. हालांकि दे लॉस्ट इट, द इलेक्शंस वर लॉस्ट बाय देन इनकम्बेंट गवर्नमेंट, ठीक है. तो इवन आफ्टर डूइंग दिस स्टंट दे लॉस्ट इट, राइट, बट इट वाज क्लियरली फॉर पॉलिटिकल गेन्स एंड नो रियल एनालिसिस वाज डन. अगर सच में किसी कम्युनिटी को विद इन द रिजर्वेशन एक स्पेसिफिक कोटा प्रोवाइड होना चाहिए तो फिर एक कंपैरेटिव एनालिसिस होना चाहिए ना, कि जिनको रिजर्वेशन मिल रहा है उनके कंपैरिजन में भी ये सबसे ज्यादा बैकवर्डनेस फेस कर रहे हैं, ठीक है, वो नहीं दे पाए. नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट पॉसिबल फॉर द स्टेट्स टू मेक चेंजेस इन द बैकवर्ड क्लासेस लिस्ट. अब हम ये दोनों पॉइंट वर्ड टू वर्ड लिखते जाएंगे, मैं डिक्टेट कर रही हूँ. यहाँ पे हम 102nd एंड 105 अमेंडमेंट के बारे में लिखेंगे. सो 102nd अमेंडमेंट फर्स्ट पॉइंट, 102nd अमेंडमेंट 102 एंड डी ऐसे लिख लो. अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन created the National Backward Class Commission and empowered the president. Should I go slow? No, okay. To notify the backward classes की स्पेलिंग क्या होता है भाई? डबल एस, ठीक है, नॉट SES. सो क्लासेस लिस्ट फॉर ईच स्टेट, यानी कि 102nd अमेंडमेंट में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, है ना. नेक्स्ट लाइन चेंज करके लिखेंगे, इसी पॉइंट के अंदर लिख रहे हैं अभी 102nd के बारे में बात करें. लाइन चेंज करेंगे. द SC, दैट इज सुप्रीम कोर्ट, रूल्ड इन द मराठा रिजर्वेशन case that the amendment took away the power to notify or identify OBCs from the states. यानी कि मराठा जो रिजर्वेशन महाराष्ट्र में देना चाह रहे थे मराठा कम्युनिटी को
पर्टिकुलरली, उसमें उनको ये पता चला सेंट्रल गवर्नमेंट को कि अरे ये तो गड़बड़ हो गई है, 102nd अमेंडमेंट ने तो ये पार ही टेक अवे कर लिया है स्टेट्स का कि हम किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को कंपार्टमेंटलाइज करके उन्हें बैकवर्ड डिक्लेयर करके उनके लिए रिजर्वेशन रख सकें। ठीक है, अब तो ये राइट सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के ही पास है। तो फिर नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे 105th अमेंडमेंट आता है। 105th अमेंडमेंट made it explicit that the states could make changes in their lists, full stop, next line, change the line and write, the Supreme Court held, the SC held, that the state government, government had the legislative competence to pass the act. मतलब ये जो भी तमिलनाडु वाली जजमेंट आई है ना, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हालांकि आपके पास लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है कि आप ये पास कर सकते हो, बट आपके पास वैलिड ग्राउंड्स नहीं है। ठीक है, आपने अपनी लेजिस्लेटिव पावर्स को अब्यूज नहीं किया, बट आपने रीजनेबल ग्राउंड्स को अब्यूज किया है ऑफ रिजर्वेशन। ठीक है, जिसकी वजह से आप वायलेट करते हो आर्टिकल 14, 15 एंड 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब ये सारे क्वेश्चंस हमने आंसर कर लिए। अब बताओ इनमें से कोई क्वेश्चन है, कुछ लिखा है किसी ने? जगदीश। मैंने क्या बोला था कि आर्टिकल 31 से रिलेटेड डाउट नहीं एंटरटेन होगा अभी। हाँ, बस शुरू वहां से हो रहा है डाउट। हाँ बोलो। नहीं बताओ, मैं बता दूंगी क्वेश्चन सुन के कि मैं अभी बता रही हूँ या नहीं बता रही। ओके ठीक है, चलो ये आपका कुछ डेटा पॉइंट है कि 69% रूल ऑफ रिजर्वेशन में मैंने बोला था कि कुछ पर्टिकुलर सब कैटेगरीज बना के उन्होंने दिया हुआ है मुस्लिम्स को एंड इस तरीके से। ठीक है, बस ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, इसमें स्टेट स्पेसिफिक है। द पॉलिटिकल क्राइसिस इन महाराष्ट्र, एक बार और डिस्कस कर चुके हैं हम पॉलिटिकल क्राइसिस महाराष्ट्र का कल। उसके जो हमारा इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन था वो फोकस्ड था। एक तो इस बात पे कि स्पीकर है नहीं वहाँ, दूसरा गवर्नर का क्या रोल आ जाता है, इस सब चीज़ों पे। ठीक है, अभी भी मेरा क्वेश्चन है आपसे, क्या महाराष्ट्र में स्पीकर हैं? अभी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो हम बात करने वाले हैं, अब हम बात करने वाले हैं एंटी डिफेक्शन के बारे में। यहाँ पे वो जो एकनाथ शिंदे वाला फैक्शन अलग हुआ और अब वो सीएम है, और अचानक से कोर्ट के पास जाने के बाद जस्ट एक सिंपल सा वर्डिक्ट आया था कोर्ट का कि एक उनको 48 आवर्स का टाइम दिया गया था एमएलएस को अपना केस रखने के लिए जब उनको डिस्क्वालीफाई करना चाह रहे थे। ठीक है, हालांकि एक नॉर्म होता है कि 7 डेज का मिलना चाहिए, तो कोर्ट ने बोला कि नहीं हम और पीरियड देंगे, तो उनको पीरियड एक्सटेंड करके प्रेजेंट करने के लिए दे दिया क्योंकि पहले उनके साथ अनफेयर हुआ था। सिर्फ इतने से जजमेंट पे कुछ पीछे से पॉलिटिकली होता है एंड उद्धव ठाकरे रिजाइन कर देते हैं। ठीक है, नॉट ओनली फ्रॉम द सीएम्स पोजीशन बट फ्रॉम द एमएलएज डेजिग्नेशन ऑल्सो, मतलब वो हाउस से एमएलए की पोजीशन से ही रिजाइन कर देते हैं। अल्टीमेटली वो सीएम भी नहीं रहते, हालांकि वो एमएलए से रिजाइन करके भी सीएम रह सकते थे अगले 6 मंथ्स तक, विद इन 6 मंथ्स, वो सारा प्रोसेस आपको पता है। लेकिन उन्होंने दोनों पोजीशन से रिजाइन कर दिया, दोनों ही पोजीशन से। वो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर भी नहीं है अभी। ठीक है, कुछ पॉलिटिकल बैकड्रॉप में ऐसा होता है। अब ये जो इंस्पायर्ड था डिसीजन, ये जब मैं कोर्ट का डिसीजन आपको बताऊंगी तो उसमें ये कनेक्ट नहीं करना है कि ये कोर्ट की वजह से किया है, कोर्ट का तो उससे कुछ लेना देना नहीं था। ठीक है, फ्लोर पे तो टेस्ट हुई नहीं थी मेजॉरिटी। ठीक है, वो ऑलरेडी उन्होंने रिजाइन कर दिया था।
ठीक है। तो ये बैकड्रॉप में जो हुआ वो हमारे लिए उतना रेलिवेंट नहीं रह जाता, बट इट्स वेल अंडरस्टूड कि उनको पता चल गया था कि उनके पास मेजोरिटी नहीं है, वो फ्लोर टेस्ट तक नहीं गए, उन्होंने रिजाइन कर दिया। ठीक है, बट हमें यहाँ पे क्या क्या कवर करना पड़ जाएगा अब उनकी वजह से, कि एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है। ठीक है, फिर व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ दिस इशू, पूरी स्टोरी सुननी पड़ेगी क्योंकि वही सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है, चाहे हमें लिखना नहीं है। फिर व्हाट इज द रोल ऑफ द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर इन एंटी डिफेक्शन, क्योंकि आर्टिकल 180 में ये गिवन है कि स्पीकर करेंगे ये डिसाइड, फिर डेप्यूटी स्पीकर कर सकते हैं क्या? ठीक है ना। चलो, व्हाट इज द रोल ऑफ द गवर्नर इन दिस मैटर, अब इस पूरे मैटर में गवर्नर का क्या रोल हो जाता है। गवर्नर को ये बस खुद से डिसीजंस लेने की तरह जगह इस चीज पे ध्यान देना होता है कि जो फ्लो टेस्ट है वो हो, है ना। व्हाट हैपेंड इन द आफ्टर मैथ ऑफ कोर्ट ऑर्डर, अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना यही ट्रिकी है, क्योंकि आपको लगेगा कि जो उद्धव ठाकरे का आफ्टर मैथ जब मैं बताऊंगी ना कि कोर्ट का ऑर्डर आ गया और उसके बाद ये हुआ, सिंपल 2 लाइन के ही पॉइंट्स हैं उसमें जो आपको लिखने भी नहीं है, इट्स पॉलिटिकल, कि उद्धव ठाकरे ने रिजाइन कर दिया सीएम की पोस्ट से भी और एमएलए की पोस्ट से भी। अब ये जो आफ्टर मैथ में जरूर हुआ है बट इससे कोर्ट के ऑर्डर का कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, बस कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से डिजाइन हो जाते हैं कि थोड़ा सा इंटरेस्ट जो है वो डेवलप कर सकूं, बस और कोई रीजन नहीं था इस वाले क्वेश्चन का। तो मुझे लगता है कि मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि ये बस एक फ्यूटाइल ट्रिक है। तो मुझे उस टाइम पे ये बनाते वक्त बड़ी अच्छी लग रही थी, फिर उसके बाद आई मैच्योर्ड, है ना। चलो फाइन, फर्स्ट से लेते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ किस शेड्यूल के बारे में बात कर रहे हैं हम भाई? 10th शेड्यूल। ठीक है, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में बात करें? क्विक फैक्ट चेक, 50 सेकेंड। 1985, गुड। ठीक है, चलो तो कौन कौन से सिनेरियोज में एंटी डिफेक्शन लॉ की जरूरत आपको पड़ सकती है? 3 ऐसे सिनेरियोज हैं। हाँ, अच्छा, विप, ओके, ठीक है, विप का वायलेशन कर दें, यानी कि या तो पार्टी से रिजाइन कर दें या पार्टी के अगेंस्ट में वोट कर दें, पार्टी मैंडेट के अगेंस्ट में वोट कर दें। ठीक है, देन हाँ ठीक है, और उसके अलावा ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गई, 3 है ना टोटल। तो एक्सेप्शन है ना, कब एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाई होता है? अगर कोई इंडिपेंडेंटली इलेक्ट हुआ है और वो पार्टी ज्वाइन कर ले, ठीक है, तो भी एंटी डिफेक्शन आएगा। और इसके अलावा राज्यसभा के एमपी भी पार्टीज को बिलोंग करते हैं। नॉमिनेटेड, अगर कोई नॉमिनेटेड है और वो आफ्टर 6 मंथ्स किसी पार्टी को ज्वाइन कर ले तो वहां पे भी एंटी डिफेक्शन आता है। ठीक है, यही सिंपल सिंपल चीजें हैं जो हमें लिखनी है। इसके अलावा हमें बात करनी है एग्जम्पशन के बारे में कि कब एंटी डिफेक्शन नहीं आता, किस केस में नहीं आता? मर्जर के केस में, है ना, वो आपको पता है कि 2/3। ठीक है, चलो एक लूप होल भी है कि जो लॉ है ना वो ये प्रोवाइड नहीं करता कि कितने टाइम फ्रेम के अंदर अंदर स्पीकर को ये डिसीजन लेना होता है कि यहाँ पे डिफेक्शन हुआ है एंड वहाँ से एमपी को एक्सपेल किया जाए या एमएलएस को एक्सपेल किया जाए। इसमें कोई भी स्पेसिफाइड टाइम लिमिट नहीं है इस डिसीजन को लेने के लिए। ठीक है, अब ये जो फैक्ट है कि इस डिसीजन को लेने के लिए कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, इसके बाद जस्ट इसके बाद जो मैं करंट अफेयर्स डिस्कस करूंगी वहां पे भी ये इंफॉर्मेशन काम आने वाली। ठीक है, नहीं कोई भी हमारे पास एंटी डिफेक्शन लॉ में टाइम फ्रेम नहीं है, कोर्ट ने उनको टाइम फ्रेम दिया था, हाँ, कि आप डिसाइड कर लो। ठीक है, जब वो कोर्ट में केस गया था, हाँ, हालांकि अब कोर्ट में ये वाला केस जाएगा तो कोर्ट रेफर करेगा अपनी उस जजमेंट को, क्योंकि कोर्ट की तो जजमेंट्स लैंडमार्क हो ही जाती हैं। ठीक है, पर यहाँ पे ओहो मिस कर दिया, चलो नाउ
बैकग्राउंड ऑफ द इशू वी विल हैव टू अंडरस्टैंड। इसके बाद एंटी डिफेक्शन करने के बाद, तो बैकग्राउंड में पहले ही बता दे रही हूँ क्योंकि वो मुझे लिखवाना नहीं है, एंटी डिफेक्शन में मुझे वापस आना है, ये मुझे लिखवाना भी है। हालांकि आप लोगों ने किया हुआ है बट हम शॉर्ट नोट्स ले लेंगे, ठीक है। चलो, तो बैकग्राउंड ये था कि शिवसेना जो है वो रूलिंग थी भी और है भी, है ना। पर जो पहले वाली शिवसेना थी, जो रूल कर रही थी उस टाइम पे, इट कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ ऑल द एमएलएस, यानी कि कोई भी उनकी मेजॉरिटी चैलेंज कभी हुई ही नहीं है हाउस में। बस शिवसेना ने अपने एमएलएस की मीटिंग बुलाई थी क्योंकि अंदर अंदर पॉलिटिकली उनको ये इन्फॉर्मेशन थी कि इस तरीके का कुछ ऑर्केस्ट्रेट हो रहा है, ठीक है, इस तरीके का कुछ सिंथेसाइज किया जा रहा है। तो उन्होंने ये बोला था कि जो भी एमएलएस इस मीटिंग में नहीं आएंगे, ये मान लिया जाएगा कि वो पार्टी के लिए, पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं, दे आर रिबेल लीडर्स, रिबेल कर रहे हैं, रिबेलियन कर रहे हैं अगर वो आप इस मीटिंग को अटेंड नहीं करते हो, ठीक है। यानी कि एब्सेंस इन द मीटिंग वुड बी लीडिंग टू प्रिजम्पशन दैट दे वांटेड टू लीव द पॉलिटिकल पार्टी। पर बहुत सारे एमएलएस तो हॉलीडेज पे थे ना, हॉलीडेज पे। अभी एक साथ अचानक से अभी ऐसा बुला लेंगे तो कैसे पहुंचेंगे अब हॉलीडेज से, है ना। तो थोड़ा सा इशू आ गया पहुंचने के, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम, लॉजिस्टिकल बैरियर्स, राइट। सो ये था बस बैकग्राउंड, जिसमें से हमें कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। हॉलीडे डेस्टिनेशन तो बिल्कुल भी रिवील हम नहीं करने वाले, ठीक है। चलो, नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर इन एंटी डिफेक्शन। तो जो स्पीकर का रोल है वो तो बहुत क्लियर है, ठीक है, कि असेंबली स्पीकर होता है जिसे डिसाइड करना होता है कि एक एमएलए जो है उसने पार्टी लीव की है, ठीक है, या कोई ऐसा ग्रुप है जिसने 2/3, ये भी डिटरमाइन करना कि क्या 2/3 ने की है या नहीं, वो काउंट वाउंट वो सब स्पीकर को इंश्योर करना होता है कि हुआ है या नहीं हुआ है, एंटी डिफेक्शन लगेगा या नहीं लगेगा, डिफेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, सब डिटरमाइन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, स्पीकर रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। बट द पोजीशन ऑफ स्पीकर इन महाराष्ट्र असेंबली इज करंटली वेकेंट, ठीक है। एंड डेप्यूटी स्पीकर जो है वो प्रेजेंट थे, उनका नाम है नरहरी लिरवाल, यू डोंट हैव टू राइट इट, ठीक है। उन्होंने स्पीकर की ड्यूटी परफॉर्म करना स्टार्ट किया था, जब से स्पीकर की पोस्ट वैकेंट है तब से वही परफॉर्म कर रहे हैं। हालांकि आर्टिकल 180 क्लॉज 1 बोलता है कि डेप्यूटी स्पीकर परफॉर्म करेंगे स्पीकर्स की ड्यूटी जब वो ऑफिस में नहीं होंगे, यानी कि स्पीकर की सारी ड्यूटीज, यानी कि डेप्यूटी स्पीकर इज एक्टिंग एज अ स्पीकर। तो यहाँ पे उन्होंने बोला, बट ये जो ग्राउंड्स थे ना, ये जिन एमएलएस को एक्सपेल करने की कोशिश की गई, उन्होंने जाके सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन लिया, शिंदे प्लस 15 अदर एमएलएस को जो डिस्क्वालीफाई करने का डिसीजन था एंटी डिफेक्शन लॉ के बेसिस पे, वो सब जाके चैलेंज कर दिया। और पिटिशनर्स ने ये बोला कि डिप्टी स्पीकर कैन नॉट डिस्क्वालीफाई एनी मेंबर अंडर द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स एंटी डिफेक्शन, ठीक है, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ हिज ओन रिमूवल रेजोल्यूशन, कि ठीक है डेप्यूटी स्पीकर परफॉर्म कर रहे हैं ड्यूटी स्पीकर की एंड वो डिसीजन लेंगे, बट हमारे पास तो उन्हीं के रिमूवल का जो रेजोल्यूशन है वो पेंडिंग है हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो जब उनके रिमूवल का रेजोल्यूशन पेंडिंग है, तब वो अगर इस तरीके की कोई चीज़ करे तो ये तो एथिकल क्लैश हो गया ना कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी में, ठीक है। तो रिबेल एमएलएज ने ये भी बोला कि हमें सिर्फ 48 आवर्स दिए गए अपना जो रिप्लाई था वो सबमिट करवाने के लिए। हालांकि एज पर महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन रूल्स 1986, हाँ याद नहीं करो मैं लिखवा दूंगी, ठीक है। द legislators who are disqualified, they are entitled to at least 7 days, राइट। तो क्योंकि उनको अच्छा वो चाह भी नहीं रहे थे कि रिप्लाई मिले, फिर भी उन्होंने 2 दिन निकाले, मतलब इट्स अ गुड स्पेंड दैट दे मेड, काइंड हार्ट, बिग हार्ट, है ना। बट फिर भी कोर्ट ने कहा कि अरे
गलत तो हुआ है ना आप लोगों के साथ। चलो ऐसा करो, ये डिसीजन बाद में लेंगे कि वो डिप्टी स्पीकर के रेजोल्यूशन का पेंडिंगनेस आपको अलाउ करेगा या नहीं करेगा। हालांकि जब तक वो अपनी पोस्ट से रिमूव नहीं हुए, लेट मी टेल यू, तब तक वो डिप्टी स्पीकर ही हैं फॉर एनी क्वेश्चन इन दैट रिगार्ड दैट पॉप्स अप। सो कोर्ट डिड नॉट एंटरटेन उनका ग्राउंड, बट हाँ उन्होंने ये वाला ग्राउंड जरूर एंटरटेन किया कि आपको और ज़्यादा टाइम मिलना चाहिए। तो कोर्ट ने टाइम एक्सटेंड कर दिया, एंड जैसे ही कोर्ट ने टाइम एक्सटेंड किया, अच्छा उस टाइम पे कोर्ट अपने जजमेंट्स को भी बड़ा कोर्ट करने का, मतलब कोर्ट है जिनको कोर्ट करना होता है अपनी जजमेंट्स को, क्योंकि लैंडमार्क हो जाती हैं। तो एक जजमेंट है जो एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड ही है और 1992 का ही केस है। अब मैं ये रिलेट इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि अब बहुत टाइम तक ये याद रहेगा कि वो 2 केसेस इंदिरा शाह ने और एक और केस 1992 का ही था, क्योंकि हमने क्लास में इस तरीके से पढ़ा है ना। किहोतो होलोहन केस है ना। जो किहोतो होलोहन केस था, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में उन्हें उसमें कहा था कि अगर एक स्वीपिंग डिस्क्रिशन जो है वो स्पीकर के पास बिल्कुल अवेलेबल है किसी भी डिफेक्शन के केस को एंटरटेन करने की, तो यहाँ पे कोर्ट इस जजमेंट को कोर्ट क्यों कर रहा है? वो आंसर देना चाहता है इस चीज का कि कुछ भी हो, डिप्टी स्पीकर अभी भी एंटरटेन करने की पोजीशन में तो थे। प्रॉब्लम कहाँ हो गई? 48 आवर्स में प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। और तब तक रोल ऑफ गवर्नर पे आएंगे, तब तक मैं यहाँ पे मूव करती हूँ। और वो जो पूरा टाइम पीरियड था कि कोर्ट में केस चल रहा है और फिर 7 डेज नहीं दे रहे, 48 आवर्स दे रहे हैं, उस टाइम पीरियड में तब तक एकनाथ शिंदे प्लस 15 एमएलएस की डिस्क्वालिफिकेशन थी। फिर उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि आपके जो सीएम थे उन्होंने ही अपना रिजाइन कर दिया, इंक्लूडिंग फ्रॉम एमएलएस पोस्ट, ठीक है। इस पॉलिटिकल, सो दे बॉट गुड अमाउंट ऑफ टाइम फॉर देमसेल्व्स टू प्ले द कार्ड्स। अब यहाँ पे गवर्नर का रोल, गवर्नर के रोल में क्या क्या हमें कोट करना पड़ेगा? एसआर बोमई केस 1994 जिसकी हम कल भी बात कर चुके हैं, तो उसमें क्या सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस रही हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। एंड देन फ्लोर टेस्ट क्या होता है, कल से हम फ्लोर टेस्ट के बारे में बोल रहे हैं, पर क्या हमने फ्लोर टेस्ट को अगर आपको एग्जाम में लिखना पड़े तो आप अपने वर्ड्स में ये लिखोगे कि लेजिस्लेटिव असेंबली या पार्लियामेंट में जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है उसको अगर वो या कॉन्फिडेंस मोशन जो इंट्रोड्यूस होता है, अगर वो जो कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोड्यूस हुआ है तो हम उसे फ्लोर टेस्ट कहेंगे। तो फ्लोर टेस्ट को हम वर्ड बाय वर्ड अपने लिए लिख लेंगे एक बार आज के दिन, ठीक है। चलो, आफ्टर मैथ मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया, अब बस ये गवर्नर को इंश्योर करना होता है कि फ्लोर टेस्ट, तो हम फ्लोर टेस्ट को लिख लेंगे यहाँ पे एंड एसआर बोमई को लिख लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ठीक है। एंटी डिफेक्शन लिखेंगे सबसे पहले, फर्स्ट क्वेश्चन। पास तो नहीं हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, एंटी डिफेक्शन में punishes MPs / MLAs। एंटी डिफेक्शन सब हेडिंग के बाद, for leaving one party for another। This point is to help you understand very quickly what this law is all about, ठीक है। सेकेंड लाइन में लाइन चेंज करके लिखेंगे ADL, I mean anti defection law was added by 52nd Constitutional Amendment Act as the 10th schedule in 1985. Next point, the law covers 3 kinds of scenarios। क्या क्या है भाई? फर्स्ट when legislators elected on the ticket of a
political party voluntarily give up party voluntarily give up membership of that party membership of that party or vote in the legislature against the party's wishes legislature against the party's apostrophe s party's wishes full stop. Number 2, when an MP MLA when an MP MLA who has been elected as an independent joins a party later full stop. Third point, when nominated legislators TORS legislators join a political party after 6 months of being appointed to the house full stop. इस तरीके से एग्जम्पशन की सब हेडिंग इंट्रोड्यूस करके लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से द लॉ अलाउज a group of 2/3 MP/MLA इस तरीके से MP MLA to join ब्रैकेट में merger bracket close another political party without inviting the penalty for defection अब मुझे ये बताओ कि एक पॉलिटिकल पार्टी है उसमें x नंबर ऑफ मेंबर्स हैं पॉलिटिकल पार्टी में x नंबर ऑफ मेंबर्स हैं ये क्वेश्चन आपके पॉलिटी का नहीं है ये क्वेश्चन सी सेट का है ठीक है अगर एक पॉलिटिकल पार्टी में x नंबर ऑफ मेंबर्स हैं और उस पॉलिटिकल पार्टी के 2/3 मेंबर्स ने पार्टी लीव करके किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लिया ये सिनेरियो या फिर एक पॉलिटिकल पार्टी के 2/3 MLAs हैं उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी को लीव करके दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लिया कौन सा केस एग्जम्पशन प्रोवाइड करता है दोनों कैसे करेंगे सेकेंड वन आई टोल्ड यू इट्स अ सी सेट क्वेश्चन एक पॉलिटिकल पार्टी के 2/3 मेंबर्स अब वो मेंबर्स कुछ भी हो सकते हैं अब इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वो MPs हैं या MLAs हैं इसमें एंटी डिफेक्शन में एग्जम्पशन का क्या रोल है ठीक है अगर टोटल मेंबर्स जो 2/3 है उसमें से MPs और MLAs 2 ही हैं तो फिर तो उन पे डिफेक्शन लग गया ना क्योंकि बाकी के जो
पार्टी के मेंबर्स हैं जो हाउस में प्रेजेंट है, उन्होंने पार्टी लीव नहीं की, ठीक है। तो ये मेंबर्स वर्सेस एमपीज एमएलएज, ये वर्ड प्ले है, ठीक है, इस पे थोड़ा ध्यान से। चलो, इसका एक एग्जाम्पल है, अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो, वरना पॉलिटिकल एग्जाम्पल्स तो आपको बहुत मिल जाएंगे। एक बार अभी थोड़े टाइम पहले 2019 की बात है कि जब राजस्थान में इलेक्शंस हुए थे, तो जो बीएसपी थी उसके सारे के सारे जो एमपीज इलेक्टेड थे उन्होंने ज्वाइन कर लिया कांग्रेस को। अब सारे के सारे, अच्छा बीएसपी के वहां पे बहुत मेंबर्स होंगे, लाखों या हजारों मेंबर्स होंगे, बट जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं अगर उन्होंने ज्वाइन कर लिया किसी पार्टी को तो वो मर्जर काउंट हो जाएगा, ठीक है। अगर उनमें से 2/3 ने भी कर लिया होता तो वो मर्जर काउंट हो जाता, फाइन, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि उनकी पार्टी में तो बहुत सारे मेंबर्स हैं और ये 10 एमएलए जो इलेक्टेड थे उन्होंने ज्वाइन कर लिया, अब इनके अगेंस्ट एंटी डिफेक्शन लगाओ, नहीं, वो एमएलए थे उन्होंने कर लिया ज्वाइन, इट्स अ मर्जर विद कांग्रेस, फाइन। इलेक्टेड पीपल आर बीइंग टेकन इनटू कंसिडरेशन। No, not coalition, shift, yeah, now they are part of Congress. हाँ, अगर वो एक ही मेंबर है उस पार्टी से इलेक्टेड, ठीक है, तो वो ही 100% है ना, 33% का केस ही नहीं आया। नहीं, अगर एक पार्टी की टिकट से उसने इलेक्शन लड़ा तो वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कैसे हो गया? तो फिर क्या करे, अभी एक बंदा जीत पाया तो उस पार्टी से इंडिपेंडेंट नहीं हुआ, पार्टी की टिकट पे है ना, ठीक है। यहाँ पे एक लूप होल है, नेक्स्ट पॉइंट में हम लिखेंगे एग्जम्पशंस के नीचे ही लूप होल, लूप होल का सब हेड ऐसे नेक्स्ट पॉइंट बना के बस लूप होल हाइफन। The law does not, the law does not provide a time frame, time hyphen frame, time frame within which the presiding officer, has to decide a defection case, has to decide a defection case. Now, इस वाले सेंटेंस को इस तरीके से लिखवाना बड़ा ज़रूरी था मेरे लिए। यहाँ पे मैंने स्पीकर नहीं यूज़ किया, डिप्टी स्पीकर नहीं यूज़ किया, मैंने टर्म यूज़ की है प्रिजाइडिंग ऑफिसर, ठीक है। यहाँ पे इनहेरेंट काफ़ी सारा मैसेज है इस लूप होल में आपके लिए, ठीक है। चलो, नाउ डन, नॉट टू बी रिटन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, ये भी हम लिखेंगे नहीं, ये अंडरस्टूड है, बस इसमें आर्टिकल 180 क्लॉज 1 लिखेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे कि महाराष्ट्र में नहीं है स्पीकर, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप बस यहाँ इसके इस हेडिंग के अंडर 180 क्लॉज 1 आर्टिकल का टेक्स्ट लिख सकते हो। सो आर्टिकल 180 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन states that Deputy Speaker performs the speaker's duties when the office is vacant. Fine. So if it is speaker who has to decide, 180 clause 1 is telling you that deputy speaker is working in capacity of speaker when he is not there, right? Now we also know about the challenges in the Supreme Court, उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे वो क्वेश्चन नहीं है बट मैंने बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ था। अब रोल ऑफ गवर्नर पे आएंगे हम। एक सिंपल सी लाइन लिखनी है जो रोल ऑफ गवर्नर को हाईलाइट करती है। यहाँ पे द गवर्नर हैज, इस सब हेडिंग के नीचे एक जस्ट लाइन लिखेंगे हम, द गवर्नर हैज अ क्रूशियल रोल when there is political instability in a state, when there is
Political instability in a state. First point, SR Bomai case 1994. SR Bomai case 1994. इस तरीके से सब पॉइंट बनाओ, कॉलन प्लेस करो, आगे लिखो प्लेस ऑफ डिसाइडिंग whether a government has lost its majority was in the legislature. इस पर्टिकुलर केस में भी महाराष्ट्र के, कल मैंने गवर्नर का नेम बताया था, भगत सिंह कोश्यारी, है ना। तो ये मुझे लगता है भगत सिंह ज़्यादा याद रहना चाहिए था, बट ठीक है, सर नेम याद रह गया, वो भी अच्छा है। ठीक है, भगत सिंह कोश्यारी ने, उन्होंने बोला था कि एक स्पेशल सेशन बुला लो, कन्वीन कर लो, बट उसकी हो नहीं पाया वो, ठीक है, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशन है? नेक्स्ट पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन, SC ऑब्जर्वेशंस। तो हम एक सिंपल सी लाइन में लिखेंगे, गवर्नर को रिक्वेस्ट कर दिया था, जो हमारे डिसेंटिंग MLAs थे, जो नहीं अग्री कर रहे थे पार्टी के विप से या वो अलग होना चाहते थे, उनको गवर्नर को उन्होंने बोला और गवर्नर ने भी बोल दिया स्पेशल सेशन बुला लेते हैं, ठीक है। तो कोर्ट अग्रीड विद द रिक्वेस्ट ऑफ डिसेंडेंट MLAs डिसिडेंट MLAs जो डिसेंट करते हैं, डिसएग्री करते हैं, ठीक है, डिसिडेंट MLAs, that the governor can direct the floor test। हालांकि हमारा जो SR बोमे केस है, उसको कोर्ट करने के बाद जब मैं आपको ये स्टेटमेंट लिखवाती हूँ, जो कोर्ट ने बस उनसे एग्री किया है, ये स्टेटमेंट मैं इसलिए लिखवा रही हूँ ताकि आपको रियलाइज हो कि फ्लोर टेस्ट इस टाइम न्यूज में, क्योंकि कोर्ट ने यूज किया है वो टर्म अपने ऑब्जर्वेशन में, ठीक है। फ्लोर टेस्ट इमीडिएटली टू प्रिवेंट हॉर्स ट्रेडिंग। क्या होती है भाई ये हॉर्स ट्रेडिंग? वो जो मार्केट लगता है उसमें घोड़े, वो होता है क्या? So yeah, right now horse trading is a metaphor किसी और चीज को सिग्निफाई करने के लिए आप जब कोई और फ्रेज यूज करते हो, ठीक है, लिटरेरी डिवाइस होता है मेटाफर इंग्लिश में, ठीक है, ओके। चलो, फ्लोर टेस्ट के बारे में लिखना जरूरी है, फ्लोर टेस्ट को हाईलाइट करते हैं, ऐसा बॉक्स बनाओ फ्लोर टेस्ट लिख के उसके आसपास। नेक्स्ट लाइन से लिखो, a floor test is a legislative procedure through which an incumbent क्या होता है भाई? करंटली जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है, तो जब नए इलेक्शंस होने वाले होते हैं ना, तो बोलते हैं रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट कि क्या ये पार्टी एंटी इनकम्बेंसी करेगी फेस, तो एंटी इनकम्बेंसी होता है मतलब जब आप रूल में थे तब आप अच्छा रूल नहीं कर पाए, दैट्स एंटी इनकम्बेंसी। इलेक्शंस के टाइम पे बोलते हैं कि लोग परेशान होंगे इनके रूल से, तो ये एंटी इनकम्बेंसी फेस करेंगे।
तो जब आप नेक्स्ट टाइम कमर्शियल मीडिया से इंटरेक्ट करो तो ये टर्म वो भी यूज करते हैं, एंटी इनकम्बेंसी, ठीक है। विच इज विच एन इनकम्बेंट गवर्नमेंट दैट इज सस्पेक्टेड, या विच इज सस्पेक्टेड भी लिख सकते हो, दैट इज सस्पेक्टेड to have lost majority to have lost majority is required to prove it still retains the confidence of the house. Next line, हम पूरा प्रोसेस बाय प्रोसेस बताएंगे, ठीक है। द सीएम मूव्स अ मोशन seeking a vote, seeking king KING, सी देखने वाला किंग, seeking नहीं, seeking, ठीक है। seeking a vote of confidence, comma, on which MLAs who are present in the house vote, full stop. Next line, if majority of members vote in favor, the government survives. क्योंकि ज्यादातर हम ये अज्यूम कर रहे होते हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, तो जब हम सोच रहे होते हैं ना कि नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, तो अगर सब लोग नो कॉन्फिडेंस मोशन के फेवर में वोट करें तो आप सोचोगे कि गवर्नमेंट फेल होनी चाहिए, पर नो कॉन्फिडेंस मोशन जैसा कुछ नहीं होता, मोशन होता है कॉन्फिडेंस मोशन। सो मूव किया जाता है कॉन्फिडेंस मोशन, तो यानी कि अगर फेवर में वोट आ रहे हैं तो गवर्नमेंट सर्वाइव करेगी, ठीक है। जबकि अगर आप ये लिख के आओगे ना कि नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव हो रहा है और लोग फेवर में वोट करें तो गवर्नमेंट सर्वाइव होगी, तो ये टेक्निकली इनकरेक्ट हो जाएगा। पहले तो नो कॉन्फिडेंस मोशन जैसा कुछ नहीं होता, ठीक है। हाँ, ऑपोजिशन जब मूव करती है और उसके फेवर में वोट आते हैं तब वो नो कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है। बट ऑपोजिशन नहीं मूव करती है, ज्यादातर अपना कॉन्फिडेंस प्रूव करने के लिए गवर्नर बोलता है कि अपना कॉन्फिडेंस जाके प्रूव करो, ठीक है। ऑपोजिशन तो जब सेशन रन कर रहा हो तब कर सकती है मूव, या फिर स्पीकर के पास ऑलरेडी वो कर सकती है कि एक मोशन एडमिट करवा दे, स्पीकर उसे लेके आए या ना लेके आए, ठीक है। लेकिन ये जो फ्लोर टेस्ट होता है ये गवर्नर की पोजीशन के अंडर हम कर रहे हैं, हम रोल ऑफ गवर्नर वाला क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं ना इन दिस मैटर। तो जब जो ऑपोजिशन है या फिर जो भी जो सेक्शन अलग हुआ है वो गवर्नर के पास जा रहा है और गवर्नर फ्लोर टेस्ट करने के लिए बोल रहा है, तो वो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, यानी कि फ्लोर टेस्ट कहाँ पे होता है, कॉन्फिडेंस मोशन में, ठीक है। ओके चलो, if majority members vote in favor the government survives. If the CM loses the vote the government has to resign, RESIGN, resign. Next line, voting can be conducted by either a voice vote or electronically चलो, आफ्टर मैथ में क्या हुआ था वो हमें कवर हो चुका है, हमें वो लिखना नहीं है। आफ्टर मैथ में हुआ ये था कि महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे, द देन सीएम, announced his resignation from the post of chief minister, and next what happened, Mr. Thackeray said that he was also quitting as a member of legislative council. Chalo. So these were the questions that we covered. Anything else you guys have noted on your margins? Good. Yes. हाँ.
इसके लिए पॉलिटिकल रीजन ही है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्यों होगा, कॉन्स्टिट्यूशन तो कहता है बना लो, तो कॉन्स्टिट्यूशनल कैसे होगा? यू सी इफ एंड जॉइंस अनदर पार्टी, अगर एक एमएलए ने रिजाइन कर दिया जिस पार्टी की टिकट पे वो इलेक्शन रन करके आया था, उसने उस पार्टी से रिजाइन कर दिया, जब लोगों ने उसे वोट किया था, एंटी डिफेक्शन क्यों अप्लाई होता था? क्योंकि वो पॉलिटिकल मैंडेट को कुछ समझते ही नहीं थे, ठीक है? तो जब जब उस पार्टी की टिकट पे उस एमएलए को इलेक्ट किया, उस टाइम पे उसकी फेस वैल्यू जो थी, जो भी गिवन फेस वैल्यू थी, जो भी उसकी सच्चाई थी, अब वो चेंज हो चुकी है, तो मैंडेट भी डिफरेंट हो सकता है इन दिस केस, तो आइडियली अप्लाई होना चाहिए, बट क्योंकि एक्ट में इस तरीके से लिख दिया गया है, तो ये एथिकल प्रॉब्लम आ जाता है। It should have been, yes. Let's see what clarity comes up. This controversy has recently picked up. Yes. If the complaint is not made, एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है पार्टी को कि भाई इन्होंने हमारे साथ डिफेक्ट किया है, अगर वो कंप्लेंट ही मूव ना करे तो नहीं होता है, ठीक है? Again, think about the idea. You have been elected as an MP from a party's ticket. Think about the philosophy कि एक रिप्रेजेंटेशन आपको इसीलिए मिली है क्योंकि आपकी पूरी फेस वैल्यू में जो कंट्रीब्यूट करा था जब एक सिटीजन आपको वोट करने जाया था, दैट इज दैट यू अग्रीड टू सर्टेन आइडियोलॉजी a party was carrying. Your party on whose ticket you ran the election and won it has asked you to vote in a certain manner. And if you are डूइंग डिच, धोखा दे दिया, तो अभी आपको एक वायलेशन आपने की है विद ऑल दैट फिलॉसफी दैट वर्क्स बिहाइंड योर इलेक्शन. Oh yes, but along with that, the the fact of the matter is that party does count as well. I'm not saying it's the only criteria, I'm saying it's a major criteria. Have to vote, yes. Harsh reality, but true. Yeah. हाँ हाँ, कुछ बिल्स के लिए विप अलाउड नहीं होता है. मतलब अगर आप उस अगर कोई विप उन्होंने दे भी दी है, अलाउड नहीं होता है, एज इन उसके साथ स्टिक करना कंपलसरी नहीं होता है. तो आप ये अलाउड नहीं कि विप आप पे लगाई है, तो अगर आपने विप नहीं भी फॉलो किया तो उस पर कंप्लेन हो जाए, हर हर मोशन में ये अलाउड नहीं होता है. हाँ, उन पे ही मोस्टली आती है और बाकी सब तो पार्टी के साथ चलती हैं. अदरवाइज अच्छा ऐसा भी नहीं है कि उन पे ही लगाई जाती है विप जिसमें कॉन्फिडेंस प्रूव होना हो एक गवर्नमेंट का या नहीं होना हो, क्योंकि मनी बिल में सेम केस है कि अगर वो नहीं पास हुआ तो कॉन्फिडेंस का, वोट ऑफ थैंक्स में सेम केस है, ठीक है? बट आपके बजट में सेम केस है. तो आप सोचते हो कि उस पर विप लगाई जाएगी, पर आप विप के बारे में जब सोच रहे हो ना इस कॉन्टेक्स्ट में, तो आप सोच रहे हो रूलिंग पार्टी के पर्सपेक्टिव से, विप के बारे में सोचो ऑपोजिशन के पर्सपेक्टिव से. किसी भी मैटर पे वो विप बोल सकता है कि हाँ इस ये वाला वोट आने वाला है, ये वाला या मोशन आने वाला है, ये वाला बिल आने वाला है, आप इस अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है, वोट. विप इज इनफॉर्मल इन इंडिया. They can do it whenever they want to do. There is no particular constitutional context to a whip.
Yeah, but it is as in a party. If you are joining a party and you are violating the principles of the same, going against the party, it's almost like you are going, see, अच्छा देखो, आपने अपनी सीट बचाने के लिए एक पर्टिकुलर पार्टी के विप के अगेंस्ट, आप अगर कहो विप को नहीं ले रहे, ठीक है, पर आपको पता है अगर मैं इस पार्टी को लीव करूंगा तो मेरी सीट चली जाएगी, पर मैं रहना पार्टी एक्स के साथ जाता हूँ जो रूलिंग पार्टी है, मैं अपनी अपोजिशन पार्टी में नहीं रहना चाहता, तो वो कहेंगे कि ठीक है सीट मत छोड़ो क्योंकि आपकी सीट चली जाएगी, आप वोट हमें करते रहो। फिर पॉइंट क्या है? सीट भी बच गई, एंटी डिफेक्शन भी नहीं लगा, उस पार्टी के अगेंस्ट आपने काम भी कर लिया। दिस इज अ मेजर लूप होल, राइट? तो अगर यहाँ पे विप को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप उनकी तरफ हो, या तो आप वोट कर रहे हो, आप वोट कर रहे हो लेकिन हमारे अकॉर्डिंग नहीं कर रहे, तो दो ही तरीके हैं वोट करने के, या तो आप हमारे साथ करोगे या तो उनके साथ करोगे। तो अगर आप उनके साथ वोट कर रहे हो तो हमारे साथ शायद सिर्फ इसीलिए रह रहे हो क्योंकि आपको अपनी सीट की चिंता है, वरना तो आप उन्हीं की साइड हो। सो थिंक अबाउट इट इन प्रिंसिपल टर्म्स, राइट? हो गया पक्का? ठीक है। फिर तो बहुत इजी हो जाता, कोई भी एमएलए अपनी सीट नहीं लीव करने के लिए रिजाइन नहीं करता बट वोट करता रहता। किसी भी पार्टी को या किसी भी बिल को किस लिए जरूरत होती है एमपीज की प्रेजेंस की? वो बिल्स पास करवाने के लिए ना। चलो नेक्स्ट, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ कन्विक्टेड लेजिस्लेटर्स। आजम खान, रिमेंबर अभी रिसेंटली एमएलए, ही वॉज कन्विक्टेड टू अ 3 year जेल सेंटेंस। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ इन्फ्लेमेटरी स्पीच दे दी थी इन 2019, ठीक है। बट उसी के साथ एक और एमएलए भी हैं, विक्रम सिंह सैनी उत्तर प्रदेश से, ठीक है, जिनको भी 2013 में मुजफ्फरनगर में रायट्स हुए थे जिसके लिए 2 year की जेल टर्म पे भेजा था। उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, ऐसा उनकी सीट वैकेंट भी डिक्लेयर नहीं हुई है, वो डिस्क्वालीफाई नहीं हुए हैं, जबकि आजम खान को डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो ये थोड़ा कंट्रोवर्सी है, बट हम कंट्रोवर्सी में ना पड़ते हुए हमें ये पता होना चाहिए कि कोई अगेन कंपल्सिव टर्म नहीं है, एक बस प्रोविजन है। तो टर्म को एक लूप होल की तरह बहुत यूज किया जाता है। अगेन स्पीकर का इलेक्शन नहीं हो रहा क्योंकि टर्म नहीं है, जब तक सीट वैकेंट है बस ये इंश्योर करना है कि काम फिर भी चलता रहे, तो डेप्यूटी स्पीकर करे जा रहे हैं, ठीक है। चलो नाउ व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड? तो न्यूज स्टेटमेंट है कि 2 legislators वर कन्विक्टेड, ठीक है, ऑन क्रिमिनल चार्जेस, बट ओनली वन, whose name is Azam Khan, has been disqualified and his seat is declared vacant by the state's legislative assembly secretariat, which means now his seat within 6 months is supposed to be filled through a by-election, right? But the controversy is what, कि 2 हो चुके हैं convicted, but एक्शन सिर्फ 1 के अगेंस्ट लिया गया, और इनफैक्ट जो दूसरे वाले हैं उनका ऑफेंस पहले से है, जिनके अगेंस्ट अभी तक साइलेंस मेंटेन किया हुआ है, ठीक है। इसमें स्टोरी यही है विद स्पेसिफिक नेम्स जो मैंने ऑलरेडी ले लिए, आजम खान एंड विक्रम सिंह सैनी, ठीक है। आजम खान ने इश्यूज क्रिएट किए थे इन्फ्लेमेटरी स्पीच 2019 की, और विक्रम सिंह सैनी कन्विक्टेड हैं फॉर 2 years जेल टर्म इन मुजफ्फरनगर रायट्स 2013, ठीक है। अब यहाँ पे व्हेन डज द कन्विक्टेड अट्रैक्ट डिस्क्वालिफिकेशन, इसमें प्रॉपर आरपीए के अंडर क्या बात की गई है, कौन से ऑफेंसेस हैं, प्रॉपर ऑफेंसेस की लिस्ट लिखेंगे, ठीक है। फिर इज देयर अ लीगल प्रोटेक्शन फॉर लेजिस्लेटर्स अगेंस्ट डिस्क्वालिफिकेशन, तो ये भी अवेलेबल है, आरपीए के अंडर भी अवेलेबल है, सुप्रीम कोर्ट के थ्रू भी आप रिलीफ ले सकते हो। ऐसा कई बार एक्सेप्शनल केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने किया है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्ड बाय वर्ड बोला भी है कि ऐसा हम एक्सेप्शनल केसेस में ही करेंगे, दिस हैज टू बी वेरी वेरी एक्सेप्शनल, बट सुप्रीम कोर्ट उनको अलाउ कर देते हैं, उनका जो कन्विक्शन है उसे कई बार ख़त्म भी कर देते हैं या फिर कम कर देते हैं ताकि वो पर्सन जो है इलेक्शंस रन कर सके। सुप्रीम कोर्ट उन्हें परमिशन दे देता है कि वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सके, वरना जो डिस्क्वालिफिकेशन होता है ना, वो होता इस तरीके से है कि
टोटल 6 ईयर्स के लिए आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो अगर आप मोर देन 2 ईयर्स की जेल टर्म के लिए कन्विक्टेड हो, ठीक है। या फिर उसी ऑफेंस में कई बार ऐसा होता है ना कि फाइन और जेल टर्म और बोथ, तो अगर उस ऑफेंस में जेल टर्म आती है 2 ईयर्स या उससे ज़्यादा की, पर आपको फाइन लग रहा है, तो भी सेम ही ऑफेंस है। तो बात ये नहीं कि आपको पनिशमेंट कितनी मिली, बात यह है कि आपने ऑफेंस किस मैग्नीट्यूड का किया, ठीक है। तो उस मैग्नीट्यूड के ऑफेंस के लिए जिसमें आपको अगर फाइन भी लग रहा है पर 2 ईयर जेल टर्म भी अवेलेबल है, तो आप 6 ईयर के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। आप इलेक्शंस भी नहीं रन कर सकते क्योंकि आप बैठ नहीं सकते एज एन एमएलए, तो आप इलेक्शंस रन करके क्या करोगे, ठीक है। ठीक है, तो ये 6 ईयर्स का डिस्क्वालिफिकेशन रहता है यहाँ पे। अच्छा, मैंने ये बात क्यों शुरू की थी, हाँ, तो ये इससे प्रिवेंट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास भी प्रोविजंस है, सुप्रीम कोर्ट किसी को अलाउ कर सकता है, ठीक है। फिर इलेक्शन कमीशन के पास भी है ये प्रोविजंस। इलेक्शन कमीशन भी आरपी एक्ट 1951 के अंडर किसी को अलाउ कर सकता है टू रन द इलेक्शंस, ठीक है। मतलब एक रिलैक्सेशन की अवेलेबिलिटी होती है। सो लीगल प्रोटेक्शन, यस, 2 ways आर अवेलेबल, ठीक है। कैन द डिस्क्वालिफिकेशन बी रिमूव्ड, yes, that can also be removed. Again, इलेक्शन कमीशन अगर रिमूव ही कर दे तो, और सुप्रीम कोर्ट भी रिमूव कर सकता है, ठीक है। चलो, यही स्टोरी है, स्टोरी बिहाइंड में कुछ लिखना नहीं है। एक बार न्यूज रीड कर देती हूँ। आजम खान एमएलए was sentenced to 3-year jail term for making an inflammatory speech in 2019 as disqualification upon conviction on a criminal charge accompanied by a prison sentence of 2 years and more is immediate. The assembly secretariat declared his seat vacant. तो डिस्क्वालिफिकेशन एकदम इमीडिएट होती है, अगर इस तरीके का कुछ हो जाए तो असेंबली सेक्रेटेरिएट ने भी इमीडिएटली वेकेंट डिक्लेयर कर दी, ठीक है। इसके बाद आफ्टर मैथ में क्या होगा, बाई इलेक्शन होगा, उनकी सीट वेकेंट है, फिल करने की जरूरत है, तो बाई इलेक्शन के थ्रू फिल की जाएगी। हाउएवर, देयर हैज बीन नो सच रिस्पॉन्स इन रिगार्ड टू विक्रम सिंह सैनी who is also an MLA after he was sentenced to 2 years imprisonment in connection with Muzaffarnagar riots of 2013, ठीक है। अब यहाँ पे लिखना स्टार्ट करेंगे, व्हेन डज द कन्विक्शन अट्रैक्ट डिस्क्वालिफिकेशन। फर्स्ट पॉइंट, सेक्शन 8 ऑफ आरपीए, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। बेसिकली क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को प्रिवेंट करने के लिए इस तरीके का प्रोविजन आया है, ठीक है। तो अगर आप इस मैग्नीट्यूड का कोई क्रिमिनल ऑफेंस करते हो जिससे आपको 2 इयर्स की जेल टर्म या उससे ज़्यादा की, या फिर कोई फाइन लगता है उसी सर्टेन ऑफेंस के लिए, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। इससे जो क्रिमिनल्स हैं प्रिवेंट किया जाता है कि ज़्यादा पॉलिटिक्स में उनका एंट्री ना हो, ठीक है। 6 इयर्स के लिए उनको प्रिवेंट कर दिया जाता है। बट इसमें कंडीशन ये है कि आपके अगेंस्ट चार्जशीट फाइल हो गई है तो भी नहीं, आपके अगेंस्ट आपको जुडिशियल कस्टडी में ले लिया गया तो भी नहीं, आपको सजा सुना दी जानी चाहिए, यू मस्ट बी कन्विक्टेड, ठीक है। यानी कि कोर्ट का जो फाइनल ऑर्डर है आपकी पनिशमेंट का वो आ जाना चाहिए, ठीक है। तो जब ये प्रोसेस भी चल रहा होता है ना, जो कि काफी टाइम तक चल रहा होता है, तो उस टाइम पे भी इलेक्शंस होते रहते हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल तो नहीं है डिक्रिमिनलाइज करने में पॉलिटिक्स को, बट हाँ प्रोविजन हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। चलो, यहाँ पे सेक्शन 8 ऑफ आरपीए 1951 contains provisions aimed at decriminalizing Z भी लिख सकते हो, decriminalizing electoral politics. Next line, 2 categories
two categories of criminal cases that attract disqualification upon conviction hyphen. First point, offenses that entail disqualification for a period of 6 years for a period of 6 years upon any conviction, यानी कि किसी भी तरीके की सजा हो. वो 2 years वाला यहाँ पे मैंडेटरी नहीं होता. कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं कि किसी भी तरीके की सजा हो बट आपका क्राइम इस नेचर का होता है कि आपको अलाउ नहीं किया जा सकता. यू आर स्टिल डिस्क्वालिफाइड. कितने टाइम के लिए? 6 years के लिए. ठीक है, upon any conviction. And number 2, if the punishment is a fine or imprisonment of 2 or more years. ठीक है. नाउ नीचे एक नोट बनाएंगे, नोट, क्योंकि ये टेक्निकल क्वेश्चन है, ये कल को बाय चांस जस्ट ऑन अ सेफ साइड. नोट, the 6-year period will run from the date of conviction in case of fine, but if there is prison sentence, the disqualification will begin on the date of conviction and will continue up to the completion of 6 years after the release of individual from jail. यानी कि अगर तो फाइन लगा है तो जिस दिन वो कन्विक्शन दी गई, यानी कि जिस दिन वो जजमेंट दी गई, जिस दिन फाइन आप पे लगाया गया, उस दिन से स्टार्ट होके 6 years तक आप डिस्क्वालिफाइड हो. ठीक है. लेकिन मान लो आपको इम्प्रिजनमेंट दे दी आजम खान की तरह 3 साल की, भगवान ना करे कि आपको मिले, है ना. तो यहाँ पे 3 साल की अगर इम्प्रिजनमेंट है जी को, तो इस दिन से तो वो डिस्क्वालिफाइड है ही. मतलब अब जेल टर्म सर्व करेंगे और अगर पैरोल पे भी बाहर आ जाएं तो वो नहीं कर सकते इलेक्शन कॉन्टेस्ट. बट जिस दिन ये 3 साल खत्म होंगे उस दिन के बाद से भी अगले 6 साल तक इलेक्शंस कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते. एक बार फिर से ये लाइन सुनो, दैट इफ द फाइन और पनिशमेंट इज फाइन, the period will run from date of conviction. But if there is a prison sentence, the disqualification will begin on the date of conviction and will continue up to the completion of 6 years after the date of release from the jail. ठीक है. तो 9 years के लिए पार्किंग स्पॉट एम्प्टी है उनकी सीट से. हाँ? अरे बता तो रही हूँ कि वो कन्विक्टेड नहीं होते ना, मतलब उनकी नहीं, आप जब तक उनकी एक्चुअल सेंटेंस, जब तक केस रन कर रहे हैं, कोर्ट ने सज़ा नहीं सुनाई है बट वो लेट्स से जुडिशियल कस्टडी में है, या अभी जो मैं ऑफेंसेस की लिस्ट बताऊंगी उसके अलावा कोई ऑफेंस है,
ठीक है। सो हम एक सब हेडिंग डालेंगे मेजर आईपीसी ऑफेंसेस, मेजर आईपीसी ऑफेंसेस included under this, included under this head are जगदीश मार्जिन है ना कॉपी के पास, हाँ यूज करो। आर नंबर वन making speeches, making speeches that cause enmity, enmity first है, making speeches that cause enmity between groups, अब आईपीसी की कौन सी धारा है वो लिखना जरूरी तो नहीं है, बट दिस इज सेक्शन 153A अगर ब्रैकेट में लिखना चाहो तो। एंड डूइंग सो इन अ प्लेस ऑफ वर्शिप, यानी कि अगर ये ऑफेंस करते हो तो 153A लगेगी, पर यही ऑफेंस प्लेस ऑफ वर्शिप में करते हो तो 153A और सेक्शन 505 दोनों लगेंगे, ठीक है। एंड डूइंग सो इन प्लेस ऑफ वर्शिप, सेक्शन 505। नेक्स्ट पॉइंट, bribery and personation, during elections and other electoral offenses, during elections and other electoral offenses। अच्छा, पर्सनेशन क्या होता है कि आप बिना किसी अथॉरिटी के सिर्फ क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी उस एरिया में इन्फ्लुएंशियल है, उस अथॉरिटी के पर आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है सर्टेन डिसीजंस लेने की, तब आप वो डिसीजंस उस कैपेसिटी को एक्वायर किए बिना ले रहे हो, यानी कि एक फ्रॉड्यूलेंट डिसीजन ले रहे हो, या और किसी तरीके से आप कोई काम कर रहे हो जिसमें आपके इंटेंट्स फ्रॉड्यूलेंट हैं और आपके पास अथॉरिटी नहीं है। तो इलेक्शंस के टाइम पे ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि किसी की लैंड है, वो कुछ केस चल रहा है, अरे हम करवा देंगे, आपके पास क्या अथॉरिटी है अगर केस चल रहा है, तो ऐसे आप किसी को अगर डरा धमका के उनके पास से वो उनका सुलटा भी देते हो, उस प्रॉब्लम को ठीक भी करवा देते हो, तो आप एक आर्बिट्रेटर तो नहीं हो। एक प्रोविजन है ना कि कोर्ट के बाहर भी चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं, बट आर्बिट्रेटर चाहिए, प्रॉपर एक एडवोकेट चाहिए, मीडिएटर चाहिए, है ना। आपके पास वो अथॉरिटी भी नहीं है, ठीक है। तो ये आपको तब करना था जब तक पुलिस में एफआईआर फाइल नहीं हुई थी, तो ये सोशल सेटिंग में आप अपना पर्सनल कैपेसिटी में कुछ भी करते रहो, ठीक है। बट फ्रॉड्यूलेंट पोजीशंस पे अपने आप को एक अथॉरिटी मान लेना, ये पर्सनेशन है, ठीक है। स्पेशली ड्यूरिंग इलेक्शंस ये चीज़ें की जाती हैं, इट्स एन इलेक्टोरल ऑफेंस। नेक्स्ट, offenses relating to offenses relating to rape and cruelty to women by husband and लेटर्स relatives, अब लेटर्स नहीं लिखना है तो his relatives लिख लो, ठीक है, and his relatives। Next, provisions of laws such as Customs Act, Protection of Civil Rights Act, Next, कॉमा करके Unlawful Activities Prevention Act, UAPA लिख सकते हो, etc. are among the offenses plus law for prevention of sati, comma corruption, comma terrorism, and insult to national flag and national anthem, etc. are also part of this group.
are also part of this group. करप्शन भी लिखवाया मैंने, नहीं लिखा? हाँ, हम नोट करके लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में, नोट नोट all other criminal provisions, all other criminal provisions from a separate form a separate category, form 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 a separate category under which conviction will not entail disqualification, entail disqualification. entail disqualification. ठीक है? Now, is there legal protection for legislators against disqualification? देखो, सबसे पहले तो लीगल प्रोटेक्शन सबसे बड़ी यही है कि अपना केस प्रेजेंट करने के लिए डिस्क्वालिफिकेशन से पहले उनको 3 मंथ्स का टाइम मिलता है. ठीक है? सो फर्स्टली हम फर्स्ट पॉइंट से लिखना शुरू करेंगे. अंडर सेक्शन 8 क्लॉज 4 ऑफ आरपीए, अंडर सेक्शन 8 क्लॉज 4. अब सेक्शन 8 मैंने ऑलरेडी रेफर कर दिया है क्योंकि वो डिस्क्वालिफिकेशन से ही डील कर रहा है. तो उसी सेक्शन 8 के क्लॉज 4 यानी कि 8 सेक्शन 8 लिख के ब्रैकेट्स में आप 4 लिखोगे. ऑफ आरपीए कॉमा लेजिस्लेटर्स could have avoided disqualification under disqualification until 2013. तो ये जो 3 मंथ्स का प्रोविजन है, ये मैंने इसके बारे में पहले तो बात की नहीं थी. वो इसीलिए नहीं की थी क्योंकि बस 2013 तक ही अवेलेबल था. ठीक है? नाउ it leads to immediate disqualification after conviction. So your answer is no such legal protection as such is available, but here is the protection. Can the disqualification be removed? अब यहाँ पे हम लिखेंगे इसी क्वेश्चन के अंडर, दोनों क्वेश्चंस कनेक्टेड से ही हैं. तो अगर आपको आगे इसको कोट करना हो कि किस तरीके से डील करा जाएगा अगर डिस्क्वालिफिकेशन अपना, पानी पी लो, आराम से पीना, अटक जाएगा है नहीं. लो पियो पानी. जगदीश थोड़ा कंट्रोल किया करो. ठीक है? जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का सेक्रेटेरिएट एक के ऊपर साइलेंट है तो ऑब्वियसली इमीडिएटली का प्रोविजन जरूर है, बट जब तक ये लोग डिक्लेयर नहीं करेंगे कि सीट वैकेंट होगी तब तक बाई इलेक्शंस नहीं होंगे. तो इट इज अबाउट वैकेंसी डिक्लेरेशन. वो तो डिस्क्वालीफाई हो गए, नाउ दैट पर्सन इज नॉट अलाउड टू रन द इलेक्शंस एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, बट प्रॉब्लम इज द वैकेंसी ऑफ सीट. वो 3 महीने तक एक लीगल प्रोविजन था उनके पास अवॉइड करने का कि वो अपना केस प्रेजेंट कर सकते थे. जब वो कोई इंसान अपना केस प्रेजेंट कर रहा है तो आपको दोनों प्रोबेबिलिटीज साथ में लेके चलनी चाहिए कि उसके पास एक लीगल प्रोविजन अवेलेबल है टू इवन एस्केप द डिस्क्वालिफिकेशन. ठीक है? अभी इमीडिएट होने की वजह से वो जो गैप था कि डिस्क्वालीफाई ना करो मुझे, चाहे मैंने एक ऑफेंस किया उसके लिए कन्विक्टेड हो गया, वो प्रोविजन अवेलेबल नहीं है. हाँ, क्योंकि वो 2013 तक था, बट 2013 में दैट इंसिडेंट हैपेंड.
his conviction came later on, and this provision was available only until 2013. He has not presented any of his case within the period of 3 months or so. वो हो गया 2013 में खत्म, उसका conviction अभी आया है, and disqualification पे problem नहीं है, problem है कि उनकी seat vacant declare नहीं की है. जब वो convicted है, वो elections run नहीं कर सकते, he is disqualified. But if his MLA seat is still filled, और वहां पे वो स्टिकर लगा रहता है ना, वो हटाया नहीं है विक्रम सिंह सैनी, राइट? चलो, very metaphorical, he cannot have his seat but somebody else could have had, right? Now correct, his constituency is going unrepresented because of legislative assembly secretariat's silence, ठीक है, which is of course due to political motivation or lack of political will for letting the bureaucracy, because secretariat is forming what? Bureaucracy is forming secretariat, right? So political will not supporting the bureaucracy, right? Now, can disqualification be removed? अब जो भी लीगल प्रोविजन है ना इस रास्ते के, वो यहीं से अवेलेबल है, ठीक है? फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर, सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू स्टे, अगर उनकी जो सेंटेंस है उसी को स्टे कर दें, ठीक है, टू स्टे नॉट ओनली द सेंटेंस but also the conviction of a person, in some rare cases, next line में लिखना, in some rare cases, comma, conviction has been stayed to enable appellant to contest an election, next line mein, however Supreme Court, just write initials SC, has made it clear that such a stay should be very rare for special reasons, and for special reasons, ब्रैकेट में लिखो एक्सेप्शनल, So, however, Supreme Court has made it clear that such a stay should be very rare and for special reasons, bracket में exceptional. Next line, the RPA itself, next point है, the RPA itself provides a remedy through election commission, through EC, comma, under section 11 of the act. So which act was dealing with disqualification? Section 8, right? Remedy is available in section 11 of the act. The EC may record reasons and either remove or reduce the period of person's disqualification. यानी कि जो EC है ना वो सिर्फ डिस्क्वालिफिकेशन से डील कर सकता है, तो डिस्क्वालिफिकेशन रिमूव भी कर सकता है, रिड्यूस भी कर सकता है, 6 साल से कम भी कर सकता है डिस्क्वालिफिकेशन, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है वो तो सेंटेंस पे भी स्टे लगा सकते हैं, कन्विक्शन पे भी, उनकी सजा पूरी होने के टाइम पे भी रोक लगा सकते हैं कि ठीक है इनको इतनी सजा नहीं देनी है, हमने कम कर दी, या पूरी सेंटेंस पे भी, जैसे हाई कोर्ट ने सेंटेंस कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के पास चले गए तो स्टे लग गया ना, जब आपका केस आ गया तो और आप कन्विक्टेड नहीं होगे, सुप्रीम कोर्ट रोक देगा कि अब हमारे पास है ये केस, है ना। चलो, सो दिस वाज अबाउट this particular story and whatever we had to cover. Any questions?
हाँ, तो वो कन्विक्ट हो जाएंगे। हाँ, फिर जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आएगा फिर वो अंडू हो जाएगा उस टाइम के लिए, है ना। फिर उनका डिस्क्वालिफिकेशन भी अंडू हो जाएगा। लेट्स से अपकमिंग इलेक्शंस है 3 महीने बाद, पर्सन जस्ट डिस्क्वालीफाई हुआ है, उन्होंने थोड़ा टाइम लिया, अपील कर ली सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, पर उस थोड़े से गैप के टाइम पे वो डिस्क्वालीफाइड माने जा रहे थे। अब इलेक्शंस आने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास केस है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, उनको उनकी जो प्ली है उसको एडमिट कर लिया है, अब वो इलेक्शंस लड़ पाएंगे, ठीक है। नाउ उस साइड क्यों चला गया भाई। ऑल अबाउट नाइन्थ शेड्यूल, मुझे पता है आप लोगों ने किया हुआ है नाइन्थ शेड्यूल, बट यहाँ पे हमारे पास थोड़ा डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है। हमारे पास कॉन्टेक्स्ट है झारखंड के बिल का। अभी आज के दिन में मैंने ऑलरेडी नाइन्थ शेड्यूल के बारे में बात की थी इन द वेरी फर्स्ट करंट अफेयर। आज का जो करंट अफेयर ये वाला है, इट्स अ लास्ट, ठीक है। तो जो मैंने बोला था ना 31 आर्टिकल को जरा होल्ड पे रखना, वो अब हम यहाँ पे बहुत डिटेल में कवर करेंगे। तो हुआ क्या है, हुआ ये है कि झारखंड का एक न्यू बिल आया है, इट सीक्स टू इंक्रीज रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट पोस्ट्स नॉट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। इतना सच के आसपास का झूठ बोलने के लिए ना यूपीएससी को बस यहाँ पे इतना ही टर्म चेंज करना पड़ता है। जैसे ही आप 77% रीड करोगे ना तो आपको लगेगा बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। अगर बस यहाँ पे गवर्नमेंट पोस्ट की जगह एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस लिख दिया ना तो सेंटेंस तो पूरा गलत ही हो जाएगा, तो ये थोड़ा ध्यान से, ठीक है। नीड्स इट्स इंक्लूजन इन द 9th शेड्यूल टू टेक इफेक्ट, ठीक है। तो किया क्या है, झारखंड की लेजिस्लेटिव असेंबली ने, उनके लेजिस्लेचर ने ये बिल पास कर दिया है, और बिल में लिखा है कि ये उस दिन से इन इफेक्ट आएगा जिस दिन ये 9th शेड्यूल में इंक्लूड हो जाए, उससे पहले ये इन इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि उनको पता है कि इफेक्ट में लाएंगे चैलेंज हो जाएगा, ठीक है। अब कोई ऐसा एक्ट चैलेंज करना तो मैंडेटरी हो जाएगा लोगों के लिए, दे वुड वांट, बिकॉज वही 50% का कैप ब्रीच हो रहा है, ठीक है। तो उन्होंने बोला जब तक 9th शेड्यूल में नहीं आ जाएगा उसके तब तक हम इफेक्ट में नहीं लाएंगे। इट्स इंक्लूजन इन 9th शेड्यूल इज टू टेक इफेक्ट एंड ओनली देन इट विल बी इम्प्लीमेंटेड। फाइन, ये प्रॉपर बिल में गिवन है क्लॉज। No, how could it be? It's not part of basic structure. It's DPSP, affirmative actions. Does it violate the right to equality? No. No. Only if there are no fair grounds of providing them, then only there is violation of a fundamental right. Right? Because again, to ensure equality, to be true with your fundamental rights, you would need reservations in a society like India. The court will, yeah, because court way back declared that we are going to review all the laws even if you put it in the 9th schedule. But these guys want it to be in the 9th schedule. चलो, अब इस पूरी न्यूज़ की वजह से हमारा जो 9th शेड्यूल है ना वो न्यूज़ में आ जाता है, ठीक है। तो व्हाट इज झारखंड बिल अबाउट ये हम कवर करेंगे, ये इसमें हमें बहुत कुछ लिखने का नहीं रहेगा, हालांकि 9th शेड्यूल लिखने का रहेगा। जब हम 9th शेड्यूल के बारे में बात करेंगे तो हमें आर्टिकल 31A और 31B के बारे में भी बात करना होगा, पर जब मैं 31A और 31B करूंगी तो आपको अगर ये पता हो कि 31C भी है तो आपको लगेगा मिस हो गया कुछ तो आज के करंट अफेयर में, और फिर आप सोचोगे 31 क्या था जो ये ABC है, ठीक है। तो ये सब कवर कर लेंगे, पूरा 31 ही कवर कर लेंगे ताकि एक 360 डिग्री कवरेज आर्टिकल 31 का हो जाए, ठीक है, अलॉन्ग विद 9th शेड्यूल। तो अब झारखंड की फटाफट मैं स्टोरी कवर कर लेती हूँ, फिर हम रिटर्न पार्ट पे जाएंगे, बस सुनते जाओ, कुछ लिखना नहीं है फिलहाल। सो झारखंड रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज इन पोस्ट एंड सर्विसेज अमेंडमेंट बिल 2022 अभी रिसेंटली आया है, रेज रिजर्वेशन टू 77%, ठीक है, फ्रॉम करंटली कितना है 60%,
यानी कि 50% कैप तो अभी भी नहीं है, पर यहाँ पे और अभी सबसे ज्यादा किसके पास है रिजर्वेशन? अप्लाइड है, वो इम्प्लीमेंटेड है, 69% है उनके पास, ठीक है। हालांकि झारखंड के पास 60% ही है, पर अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है तो सबसे ज्यादा रिजर्वेशन हो जाएगा झारखंड में, है ना। सिर्फ 23% रह जाएगा ओपन कंपटीशन के लिए, ठीक है। तो ये जो बिल है, इट केम विद अ नोटिस दैट द एक्ट शैल टेक इफेक्ट आफ्टर इट इज इंक्लूडेड इन द 9th शेड्यूल. Fine. The 77% reservation of course breaches the 50% ceiling which was set by Supreme Court in the landmark case of Indira Shane versus Union of India. The total reserved seats in the jobs and education institutions obviously has crossed 50% in many states including Tamil Nadu, which is having it at 69% already. 69% seats are reserved, only 31% are open for competition, open competition, merit based competition. Now it is to be noted that Indira Shwane versus others and Union of India, which was there in 1992, the reservation of any manner should not exceed 50% unless court mentioned it in a judgment, in the judgment of Indra Shwane, unless there are exceptional circumstances. So as soon as you write exceptional circumstances in your judgment, you give way for further discourse to happen, which is why all these state level discourses are happening. Fine. सो वो जो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं उनके ग्राउंड्स कैसे प्रूव होंगे? अगर आपके पास एक क्वांटिफाइबल डेटा है कि हाँ भाई किसी को सच में जरूरत है, अब किसी को सच में जरूरत है तो कोर्ट डिनाई करके क्यों बुरा बने, ठीक है। बस आपको ये प्रूव करना है कि उसको है जरूरत, ठीक है। अब बात करते हैं 9 शेड्यूल की, क्योंकि इन्होंने हमारे लिए न्यूज का मैटर 9 शेड्यूल को बना दिया, इस रिजर्वेशन से तो हमारा कोई खास कंसर्न है ही नहीं, ठीक है। सो 9 शेड्यूल का हेडिंग डाल के 9 शेड्यूल के बारे में स्पेसिफिकली लिखेंगे। ये न्यूज स्टेटमेंट आपने नोट कर ली होगी, आई एम होपिंग, ठीक है। सो 9th शेड्यूल, 9th first point, 9th schedule contains a list. 9th schedule contains a list of central and state laws, which cannot be challenged in courts, Next line, change the paragraph, I mean. The schedule became a part of constitution. In 1951 by First Constitutional Amendment Act. Next line. It was created by new article 31B, which along with article 31A was brought brought to protect laws related to agrarian reform and for abolishing the zamindari system. अब जब हम 9 शेड्यूल के बारे में लिखते हैं, जैसे ही हमने ये सब 9 शेड्यूल के बारे में लिखा, हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है, बहुत एम्बिग्यूटी रह जाएगी अगर हम ये कवर ना करें कि अब आर्टिकल 31 ये बी ए जो भी हमने कोट किया इसके बारे में क्या है, ठीक है। तो 9 शेड्यूल के बारे में पूरा जानने के लिए नेक्स्ट सब हेडिंग डालेंगे आर्टिकल 31A, 31B, 31C। हालांकि 31C यहाँ पे रिलेटेड नहीं है, बट जस्ट टू कवर 360 डिग्री के फॉर्म में। First point, originally right to property was one of the fundamental rights, and provided that no person shall be
deprived of his property, deprived of his property, except, 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 except by authority of, by authority of law, full stop. Next line, change the line. However, however, comma, being one of, being one of the most controversial rights, the most controversial rights होता क्या था कि अच्छा वहाँ पे लिखा तो था कि अथॉरिटी ले सकती है आपसे, तो गवर्नमेंट ले लेती थी। फिर जो जमींदार होते थे वो कोर्ट में केसेस लेके जाते थे, क्योंकि उन्होंने, गवर्नमेंट ने जब लिया था, लेना स्टार्ट किया था ना, तो उन्होंने एक सर्टेन लिमिट लगाई थी कि एक पर्सन के लिए इतना ही लैंड हम एलोकेट करेंगे, पर हेड की लिमिट थी। फिर फैमिली की एक कैपिंग थी, इस तरीके से था, ठीक है। तो वो पर हेड में अपनी फैमिली के लोगों पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, अपनी मैरिड डॉटर्स, अच्छा मैरिड डॉटर फिर उस फैमिली की नहीं काउंट होती है, उनके पास उनके लिए कर देते थे, उनके नाम कर देते थे। बेनामी प्रॉपर्टीज का कॉन्सेप्ट आ गया था, नौकरों के नाम पे जमीनें होती थी, नौकरों को ही नहीं पता होता था कि हमारे नाम पे इतना जमीन है, वो बेचारे वही मजदूरी करने में लगे हुए हैं, है ना, लैंड ओनर होते हुए भी। पर फिर one of the most controversial rights, comma, the 44th Amendment Act, the 44th Amendment Act of 1978, 1978 finally abolished the RTP, right to property, right to property, as a fundamental right, as a fundamental right, and it made it, anything you want to ask? यहाँ पे कोई बात हो रही थी ना अभी? Okay, चलो, keep moving. Right to property as a fundamental right, and it made it legal right, and it made it a legal right under which article? 300A. फंडामेंटल राइट्स कौन से आर्टिकल से स्टार्ट होके कौन से आर्टिकल तक रहते हैं? तो जब 31 बोलोगे तो वो तो फंडामेंटल राइट्स में आ जाएगा ना, जबकि राइट टू प्रॉपर्टी तो फंडामेंटल राइट्स है नहीं, ठीक है। चलो, जब लीगल राइट लिखते हो उसके नीचे एक एरो करो और वहां पे लिखो, उस लीगल राइट लिख के लीगल राइट को अंडरलाइन करो। अंडरलाइन करने के बाद जहां पे लीगल राइट लिखा है उसको ऐसे अंडरलाइन करो और नीचे एक एरो बनाओ, यहाँ पे लिखो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ताकि आगे कंफ्यूजन ना हो। फाइन। In part 12, 300A in part 12. Next line, 31, 31 led to a number of constitutional amendments. Constitutional amendments. मैं amendment लिखवा रही हूँ, बट हम बहुत डेप्थ में अमेंडमेंट्स डिस्कस करने नहीं लग जाएंगे अब, बिकॉज फिर वो बहुत आगे चला जाएगा। कौन कौन से अमेंडमेंट है हम हाइफन डाल के लिखेंगे। फर्स्ट, फोर्थ, सेवेंथ, 25th, 7th, 25th, 39th, 40th, 40th and 42nd अमेंडमेंट्स। बस फर्स्ट अमेंडमेंट के बारे में लिखेंगे कि नीचे एक नोट लगा के, नोट, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 inserted article 31A, inserted article 31A and 31B and 31B। इसके लिए जाना जरूरी है क्योंकि हम आर्टिकल्स ये वाले डिस्कस करें, तो आए ही फर्स्ट अमेंडमेंट से थे। वाइल
31C was inserted by 25th Amendment in 1971. 25th Amendment 1971. अब एक सब हेड, ये वाला एक मेजर सब हेड था 31A 31B 31C. अब एक सब हेड लिखो इसके नीचे, आर्टिकल 31A. 31A नीचे एक वर्ड लिखो, इंक्लूड्स हाइफन, नेक्स्ट लाइन में बुलेट पॉइंट बनाओ. एक्विजिशन ऑफ एस्टेट्स, एक्विजिशन ACQUISITION, acquisition of estates, 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 and related rights by the state. Next bullet point, taking over the management of properties by the state. Next line, next bullet point, amalgamation of corporations, amalgamation, AMALGAMATION, amalgamation of corporations, CORPORATIONS, corporations. Next bullet point, extinguishment, EXTINGUISHMENT, extinguishment or modification, MODIFICATION, modification of rights of directors or shareholders of corporations. ऊपर वाले पॉइंट से कॉर्पोरेशन के स्पेलिंग मैच करो. नेक्स्ट बुलेट पॉइंट, एक्सटिंग्विशमेंट ऊपर वाले पॉइंट से, और मॉडिफिकेशन अगेन प्रीवियस पॉइंट, ऑफ माइनिंग लीजेस, माइनिंग MINING, लीजेस LEASES, लीजेस. ठीक है, ये है आर्टिकल 31A. अब इसमें आपको कुछ भी नहीं लग रहा 9 शेड्यूल से रिलेटेड, बट मुझे ये बताना है कि 31 में पूरे में क्या है. ठीक है, 31B पे आओ. हालांकि 31A भी सपोर्ट करता है 31B को ही. ठीक है, अच्छा 31B से पहले एक नोट लिखो. नोट, it also provides guaranteed right of compensation in case of acquisition or requisition, REQUISITION, requisition of private property by the state, अब लिखो आर्टिकल 31B. इस तरीके की एक सब हेड करो 31B के लिए. It protects the acts and regulations included in the 9th शेड्यूल. अब देखो ये फंडामेंटल राइट्स में लिख दिया इन्होंने 31B में कि 9th शेड्यूल में कुछ भी लॉ अगर आप एनालिस्ट कर दोगे तो वो चैलेंज नहीं होगा. 9th शेड्यूल, from being challenged and invalidated in valid, VALID,
डेटेड के स्पेलिंग क्या होते हैं? ATED, तो डी के बाद ATED, इनवैलिडेटेड। ऑन द ग्राउंड of contravention, CONTRAVENTION, contravention of any of the fundamental rights, यानी कि अगर किसी फंडामेंटल राइट के साथ क्लैश में होंगे भी, तो अगर 9 शेड्यूल में वो लॉज एनलिस्ट कर दिए गए तो इनवैलिडेट नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट लाइन में the scope of 31B, we are writing under 31B itself, just change the line and write the scope of 31B is wider than 31A, because 31A तो बहुत specific चीज़ें enlist कर रहा है और उसी से डील करता है, जबकि 31B बहुत ज़्यादा चीज़ों से डील करता है। ठीक है, the scope of 31B is wider than 31A as it immunizes, IMMUNISES, immunizes any law included in ninth schedule from fundamental rights, FRs, fundamental rights. Next line. However, Supreme Court, just write initials SC, in IR Coelho, IR Coelho, case 2007 ruled that even laws under ninth schedule would be open to scrutiny 2007 में बोली थी सुप्रीम कोर्ट ने ये बात। if they violated FRs, that is fundamental rights, और basic structure, पूरा भी लिख सकते हो, basic structure doctrine, basic structure is also fine। ठीक है, अब नेक्स्ट आर्टिकल 31C, होल्ड करो, हाँ लिख लो। It says that no law that seeks to implement socialist directive principles, ये इसीलिए लिखवा रही हूँ क्योंकि इस लॉ के इस 31C में ही लिखे जाने का इस बात के एक लॉजिक है, क्योंकि जो आपसे प्रॉपर्टीज ले लेती है गवर्नमेंट, वो उनका जो प्रिंसिपल होता है वो यही होता है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में हमें बताया है कि हमें वेलफेयर के लिए काम करना है, लैंड इज अ लिमिटेड रिसोर्स जो गवर्नमेंट को चाहिए होगी, ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड वेल्थ ये हमें एस्केप करना है, कोशिश करनी है कम से कम हो, ऐसा है ना, तो ये सब डायरेक्टिव प्रिंसिपल से रिलेटेड है। सो इट सेज दैट नो लॉ दैट सीक्स टू इम्प्लीमेंट सोशलिस्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, इट सेज दैट no law that seeks to implement socialist directive principles specified in Article 39B and C. Article 39B and C shall be declared void on grounds of contravention of fundamental rights of FRs conferred by Article 14 और Article 19, by Article 14 और Article 19, यानी कि ये भी कुछ आर्टिकल 31B जैसा ही काम कर रहा है, फंडामेंटल राइट्स से अगर कुछ क्लैश होता है तो प्रिवेंट कर रहा है लॉज को, बट यहाँ पे 9 शेड्यूल की बात नहीं लिखी गई, ठीक है। हमें यहाँ पे एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है जो मैं वर्बली बता रही हूँ, ठीक है, हम ये लिखेंगे नहीं, यहाँ पे बात की है, कोट किया 39B को और 39C को। तो 39B कहता है ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटीरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी आर सो डिस्ट्रीब्यूटेड
एज बेस्ट टू सबजर्व द कॉमन गुड, यानी कि जो ओनरशिप है ऑफ रिसोर्सेज, ऑफ लैंड, मटेरियल, किसी भी तरीके का मटेरियल, वो कम्युनिटी में इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए कि सबका भला हो, कॉमन गुड इंश्योर हो सके, ठीक है। 39C क्या कहता है कि ऑपरेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम जो है कंट्री का डज नॉट रिजल्ट इन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, एंड क्या डिटरमाइन करने के लिए, फॉर द डेट्रीमेंशन ऑफ कॉमन गुड, कॉमन वेलफेयर, ठीक है। अब यहाँ पे एक नोट लिखेंगे नीचे, नोट 31A, आर्टिकल 31A, 31B एंड 31C have been retained, RETAINED, as exceptions to fundamental rights, FRs. Next line, article 31B, very important information, article 31B, that is 9th schedule wala, also has retrospective, RETROSPECTIVE, retrospective operation, यानी कि कोई लॉ जो 9th शेड्यूल के एग्जिस्ट करने से पहले एग्जिस्ट करता था, अगर उसे भी 9th शेड्यूल में कर दिया जाए, या फिर कोई लॉ जो अब 9th शेड्यूल में हमने किया है, तो पहले के भी जो उस लॉ के अंदर की गई इम्प्लीमेंटेशंस हैं वो भी 9th शेड्यूल में करने के बाद आपकी इम्यून हो जाती हैं, ठीक है। रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन, दैट इज इफ लॉज आर inserted in 9th schedule after they are declared unconstitutional, मतलब सुप्रीम कोर्ट कह दे कि भाई ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, एंड फिर पार्लियामेंट डिसाइड करे इसे 9th शेड्यूल में कर दो इंक्लूड, तो जो उसके अंदर जो भी इम्प्लीमेंटेशन हुई है वो वैलिड रहेगी, ठीक है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल, they are considered to have been in schedule since their commencement and thus valid, मतलब जब भी स्टार्ट हुई हो, एक बार 9th शेड्यूल में इंसर्ट की, चाहे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो गई हो, यही कंसीडर किया जाएगा कि जब से जो भी इम्प्लीमेंटेशन हुई है, जब से कमेंस हुआ है लॉ, उस दिन से 9th शेड्यूल में ही है, यानी कि जो अब तक उसके अंडर हुआ सब कुछ वैलिड है, ठीक है, एंड दस वैलिड, फुल स्टॉप। सो दिस इज इट इन दिस पर्टिकुलर current affairs mostly are an opportunity for us to revise our static portion, because this is also an opportunity for UPSC. Current affairs are just an opportunity for UPSC to ask from static portion, right? Okay. The reason was only welfare of the people. What else was the reason, right? Fundamental rights, आप ये recognize करो कि अभी वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग थे वही गवर्नमेंट में थे by the time first constitution amendment came in, ठीक है, एंड उनका तब रीजन फंडामेंटल राइट देने का भी सिटीजनशिप का गुड था, सिटीजनरी इज गुड, एंड बाद में भी इंटेंट वही था, तो रीजन वाज वेलफेयर ऑफ द पीपल एट लार्ज। और जो सोशलिस्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, यानी कि जो कॉन्सेंट्रेशन, सोशलिस्ट क्या होता है, सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी है ना, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है हम उनको सोशलिस्ट में कैटेगराइज करते हैं। देयर आर सोशलिस्ट, देन देयर लिबरल, देन देयर गांधीयन, ठीक है। जो सोशलिस्ट वाले हैं, जो कॉन्सेंट्रेशन से हमें प्रिवेंट करते हैं, उनको हम इम्यून रखते हैं, ठीक है। एनीथिंग एल्स? यस। आयर कोयलो के इसमें ये बोला था कि 9th शेड्यूल में अब जो भी कुछ है, मतलब 9th शेड्यूल एज अ होल हम तो जुडिशियल रिव्यू करेंगे, चाहे आप उसे 9th शेड्यूल में इंक्लूड कर लो। जो पहले से इंक्लूडेड थी चीजें वो वायलेटिव नहीं थी, इंटेंट वैसा नहीं था, उसके बाद उसे एज अ डोर यूज करने लगे थे पार्क करने के लिए ऐसे लॉज,
तो इसीलिए जो बेसिक स्ट्रक्चर का भी आइडिया है, अगर उसमें भी हम आप कोई फंडामेंटल राइट्स को एक्सेप्शन दे के देखो, सुप्रीम कोर्ट एजिटेट करेगा, है ना, वो जुडिशियल एक्टिविज्म में आएगा। बट जो पहली चीज़ें हो गई हैं, अनलेस वो चैलेंज होती है, सुप्रीम कोर्ट अपने कभी भी डिसीजंस को रिव्यू करता है कि नहीं अब तो हम रेट्रोस्पेक्टिव में भी जाएंगे, तो वो हो सकता है, लेकिन सो फार नहीं होता, ठीक है, उससे पहले की चीज़ें नहीं होती, ठीक है। यानी कि ये जो आपका ये जो प्रॉपर्टीज से रिलेटेड आर्टिकल 31A है या 31B जिसमें 9 शेड्यूल एज इट इज क्रिएट हुआ, कोर्ट ये भी बोल सकता था कि हम 9 शेड्यूल को ही नहीं मानते, बोल सकता था, बट 9 शेड्यूल एग्जिस्ट करता है, बट अब वो जुडिशियल रिव्यू में भी आएगा अब से, सो आगे से।